Hi Alishba, hi Sarim. Thank you for welcoming me. मैंने अपना प्रॉमिस रखा है कि मैं हर 2 हफ्ते आऊंगी. आई थिंक 2 ही हफ्ते हुए ना. आई एम नॉट टू श्योर. Hi guys, hi Kapil, how are you? Long time no see. Just give me 1 second. I'm still sorting out. Good evening. कैसे हैं आप लोग? Good to see all. कैसे चल रही है आप लोग? Hi सुमित बच्चा, कैसे हो आप? I hope you're doing well. Waving back at all of you. कोई जूम पे भी आओ. मुझे इंस्टा पे पढ़ना ज्यादा अच्छा नहीं लगता. आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू डू इट. एक सेकेंड. ओके. हाय श्याम, हाउ आर यू? आई एम गुड. Who's that? Hi Nancy, how are you? Long time. Hi, I don't know how can Nautiyal Amresh. I hope I'm pronouncing it right. Okay, hi, kaise ho? I'm good. Good to see you. So many of you here. I was not very sure. I know बहुत late मैंने announce किया कल रात को. मैंने अचानक देखा कि मेरा schedule थोड़ा free था. So I decided to just drop in and say. तो लिखो तुम लोग कैसे हो? सिर्फ मुझे क्यों पूछ रहे हो कैसे हूँ? Tell me what did you all do for the weekend and the 2 weeks that I've been. Hi Ayan, how are you? So what did you all do? मैं थोड़ा अपने hi big guy, long time. हाय शिवम, कैसे हो? लुकिंग गॉर्जियस एज फक. लास्ट टाइम भी तुम्हें करेक्ट किया था. लुकिंग गॉर्जियस इज गुड इनफ. ये एएफ लिखने की जरूरत क्या है? लुकिंग क्यूट. ओके, देखो अभी बिग गाय ने लुकिंग क्यूट कहा. एज फक लिखता तो मैं उसको भी करेक्ट करती. तो थैंक यू एवरीवन फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स. बट आई एम जस्ट सेइंग कि कोशिश करो. आई मीन आई एम नॉट अगेंस्ट द एफ वर्ड बिकॉज आई टू यूज इट लाइक every 2 sentences, but you know what I'm trying to say. Hi Tushar, hi Meenakshi, how are you? I am studies and exploring Germany. Very good. I've been to, I think, Frankfurt and I'm not very sure और कौन सी जगह गई थी. बहुत अरसा हुआ. पर हमेशा जब मैं यूरोप जाती थी somehow फ्रैंकफर्ट से ही होके गुजरते थे. तो वहाँ पे nice eye makeup. Yeah. So Alishba, because you like makeup tips, so I've come up with this idea. Whenever okay, Meenakshi, good to hear. Cute as fuck. थोड़ा अजीब लगता है. Exactly. So yeah, so my thing is whenever I want to feel like special, just use glitter. Anytime and every time. I'm good, thank you. Okay, you're in Hamburg. I've never been to Hamburg. Yeah. Hi Mohak, kaise ho? Thank you for helping out. So there was this kid who was being thrown out from his family, and Mohak helped me to find a job for him. I don't know whether it worked out, but at least there are some people who have been there for me whenever your children need help. And there are certain people like Mayank, Mohak. My first instinct is to contact them, that I know they are such good human beings. Hi Zenitsu, good evening, that they will help. So, and unfortunately, the person who asked me for the job never even contacted me again, never even said thank you. So I am thanking you guys in case it worked out or even if it didn't work out. हमेशा thank you बोलना बहुत important. Hi Harshada, कैसे हो? क्या लिखा है? I like how you put efforts in dressing up for the life. I dress up every single day of my life, I think. Even for like sleepwear. देखो मेरे हिसाब से इट्स क्या जूम अभी स्टार्ट नहीं हुआ? ऑफ कोर्स हुआ है, मैं जूम पे ही हूँ. वुड इवन स्टार्ट नहीं हुआ, उसी पे तो हूँ. और मैंने जो लिंक डाला है वो वही लिंक है. और मैंने कोई नया मीटिंग स्टार्ट नहीं किया. भगवान ही जाने मैंने कौन सी मीटिंग स्टार्ट की है. मीटिंग स्टार्ट हुई कि नहीं है? ये रुको, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है कि मैंने मीटिंग बिना सोचे एक नई मीटिंग स्टार्ट कर दी और जो मीटिंग की लिंक थी. अच्छा रुको, आई एम एडिंग इट टू द चैट इन YouTube. Whoever wants to join, please join there. Okay. Sorry, I think I've made a little blunder. Generally, you have whatever meeting you're scheduled. Sarim, check YouTube. Don't check the link I have posted in community chat. पोस्ट अभी लाइव में मैंने हाँ मुझे लगता है मैंने नया मीटिंग स्टार्ट किया. आई एम सो सॉरी. प्लीज गाइज. हाँ मैं वही सोचूं आज कोई आया कि नहीं. कभी कभी पूरे एक्साइटमेंट में भगा नहीं जाने में क्या कर लेती हूँ. बट या हाय शैल, हाउ आर यू? इंस्टा लाइव. या गुड टू सी यू एंड वी आर मिसिंग यू हियर इन दुबई, स्पेशली ऑल द क्लबिंग दैट आई एम डूइंग विदाउट यू. लुक फॉरवर्ड टू सैटरडे को. वो देखो ये आ गया. एक मिनट, लेट मी पिन माय वीडियो बिकॉज नाउ आई थिंक आई पोस्टेड द राइट लिंक. Everybody, please don't check the story. Please don't check the community link. Whoever wants to come live on Zoom, please make sure that you check the recent live chat
Can somebody pin it? Shivam, can you pin this? Whoever is my admin here on YouTube, please do this for me. And Sarin, if you have the link, repost it on YouTube or repost it on Insta. Even if can you repost it on my live Insta chat? Sarin, try karo. Okay, so Shall be missing you and ma'am अपना new start क्या हाँ correct कपिल मैंने गलत मीटिंग स्टार्ट कर दी मैंने जो मीटिंग सेट सब लोग म्यूट करो अपने आप को खासो मत मेरे लाइव सेशन में और जब किसी को बात करना है हाथ रेज करना so that we don't talk over each other. Okay, yeah, so I have posted the link on YouTube. Okay, what did I miss? Did I miss anything? Record so we were talking about dressing up, right? So I think all of you all should know something very important about our brain, how it reacts to when you're dressed up, even when you're having a breakup, even when you have failed, even if you have an exam, it makes hell of a lot of difference the way you look, the way you carry Aman Prakash says, you sit, how you dress up, how you do your hair, your grooming. क्योंकि let me explain. Suppose हम एक दिन थोड़ा अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, हमारे लाइफ में एक सेटबैक हो रही है, right? Not that कि अभी मेरे लाइफ में टचवुड कोई सेटबैक नहीं है, but I'm just saying कि suppose ऐसा हो रहा है. अभी हमारा moods स्विच होता है ना, फ्लक्चुएट होता है, हम इंसान है ऑब्वियसली, तो हम कभी एक दिन अच्छा फील कर रहे हैं, कभी एक दिन अच्छा नहीं फील कर रहे हैं. तो क्या होता है कि जब हम ड्रेसअप करते हैं ना, ऑटोमेटिकली इट सेंड्स अ सिग्नल टू द ब्रेन कि एटलीस्ट इतनी सो सेम्बलेंस ऑफ ऑर्डर है हमारे लाइफ में. एक तो हमारा मन भी बहल जाता है क्योंकि हम या ड्रेसअप होते टाइम सोचते हैं क्या पहनना है, हम जब बाल बना रहे हो, ठीक है, एट द बैक ऑफ योर माइंड कुछ ना कुछ हमको टेंशन तो रहती है सबके लाइफ में. मैं ऐसा नहीं करती हूँ मेरी लाइफ टेंशन फ्री है, हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है. मैं भी आई मेक श्योर दैट माई लाइफ इज वेरी हैपनिंग. सो हसन अली हाय, कांट पिन इट. अच्छा, देन रीपोस्ट द लिंक. शिवम, व्हाट आई पोस्टेड, कैन आई पिन इट? वेट, लेट मी सी. हाँ, पिन मैसेज मैंने कर दिया, ठीक है. ओके, सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. Even when I'm going to bed, I make sure I wear something nice. It's not like कि किसी को दिखाना है, right? खुद के लिए बहुत मैटर करता है. तुम कैसे फील करते हो, तुम कैसे लाइक मैं तुम लोगों को हमेशा बोलती हूँ कि फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आफ्टर आपका पूजा हो गया या आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज की जो मैंने आपको सिखाई है या आपने कोई कॉमेडी देख ली, हमेशा अपना बेड बनाते हैं. व्हाट डिड आई टीच यू ऑल अबाउट दैट it gives a semblance of order. It says your life is fine. So when you dress up, of course, some people feel. अभी मैं मनीष मल्होत्रा का इंटरव्यू देख रही थी, वो सारा टाइम काला पहनते हैं, मैं सारा टाइम काला नहीं पहनती. He was, can you imagine, he was saying कि I try to wear black and darker colors to hide my this thing, but I believe that you should wear all the colors. Life इतना कलरफुल है, flowers इतने pretty हैं, तो don't hold yourself back. Even guys, all you guys, try experimenting different shirts, t-shirts. अपने आप को live your life really without thinking कि मैंने ये पहना है लोग क्या सोचेंगे. कभी कभी weirdest of things हमको अच्छी लगती है पर शायद लोगों को नहीं अच्छी लगे, कोई बात नहीं, पहन लो. And dress up to bed, dress up when you're going out, dress up when you're going in. Of course it doesn't mean now आप लोगों ने वो quote सुना होगा, less is more. Okay, now I could have put highlighter, you know, eye shadow and वो क्या contouring करते हैं, भगवान जाने, करो, कोई मना नहीं कर रहा, लड़कों को नहीं बोल रही हूँ, अगर से लड़कों को करना है करो, but I'm just talking about Alishba because she was mentioning this. So depends where you are. अब अगर से तुम कहीं कैजुअल जा रहे हो और तुमने ब्लेजर पहन लिया है, या तुम कैजुअल जा रहे हो, तुम टक्सीडो पहन के जा रहे हो, गलत चीज है. कुछ जगह है कि आपको अपना लेट्स से आपको टी शर्ट में जाना चाहिए, जीन्स में जाना चाहिए, या अगर से जीन्स पहना है तो शर्ट पहनो उसके साथ. डिपेंड्स वेयर यू आर गोइंग. ओके, सो हाय गौरव, हाउ आर यू? हाय अर्शान, हाय सारिम, हाय रुद्रांश, एवरीबॉडी ऑन जूम, लवली टू सी यू. माय वॉइस इज नॉट क्लियर. देखो, जब भी ऐसा कोई बोलता है ना वॉइस इज नॉट क्लियर, हमेशा तुम लोगों का प्रॉब्लम होता है, मेरा नहीं होता है, ठीक है. तो मेक श्योर कि सारिम, कैन यू हियर मी? समबडी गिव मी अ थम्स अप. एवरीबॉडी कैन हियर मी. यूट्यूब, इंस्टा, जस्ट गिव मी अ थम्स अप. ओनली वन पर्सन कंप्लेन्ड अबाउट माय साउंड. हाँ, गौरव कैन हियर, दैट मीन्स एवरीथिंग इज फाइन. नॉट दैट, बाय द वे गौरव एंड आई बी, वेट यार, मेरा फैन काहे ऑफ है?
कौन उठ के अब करे। मेरे बेटे ने इससे निकाल दिया और मैं फैन ऑन नहीं कर सकती। 1 सेकंड दो, जाना नहीं, मैं आ रही हूँ। भगवान जाने कौन सा डिस्कनेक्ट करो यहाँ से। वाओ, ये किसका ऑडियो है? बंद करो। 1 मिनट, मुझे 1 मिनट दो यार, मैं ना फिगर आउट कर रही किस चीज का वायर है। इसको डिस्कनेक्ट करो, प्रॉब्लम है। फिलहाल इसको डिस्कनेक्ट करती हूँ, फोन चार्ज हो मेरा। ओके, ताकि मैं फैन लगाऊं, मुझे गर्मी हो रही है। हाँ, एक तो समर चल रहा है पता है दुबई में। हाँ, क्या लिख रहा है? क्लियर वॉइस है, शिवम ने कहा। हसन हाय, भास्कर हाय, एवरीबडी लवली लवली टू सी ऑल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। थैंक यू फॉर लविंग मी सो मच एंड थैंक यू फॉर ऑल द रिस्पेक्ट। जब बालाजी आएंगे तो थोड़ा सा रैंट करेंगे। सॉरी, डिस्कॉर्ड का लिंक भी गलत है, जिसको भी लिंक चाहिए यूट्यूब में है, ठीक है। हर्षदा, थैंक यू मैम फॉर योर सपोर्ट, माय प्लेजर बच्चा, गॉड ब्लेस यू। एंड लेट मी, इंस्टा का ये प्रॉब्लम है, हाथ का अच्छा एक्सरसाइज हो जाता है। मैम आई वांट योर हेल्प, या सो आई हैव रेड योर डीएम, जस्ट गिव मी सम टाइम। और बिकॉज आज जब काउंसलिंग कॉल भी होता है, डीएम्स भी होते हैं, ऊपर से लाइव सेशन जाते हैं, प्लीज गिव मी सम टाइम। आई विल ऑलवेज रिप्लाई टू यू ऑल, even when you people don't follow me and don't respect me and don't say please and thank you, I reply to each one of you. Okay ma'am, I always notice you have a good posture and try to implement. Yeah, I always do that. पता नहीं मैं लाइक मैं जब बैठती भी हूँ मैं ऐसे ही बैठती हूँ। आई थिंक वो बचपन से एक तो आदत थी, ऊपर से बिकॉज इफ यू हैव अ नेक एंड बैक प्रॉब्लम, बाय द वे जिनको नहीं पता था, मेरी तबीयत बहुत खराब थी। आई थिंक अनिशबा इज द ओनली पर्सन हु एक्चुअली आस्क्ड मी हाउ आई एम, एंड आई वाज नॉट वेल, नॉट दिस week prior to that I got such a bad neck spasm. बहुत सालों के बाद ऐसा हुआ कि I couldn't sit, I couldn't sleep, I had to go to the emergency twice to take an injection, then I went for physio, I was on, I don't know, God knows how many medication, and it could be a lot of things including posture, stress, pillow, wrong pillow, maybe my night life, I don't know, it could be multiple things, but luckily I'm good, I'm doing very well. हाँ गौरव बेटा, बोलिए क्या बोलना चाहते हो? हेलो मैम, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया मैम। मुझे आपसे ना एक बात डिस्कस करनी थी। लाइक, अगर आपको याद हो, आई थिंक इसी टाइम 6-7 महीने पहले मैंने आपको एक बार कांटेक्ट किया था हार्ट ब्रेक के ऊपर। तो अभी उसकी बिल्कुल ना ऑपोजिट सिचुएशन है, तो उसके बारे में मुझे कुछ आपसे बात करनी थी। एक मिनट, बिकॉज आई कांट हियर यू क्लियरली, लेट मी रिएटरेट 1 सेकेंड। यू सेड आपने 9 महीने पहले, 8 महीने पहले कुछ क्वेश्चन पूछा था रिगार्डिंग दैट, इट्स अ फॉलो अप क्वेश्चन, करेक्ट? नॉट, नहीं फॉलो अप नहीं है, बट लाइक मैंने पहले, आपको पता है मेरा लाइक वन साइडेड लव टाइप का कुछ था। हाँ, वो जो वन साइडेड लव का जो तुम्हारी हमेशा वो जो स्टोरी रहती है वो वाली ना? हाँ, बस अब आज नहीं सुनाऊंगा वो। अच्छा, अब क्या हुआ है उसके बारे में? उसके बारे में तो कुछ नहीं हुआ मैम, बट ये है कि अभी ना लाइक मेरा सेकंड ईयर स्टार्ट हुआ है, तो अभी अभी नए नए जूनियर्स आए हैं, तो लाइक एक एक हफ्ता हो गया। तो हम्म। आई मतलब एक लड़की को मैंने नोटिस किया, एंड उसने भी काफी नोटिस किया था। जैसे आपने वो ग्रीन फ्लैग वाली वीडियो बनाई थी ना, तो उसके भी काफी साइंस मैंने देखे थे। ग्रीन फ्लैग नहीं, येलो फ्लैग्स वाली वीडियो बनाई थी। पता नहीं, आप हाँ कोई तो हाँ, बनाई थी मैम। फिर क्या हुआ? हाँ। तो मैम आज मैंने हिम्मत करके उसको अप्रोच किया, मतलब उससे बात करने गया मैं। हम्म। तो उससे मैंने बात की, और उसने काफी अच्छे से बात की, और देख बात करने से लगता था पता कि शी इज ऑल्सो इंटरेस्टेड। तो अब ये आज की बात हो गई। अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि अब उसको कैसे क्या कहूँ, और कैसे बात आगे बढ़ाऊं। एक मिनट पहले तो ये जो मैंने कमेंट, 1 मिनट है, ये जिसने भी ये कमेंट लिखा मैं लिखूंगी नहीं, बट इसको डिलीट कैसे करते हैं? 1 मिनट, हाँ, रिमूव। ये जिसने अभी लिखा है सुमित, मैंने डिलीट कर दिया ताकि कोई ना देखे, मुझे वो कमेंट अच्छा नहीं लगा बेटा, ऐसा किसी के बारे में नहीं लिखते, ठीक है? अच्छा, तो तुमने, लेट मी अगेन
reframe what you said. So there was this girl, आपको काफी टाइम से उसको वन साइडेड अट्रैक्शन, जो तुम लव बोलते हो, मैं अट्रैक्शन इन्फैचुएशन बोलती हूँ, वैसा हुआ है, और अब शी इज रेसिप्रोकेटिंग योर फीलिंग, करेक्ट? नो 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 नो, नो, शी इज अच्छा, नॉट। शी इज नॉट। नहीं, वो लड़की नहीं है मैम, ये एक कोई और है ये। कोई और से अभी तुम्हें इश्क हो गया, कि कोई और लड़की को तुमसे इश्क हो गया? इश्क तो नहीं कहते, अट्रैक्शन ही कहते हैं। हाँ, अट्रैक्शन, इश्क तो बड़ी ठीक है, कर। ठीक है, हाँ। तो किसी और तो को तुमसे अट्रैक्शन हुई है? हाँ, मुझे भी। हाँ, तो फिर हो गया ना, अभी अब क्या प्रॉब्लम? अब ये नहीं समझ आ रहा कि बात आगे कैसे बढ़ाऊं, कि लाइक कहना ठीक रहेगा कि नहीं। अब वही उसी में दिमाग घूम रहा है। क्या कहना ठीक होगा कि नहीं, कि तुम उसे पसंद करते हो? हम्म। पर तुमने तो बोला उसको पता है, इसलिए तुम्हें भी पसंद करती है। हाँ बट कि मैम अब नहीं, आज मैंने उससे बात की तो उसकी बातों से पता लगा कि लाइक आई सेड कि मैंने आपको काफी बार नोटिस किया उसके ना। मैं एक बात बताता हूँ उसके। उसके जो वो शी गोज टू टेम्पल एवरीडे, मतलब वो रोज मंदिर जाती है। तो उसके माथे पर ना एक तिलक लगा होता है। तो मैंने उसी से उसे बात शुरू की थी कि आपके सर पे हमेशा ये लगा होता है कि आप डेली मंदिर जाते हो। तो वो बोली हाँ मैं तो जाती हूँ। मैंने कहा हाँ मैंने आपके ये नोटिस किया है रोज। वो बोली हाँ आप भी जाते हो शायद, मैंने आपके भी रोज नोटिस किया है। तो ऐसी काफी बातें थी जिससे लगता था पता कि हाँ शी हैव आल्सो नोटिस्ड और शी इज आल्सो इंटरेस्टेड। तो अब ये नहीं समझ आ रहा कि उसको बताऊं कैसे बताऊं। ये मैंने फर्स्ट टाइम ही है ना, इसलिए समझ नहीं आ रहा कुछ। सो स्वीट। ओके, तो पहले तो तुम लोगों ने एक दूसरे का तिलक जो भी नोटिस किया, तुम्हारे हिसाब से कि हम्म। उसने नोटिस किया, पर तुम एंड यू जंपिंग द गन। मैंने जो साइंस वाली वीडियो भेजी थी, उसमें तुमको एक साइन नहीं, मैंने बहुत सारे साइंस देखने के लिए क्या था, ठीक है? ऐसा यस हो मैम। सकता है कि वो फ्रेंडली है, जरूरी नहीं करके ये अट्रैक्शन है, पर ऐसा नहीं कि नहीं भी है। ओके, सो देर इज ओनली वन वे टू गो फॉरवर्ड, इज टू एक्चुअली टॉक टू हर मोर। ओके, मे बी हैंग आउट फॉर अ कॉफी, और go to plan the मंदिर ट्रिप together, since both of you are religious, ठीक है? एंड धीरे धीरे बात करना स्टार्ट करो, इंस्टेड ऑफ अज्यूमिंग दैट शी लाइक्स यू। ओके, क्योंकि जो लोग, आप लोग जो भी सिंगल है, लेट मी टेल यू ऑल, योर you look for signs even when they are not. ओके, सो बी वेरी केयरफुल, बिकॉज ऐसा ना हो कि फिर से ऐसा हो कि तुम किसी को पसंद करते हो, फिर तुम उनको बोल दोगे, फिर बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लाइक आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स, यस इजहार करो, अनलेस तुम लोगों के ईगो को हर्ट होगा जब वो ना कहेंगे, अनलेस आप लोग मूव ऑन नहीं कर पाते कि अरे काश मैंने उसको बोला नहीं होता, अब उसको पता है तो व्हाट। सो इफ यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन, फर्स्ट लुक इनसाइड विद इन यू, व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी डू यू हैव। इफ यू आर लाइक ठीक है यार, बोल दिया, नहीं पसंद किया, कोई बात नहीं, इट्स जस्ट अ कंपैटिबिलिटी फैक्टर, everybody I like doesn't necessarily mean that they have to like us in return, right? So मेक श्योर कि आप उसको मंदिर में या जहां भी आप लोग थोड़ी देर बैठ खड़े रह के बात करो, फोन नंबर्स एक्सचेंज करो, या इंस्टा, जो भी आप लोग आजकल क्या करते हैं जनरेशन, स्नैपचैट करते हो, जो भी करते हो, धीरे धीरे, डोंट बी इन सच अ रश, गेट टू नो द पर्सन। जस्ट बिकॉज किसी का तिलक आपको अच्छा लगा, जरूरी नहीं करके वो इंसान आपके लिए कंपैटिबल है, राइट? ऐसा हो ओके सकता है मैम। कि आपकी पर्सनैलिटी मैच ना हो, ऐसा हो सकता है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स मैच ना हो, ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के कोर वैल्यूज, कल्चरल बिलीव्स क्लैश हो रहे हो, भले मंदिर जाती हो, राइट? तो it's a long process. It's not something, yes, the initial attraction is there, a physical connect or a vibe. Like many of us will meet people, चाहे आप ट्रेन में हो, कभी बस में हो, कभी कॉलेज में हो, कहीं भी हो, एक हमेशा लेट्स से 200 लोग हमारे इर्द गिर्द हैं, पर हमारी वाइब बहुत सिलेक्ट फ्यू के साथ क्यों होती है? I don't think there is an answer. It's just an energy, right? There is no one thing that why we vibe with someone immediately. But later on, वो vibe initially के लिए अच्छा होता है, बाद में बहुत कुछ जानना होता है एक दूसरे के बारे में, ठीक है? तो गो स्लो, यस। नंबर एक्सचेंज करो, आराम से बात करो, हॉबीज की बात करो, मूवीज की बात करो, बट डोंट गेट टू अटैच टू समवन, डोंट गेट योर होप्स हाई। प्रॉब्लम हमारी है कि हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो जाती है सामने वाले, जैसे कि हम उनको पसंद करते हो, हमें रिटर्न में पसंद ही करना चाहिए,
मोस्ट लाइकली इवन वो होने के ब्रेकअप पे होता है, ठीक है, ऑफकोर्स स्टडी रिलेटेड काफी होते हैं, बट ब्रेकअप्स बहुत होता है. तो बी केयरफुल बिकॉज यू आर वेरी सेंसिटिव, यू नो दैट, राइट? सो व्हेन वी आर वेरी सेंसिटिव पीपल, वी शुड गार्ड आवर हार्ट्स. ऐसे नहीं करके अपना दिल यहाँ वहां फेंकते रहो, फिर ऑफकोर्स एक्सपीरियंस इज गुड, ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाओगे. यस, यू हैव अ क्वेश्चन टू आस्क मी. You want to ask me text or do you want to speak? Raise your hand if you want to speak. If you don't want to speak, then please text me in a private chat Zoom or public chat Zoom. और and please अपने आप को म्यूट करो. किसी का, ये किसका आवाज है यार? Arshan, please mute yourself because there is a background noise. I can't speak unless you people are talking to me. Then unmute yourself. If you're planning to just ask me a question via Zoom, Insta or YouTube, please do so. Okay. And now let me read Sahil, Varun, Mantra. Okay. Soham. Wow. So many. Ajrosh. Hi. How are you? आजकल clubs में नजर नहीं आ रहे हो. Hello ma'am. And how are you? मेरे friend है, देखा मैम बुला रहे हैं. Okay. Hi Srijana. How are you, बच्चा? Okay. Which Abhishek, Prashant. Wow. There are so many new people who are joining. मेरा हाथ मैम. अच्छा, ओके. आदर्श, आई एम नॉट श्योर शुड आई टेक दैट कि किसी का खून पीने वाली हो. आई डोंट नो व्हाट द फक यू मीन बाय दैट कॉम्प्लीमेंट. हाय अनगा, हाउ आर यू? गुड टू सी यू हियर. हाय अंकुर, हाउ आर यू? उत्सव, पुलकित, रिकी, कैसे हो? सुरेश. जब तक तुम लोग से मैं, ये तुम्हारा हो जाएगा ना, मेरा इंस्टा के वजह से हाथ, ये मुझे अच्छा लगता है, माउस के साथ उसको स्क्रॉल कर सकते हैं. सो अरुण, यू वांट टू स्पीक? या प्लीज गो अहेड, प्लीज गो अहेड. If anybody wants to hide their identity or want to stay anonymous, please change your name on Zoom, because what happens when I'm speaking to you all, it's a very natural reaction and a human thing to do कि किसी का नाम लेते हो, बात करते हो. तो आपका, मैंने तुम लोगों को एडिटिंग फीचर दे दिया है, अपना नाम चेंज करो and then you can speak. Unmute yourself and please speak. Till then I'll just read any more messages. Please add me in Zoom. Everything is, I don't need to add anyone. I've kept it's not enabled the security feature. Anybody can join. Okay. क्या लिखा है? Please question पूछो अर्शन. आपको ही मैं बोल रही हूँ. आपने बोला ना you want to speak. Am I audible, ma'am? Yeah, but there is this that song क्या बोलते हैं यार, ये जो आ रही है. पर जल्दी, अच्छा, I'll try to ignore it. Ask me the question. बहुत. Am I correct? Sarim, Arun, am I correct? There is this. हाँ, पता नहीं क्या है. Hi Karan, hi Sumit बेटा, it's okay. I'm just teaching you something. When I correct your बुरा. हाँ, much better, much better. Yes, please now ask me. टेस्ला बन के आई हूँ. आई डोंट नो व्हाट टेस्ला बन के आई हूँ, बट थैंक यू. अर्शन, गो अहेड. ये लोग चलता रहेगा इनका. अच्छा, इंस्टा एंड यूट्यूब, गिव मी few minutes. I'm addressing a question. Yes, Arshan, go ahead. Ma'am, basically I have some insecurities issues and hello. Yeah, I have heard you. I had insecurity issues and I was very type of, I'm a perfectionist person. I want to be the number one in all, which I know on an intellect level that I can't be that. But I have most of the things I have that I feel that I'm better than others. But in few things like my height issue, that is 5'7". So I face very मेरे को मतलब कोई बाहर से कोई नहीं बोलता, लेकिन फिर भी मेरे को अंदर से एक चीज फील होती है. वो है नॉर्मल हाइट, मेरे को पता है वो चीज, लेकिन फिर भी मेरे को फील होती है. So how would I deal with that? okay. Are you my new subscriber to YouTube? Pin myself. I have pinned myself already. Remove pin me. I have pinned myself. I can't do anything. How do I
हाँ, अभी I can put myself if there are more people. Just give me 2 minutes, Arshan, and just address you. Yeah, let me look at the participant list and make myself spotlight for everyone. Okay. Okay. So Arshan, पहले तो एक क्वेश्चन तुमने आंसर नहीं किया. आयु में तुम न्यूज सब्सक्राइब किया और फर्स्ट टाइम फॉलो किया है, क्या है? Yes, no? Yeah, I have followed you the first time, but I have seen you on your channel. That's why I was wondering. The reason I'm asking, the reason I asked you this is because everyone who's knows me for a bit longer, we have addressed this topic in lot of other places. But let me address it briefly, okay? Then you DM me, I'll give you resources to deal with it. But we'll just address this because it's such a common problem. If you have not, by the way, जिनको नहीं पता, last 10 दिन से everyday short videos YouTube पे upload हुए हैं, study related है, insecurity related है, schedule related है, तो all the bachas and not so bachas, please go and watch it. Now, what I'm going to tell you, अब तुमने कहा कि I know I am better in certain things compared to others, correct? But who decides this better and worse? You. Yes, that's right. So this is where our major flaw is. When we think we are better than others or we are less than others, we are neither. We are all unique. We are all different. Now the height insecurity comes from where? Because for years and years and eons, people have just said ki this is the height a guy should be or a girl should be, right? And this is what you should be, whether it's a doctor, engineer, lawyer, whatever, IT में जाओ, एक select career जैसे होते हैं, वैसे एक select चीज, एक norm बना दिया है according to people कि ऐसी height एक इंसान की होनी चाहिए, especially लड़कों को जब वो short होते हैं, लड़कियां फिर भी cute package कहलाती है, जैसे लड़के थोड़े short होते हैं, तो उनको वो insecurity कहाँ से आती है? क्योंकि इतने सालों से यही बोला गया है उनको कि ये correct height होती है. अभी correct height किसी को नहीं पता क्या होती है. मेरे पास ऐसा क्लाइंट है जो 7 feet plus है, अब उसको बैक इशू है, नेक इशू, ही हेट्स हिज हाइट. अब चाहे उसका मन करे ना करे, ठीक है, उसको अच्छा लगे ना लगे, उसको लोग इतना ताना मारते हैं, राइट? अभी रिसेंटली एक क्लाइंट आया था, कुछ 6'4" का था, 7 भी नहीं था, ठीक है. वो बोलता है मैम मेरे को, मैं बहुत लीन हूँ और मैं बहुत टॉल हूँ, तो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं. तो द प्रॉब्लम, अब हम पूरी दुनिया को फिक्स नहीं कर सकते अर्षा, हमको अपने आप को फिक्स करना है. अब मैं इधर बैठे सबको, मेरे फॉलोअर्स को बोल सकती हूँ ना कि प्लीज स्टॉप टीजिंग, एंड आई मेड वीडियोस ऑन स्टॉप टीजिंग, ऑन कलर, ऑन एवरीथिंग, राइट? वेदर इट्स योर हाइट, वेदर तुम चश्मिश हो, वेदर आपको ब्रेसेस लगे हैं, फॉर एनीथिंग, फैट शेमिंग हो रही है, स्लिम शेमिंग हो रही है, एवरी किस्म की शेमिंग हो रही है. तो हम दुनिया को चेंज नहीं कर सकते. आपको अपने आप, जब तक यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ योर सेल्फ, the way your eyebrows are shaped, or the way your hair color is, way you sound, yes, because certain things you will never be able to change, height being one of them, unless you took some HRT or something, growth hormone during your growing years, okay, when you could have perhaps done maybe a little bit, but then who knows how in the world, okay, that you, what, hi ma'am, you didn't, या जो बाइडेन, 1 मिनट बात कर रही हूँ मैं किसी का कमेंट नहीं पढ़ूंगी तो मेरा फ्लो ऑफ थॉट खराब हो जाता है. सो प्लीज अंडरस्टैंड समथिंग, टिल यू आर नॉट कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन with the fact that this is my genetic content, I can't change it. I can't do anything about it. Maximum जैसे सलमान और आमिर और आई थिंक शाहरुख भी, वो शूज के अंदर वो थोड़ा लिफ्ट डालते हैं, ठीक है, बट वो एक्टर्स हैं, राइट? उनको टॉल एक्ट्रेसेस के साथ डांस करना पड़ता है, खड़े रहना पड़ता है स्टूल पे. वो रियल लाइफ नहीं है, हमारी रियल लाइफ है. तो जो क्वालिटीज चेंज कर सकते हो आप, अगर से गूगल करोगे द शॉर्ट पीपल, वेदर डैनी डिविटो हो, वो क्रिस ब्राउन हो, who's the, no, not Chris Brown, who's the guy who's very short? Jackie Chan bhi itna tall nahi hai as far as I know. There are a lot of actors if you want to look up to and say wow, even Tom Cruise is not considered really tall, but
Personality matters. There are lots of presidents, lot of prime ministers, lot of people in power who don't have the height per se according to the society standards and the society expectation कि एक आदमी को इतने height होना चाहिए. हर लड़की pretty नहीं हो सकती, हर लड़का इतना tall नहीं हो सकता, हर इंसान एक डॉक्टर नहीं हो सकता या इतना कमा नहीं सकता, right? But आप लोगों को ये चीज बहुत समझना जरूरी है. मेरा recent video is on comparison. You're wasting your time, your important time of your life. You have only one chance to live this life. You decide how much you want to fret on things which are not really important. You're not a, as far as I know, perhaps you're not a model. Okay, what do you want to do with your height? कौन सा तुम्हें बास्केटबॉल प्लेयर बनना है, राइट? तो तुम डिसाइड करो तुमको हाइट किस लिए चाहिए. अगर से तुम्हें फर्क पड़ता है, then I would recommend you to contact me. I'll give you a session on self-worth. जब तक आप अपनी self-worth पे वर्क नहीं करोगे. Yes, who's speaking? कोई बात कर रहा है कि मुझे कुछ आप कह रहे हैं, या कोई म्यूट करो अपने आप, because I get very confused if somebody talking. Please raise your hands. Don't talk while I'm talking. Okay, so first let me address this. So contact me, I'll give you the resources, but do not contact me till you're not ready to work on yourself. You want to become comfortable in your own skin. You can complain to me, you can complain to the world, you can complain to your parents, तुम लोग की वजह से मेरा height grow नहीं हुआ, पर उससे कुछ solve नहीं होने वाला. Height अपने intellect की grow करो, height अपनी emotional intelligence की growth करो, height उस चीज की increase करो कि लोग तुम्हें देखकर बोले कि wow, what a human being, how kind, how compassionate. रतन टाटा को कोई नहीं पूछता उनका हाइट कितना है, सिर्फ वो जानते हैं उनका दिल कितना अच्छा है. तुमको वो बनना है और अपने करियर पे काम करो. बाद में कोई नहीं पूछेगा. बाद at the end of your life, what is your legacy gonna be? That I was a tall person. If that's what your aim is, then I must say it's a very skewed way of thinking. You need to fix it. Okay? Can anyone increase height by operation? Yes, I have heard that you can increase तुम्हारे legs का surgery होता है, but after that you cannot run well and it's compromised. Why would you do that? Just to please the world कि बाबा मेरे पास height है, फिर क्या? अपने और अगर से health में problems हो जाए तो फिर क्या? जैसे बाकी चीज हमारे में हम परफेक्शन ढूंढते रहते हैं, पता नहीं क्यों किधर से आया है कि हमको परफेक्ट होना जरूरी है. Just be who you are and yes, work on yourself. Nobody is saying that, but the qualities that you need to work on, not to please the other person. If someone cannot accept you for who you are, I'm sure people who love you don't give a fuck about whether you're tall or short. Okay, so why don't you love yourself that much? Would it matter if your mother would be taller? Tell me that. Would, if you love your mother, if you a sister or your father, who somebody who you really love, would it matter? Would they be taller or shorter? No, right? Sorry, I can't hear you. It won't matter for me as height or something else. So the same applies to you. Your loved ones will accept you as you are. Nobody really. हम 2 सेकंड किसी के बारे में बात करेंगे और फिर छोड़ देंगे. Okay? So contact me. I'll give you self-worth resources. You really need to work on yourself and watch my new video on YouTube about comparison. It never stops. हमेशा तुमसे कोई taller होगा, richer होगा, prettier होगा, handsomer होगा, credentials ज़्यादा होंगे, पैसे होंगे. When is it going to stop bothering you? When are you going to be happy with what you have and who you are? I need to mute you because it's really disturbing me. Whatever headset you're wearing or whatever you're wearing, it's very it's not good on my ears at all. Okay, let me read some more comments. So whoever needs to talk about this, please DM me. मैं एक टॉपिक पे इतना देर बात करूंगी तो मैं 6 घंटे बैठे रहूंगी यहाँ पे. ठीक है? Okay, it's okay, Sumit, as long as you understood that you were wrong on that. Okay. गौरव भाई, इंडिया में फेक रेप केसेस, सेक्सुअल केसेस का बहुत लफड़ा है. इट्स नॉट वर्थ डेटिंग हियर. यार क्या खामखा अर्नब, या अर्नब भाई साहब तुम मेरे एडमिन हो प्लीज. ऐसा एडमिन का जॉब एडमिन करना होता है, एडमिन का जॉब ज्ञान देना नहीं होता है.
Please do not put such shit in people's mind that stay away from rape cases, stay away from women just because, अरे, but there are good women also. एक maybe let's say 100 cases 1 billion में हो रहा है या 200 cases. It doesn't mean all women are bad, yaar. Stop, like it's like saying all men are bad. I don't know what's wrong with you all. There are men who beat, many men who drink, many men who cheat. There are many men who are not good human beings, right? But I never tell girls to stop dating. Don't. This is the problem with today's world. All of you all are in this cancel culture shit, right? Kuch bhi chota sa hua, cancel this one, cancel that one. What is going on? Learn from your mistakes. Let's sexual assault cases hai. Chalo, so I'm not telling him to go take her to a secluded spot, right? And if worst case, document your damn dates. That's it. But don't ruin girls' names, यार. तुम्हारी बहनें, तुम्हारी माएं, मैं, मेरे सारे क्लाइंट जो गर्ल्स हैं, इतनी अच्छी लड़कियां हैं. अलिशबा बोलो, अर्शी बोलो. I mean, so many of them are such nice women. Why are you all saying such things about women? Men are not bad. Women are not bad. Don't generalize the entire gender और LGBTQ को भी जनरलाइज मत करो. हर कंट्री में बुरे लोग होंगे, लड़की लड़के. हर रिलीजन में लड़की लड़के बुरे हो सकते हैं. हर जेंडर में कुछ ना कुछ इशू होता है. स्टॉप डूइंग दिस रबिश. डू नॉट गेट दिस इनटू योर हेट, इनटू योर हेड. लर्न टू डिसाइड पर पर्सन पर केस. जिनसे मिलते हो अकॉर्डिंगली. तुम्हें क्या लगता है मुझे गंदे लड़के नहीं मिले हैं, गंदे क्लाइंट्स नहीं मिले हैं जो गंदे पिक्चर्स भेजते हैं और अनसॉलिसिटेड शिट भेजते हैं मुझको? तुम्हें क्या लगता है? पर मैंने क्या तुम लोगों को मदद करना छोड़ दिया है? नहीं ना. आई स्टिल बिलीव यू गाइज, यू बच्चास आर गुड पीपल. दैट वे गर्ल्स ऑल्सो कैन बी गुड. डोंट टेंट समथिंग विथ वन कलर. एक पिक्चर को पूरा ब्लैक करना जरूरी नहीं है. देयर आर लॉट ऑफ न्यूआंसेस इन्वॉल्व. ठीक है. सो थैंक यू फॉर रिट्रैक्टिंग योर मैसेज. मुझे नहीं पता टेस्ला बन के क्या होता है. टेस्ला का कलर क्या ब्लैक और रेड होता है, भगवान ही जाने, पर मुझे नहीं पता. ओके, नेक्स्ट. लव योर हेयर मैम, लुक्स हेल्दी. थैंक यू. जस्ट कलर्ड इट. बट आई एम ट्राइंग टू टेक. दुबई का वाटर इज हार्ड वाटर. इट्स वेरी डिफिकल्ट. बहुत बाल झड़ते हैं तो बहुत केयरफुली उसका लाइक ऑयल करना पड़ता है. पता नहीं सीरम्स लगाने पड़ते हैं. मेहनत बहुत लगती है. हाय निखिल, हाउ आर यू? गुड टू सी यू. हाउ टू क्योर एंजाइटी दैट अपोज at a specific time daily without any reason? Okay, generally it happens to us women when we are going through a perimenopause phase or there's a hormonal fluctuation. But अगर से आपको anxiety एक specific time पे हो रही है, then I would suggest to meet a doctor, get your full blood test done. And मुझे नहीं specific time daily, it could also be, I'll tell you all, people who have been in relationships. Let's say you people used to talk at 12:30 in the afternoon and then whatever time. And if you are having palpitations and something at the back of your mind, it's clicking. Okay, so the anxiety clicks at that time because you're used. अभी तुमने बिना मुझे कोई ग्राउंड वर्क दिए मैं तुम्हें बता रही हूँ कि ऐसा हो सकता है. बट क्या तुम्हारे ऑफिस टाइम के टाइम आर देयर सम ट्रिगर्स व्हिच ट्रिगर एट दैट स्पेसिफिक टाइम और तुम्हें एंजाइटी होती है? और एंजाइटी का क्योर मैं पूरा सेशन बना दिया है आप लोगों के लिए, ऑलमोस्ट 1.5 hours का, फ्रॉम टिप्स एंड टेक्निक्स. बट इफ इट इज हैपनिंग एट अ स्पेसिफिक टाइम, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फिगर आउट योर ट्रिगर्स. आपकी सोच पहले आती है, फिर आपकी एंजाइटी आती है. कहीं ना कहीं इन योर सबकॉन्शियस माइंड समथिंग इज बॉदरिंग यू. Try to figure out that. Do your journaling when you're experiencing that. If there is a specific time, let's say you're not in office or you're somewhere, make sure that you sit down and immediately jot it down and try to understand. Most of us are so petrified of feeling that anxious wali feeling jab hamara heart rate high jata hai. Do your breathing exercise in the anxiety module, from grounding technique to the ice technique to the pulse technique, vagus nerve technique. Everything has been taught to you all. Please, during that time, either do that, do the square breathing technique that I've taught you all, or watch a comedy to calm yourself down. And of course, if it is happening over and over again, let's try to work on it. But I need to understand your triggers. I need to understand why does it happen at a particular time. Unless it's a physical thing, something is happening to you, it could be, I don't know. So let's try to work it. Pehle to DM karo, tell me, because I cannot address it right now. Tell me exactly the time
what is the cause, because when we go deeper into it, is very uncomfortable to get to know yourself, to get to know your triggers, to actually face it कि हाँ मुझे anxiety हो रही है, मुझे क्यों हो रही है, let me try to understand, is it because somebody said something, is it कि यही space में आप लोगों को पता है मैंने कौन सा वाला सेशन किया था, मैंने कहा था कि even someone's perfume, when you use a perfume, let's say because मेरे मोस्टली केसेस रोमांटिक होते हैं, हम लोग उस पे स्टिक करते हैं. लेट्स से गौरव का क्वेश्चन आया था, गौरव wears a particular perfume while meeting this particular person. Okay, now they meet 10 times 20 times, टाइम उनका ब्रेकअप हो जाता है या उनका रियलाइज होता है कि उनको they are not in touch or whatever, but every time Gaurav picks up that perfume to spray it, it will trigger a memory. So this is what I'm asking you. What is your memory getting triggered with? What is the reason? So please find out that your small trigger, even a particular scent of a person, or let's say, even do you all know, even a mobile ring for that matter. If आपके साथ कोई आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे और वो मोबाइल रिंग आपकी वो टाइम पे रिंग होती है, जब वो चले जाते हैं आपको उनकी याद आएगी, क्योंकि इसलिए जिन का, by the way, sorry if I have never given you all this tip, stop using the perfume, stop listening to the songs, stop using the same ringtone if you want to overcome that, unless you're one of those people who say hell with it, I will keep the ringtone same, it will disturb me for the first time, maybe the 20th 100th time, but finally I'll be fine, because if you really love a ringtone, you don't want to change it because of somebody, right? So I'm just giving you a tip in case I've never mentioned it. So people say I'm tall, I'm 5'11", I feel short. The second step out of my house, every second guy is taller than me. I underperform whole day. पता नहीं आजकल की जनरेशन को क्या हो गया है. और तुम बाय द वे तुम बोलते हो एवरी अदर गाय, कितना वेला टाइम है. इसको बोलते हैं स्पॉटलाइट इफेक्ट. मेरे तरफ सब देख रहे हैं, यू नो मेरा हाइट इतना कम है. जो मैंने उनको बोला है आपको भी मैं वही बोलूंगी, प्लीज कनेक्ट विथ मी. बट अगर से आपको लगता है 5'11" शॉर्ट है, आई वंडर जो 5'4", 5'3" या 2 या जो भी है, वो लोग क्या बोलते होंगे. पता नहीं आजकल के जनरेशन को हो क्या गया है. तुम लोगों का क्वालिटी कहाँ है? तुम लोग सिर्फ ये चिटर पिटर चीजों में कैसे फंस गए हो यार. तुम लोग क्यों नहीं बेटर होना चाहते हो? तुम्हारा लाइफ बेटर चीजों के लिए क्यों नहीं यूज करना चाहते? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है. थिंक डीपर. व्हाट आर यू ऑल डूइंग विथ योर लाइफ? हाउ स्टक आर यू ऑन दीज इनेन थिंग्स? Anyway, I've addressed it, so I'll not address it. Let me go to the next question. Hi मैम, मैं बहुत टाइम से सेल्फ हेल्प कंटेंट फॉलो कर रहा हूँ और मैं 14 साल का हूँ. अगले साल मेरे बोर्ड एग्जाम्स है, पर जब भी मैं पढ़ने बैठता हूँ मेरा दिमाग बेकार चीजों में पीछे भागता है. अगर से मैंने any new subscribers who have not heard this, let's get little scientific. First and foremost, you are very young, so your brain is not fully developed. It develops from the back to the front. Your limbic system is formed first, and there your amygdala and your overwhelmed. Second part जो तुम्हारा, I mean the main part जो cerebral cortex में prefrontal lobe में होता है, वो तुम्हारा 24-26 onwards पूरा brain form होता है. वहां पे तुम्हारी cognitive thinking होती है, तुम्हारी rational thinking होती है. तो अब जब हम 16 साल के होते, एक तो हमको गर्लफ्रेंड्स में ये कंपैरिजन में जो हम फंस जाते हैं, हम सोशल मीडिया देखते हैं, हमको इतना प्रेशर होता है. एक तो बोर्ड एग्जाम्स आते हैं तो वो प्रेशर होता है, राइट? तो मल्टीपल फैक्टर्स, देयर इज नो वन आंसर टू यू. आपका दिमाग यहाँ क्यों भाग रहा है? बिकॉज मल्टीपल रीजन से भाग सकता है, और वन ऑफ द मेन रीजन से भाग सकता है क्योंकि आपका पोर्शन इज ओवरवेलमिंग यू, बिकॉज यू हैव टू मच टू प्रूव. Not even to yourself, it's more about others. कि लोग क्या कहेंगे, मुझे मार्क्स कितने आए, मेरे परसेंटेज कितना है, मेरा कॉलेज कौन सा होगा. सो जब हमारा बहुत ज्यादा हमारे ब्रेन पे प्रेशर पड़ता है, the first thing your brain decides is the survival instinct kicks in, because otherwise बहुत एंजाइटी होती है, cortisol रिलीज होता है, एड्रेनलिन रश होती है, तो हमारे को palpitations होते हैं, हमें एंजाइटी इसी होती है कि oh my god we are going nowhere, oh my वो वाला जो effect होता है हमारे ब्रेन पे कि the world is coming to an end. So our brain tries to run away and find solace in places where you feel calmer. Let's say where you imagine you got first class or distinction, or with your girlfriend, or
हाइपोथेटिकल वर्ल्ड में, जिसको मैल अडेप्टिव डे ड्रीमिंग बोलते हैं, बहुत सारे आप लोग बच्चे मेरे पास मैल अडेप्टिव डे ड्रीमिंग के लिए आते हैं। तो प्लीज जिन जिन को ये प्रॉब्लम है, आपको अगर से रियलाइज हो रहा है, कनेक्ट विद मी, आई गिव यू रिसोर्सेज। देयर इज नो क्विक फिक्स टू दिस, you have to learn to come back to the reality, you have to make a schedule. ये पूरा हफ्ता आपको कोई ना कोई वीडियो स्टडी रिलेटेड ही आएंगे मेरे यूट्यूब पे। मेक श्योर कि यू डू द, किसने अभी मैंने लर्निंग पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर्स होते हैं उस पे एक वीडियो डाली है, go and find out your learning style. Contact me, I'll give you study resources, I'll give you procrastination. Obviously you're procrastinating, you need to find out why you're procrastinating. Are you studying last minute? Have you not, is the subject not your, like, to your liking? Is the portion overwhelming? There could be multiple reasons आपको ऐसा हो रहा है। अभी इसका एक solution नहीं है, इसके multiple things आपको करने पड़ेंगे, including taking ashwagandha, brahmi for focus, and in case anybody is feeling too much anxiety, I would recommend you please get a blood test done. ऐसा हो सकता है आपका विटामिन डी, आपका मैग्नीशियम लो है, मल्टीपल विटामिन के डिफिशियंसी हमें एंजाइटी होती है। प्लस देयर इज समथिंग कॉल्ड अ सेरोटोनिन का सप्लीमेंट। आई वुड रिकमेंड डोंट गेट इनटू all the supplements, only when you need it, please do it. Yes, everybody can take a multivitamin under the prescription. अगर से आपको लगता है आपके पास कोई आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट है या आपके पास कोई जीपी है, सारे होम्योपैथी करते हैं, in case you people want to contact him, especially apparently according to him, I don't know how true it is, but he says he has got some homeopathy which can help you overcome your heartbreak. So if you feel like, contact him and let me know how it goes so that I know I have some reference point whether it works or not. Okay, so can I now YouTube and Zoom, can I focus on Insta because I've been reading all the messages only from here? नहीं तो बोलेंगे मैं पता नहीं क्या कर रही हूँ यहाँ पे। I sent the request, okay, ये मैंने पढ़ लिया था। गिटार की आवाज नहीं थी, please. Hi Rahul, how are you? Good to see you here. I'm getting waiting host to start. ऐसा हो ही नहीं। Oh, okay. Everybody, there's a new Zoom link. Please don't use the Zoom link which I've given on Insta story. Oh my God, how do I change this on Zoom on Insta? If I close this window, it will not work. So please understand, on YouTube, in the chat, live chat जो चल रही है, वहां पे नया लिंक डाला है YouTube, Zoom का. Please join from there. Don't join from the Insta. I've started a wrong meeting. I'm so sorry for this stupid mistake. Okay, why are you? What? Like what? पता नहीं तुम क्या क्या लिखते हो. Hi क्षितिज, कैसे हो? Hi सुनील. Hi SS Verma. Hi मैम, हाफ एन आवर से ट्राई कर रहा है. आई एम सो सॉरी, आई मेंशन्ड इट. प्लीज यार सारिम, कैन यू पुट इट इन द लाइव चैट, द जूम लिंक जो मैंने यूट्यूब पे डाला. जो भी मेरे साथ तीनों जगह है, जो जूम पे है, जो यूट्यूब पे है और इंस्टा पे है, कैन यू ऑल पुट द लिंक फ्रॉम यूट्यूब इनटू द लाइव चैट ऑफ व्हाट दिस इंस्टा, बिकॉज आई कांट एट दिस मोमेंट. मैं ठीक हूँ कल्पेश. Are you, please, can you please contact, go to my YouTube channel, please guys, go to the YouTube channel, वहां पे लिंक डाला है. अरे लाइव तो ऑलरेडी होता है यार. Hi my art, hi Priya, how are you? Okay, so can I now focus on, बहुत सारे messages आए हैं. पहले अभी Zoom का चांस है. Oh wow, that's a long message, Arun. Okay, give me first, let me, vintage Rachna Daryani ma'am is back. Thank you. Uninstall Instagram. It is a source that forgets such insecurities and makes them look. Yeah, it is one of the things you need to really reduce your social media consumption. It fucks up your mind. The intention was not to generalize, no one has to stay away. Yeah. Thank you, Arnav. You're a very good child. People जो apologize करते हैं जब गलत करते हैं और जब उनको पता होता है वो गलत होते हैं, that's a very good quality. Very few people do that. So people who have that, okay. So we have a new question. Okay, so it's written, I'm a 22-year-old man living in Delhi and I identify as gay. Okay, I started working this company 6 months ago, and from the very beginning I developed a crush on a colleague. Obviously, जिन को पता नहीं what gay means, men and men.
it's safe to say it's more than an infatuation than anything else. First, I was going through a tough time mentally and emotionally, so I tried to distance myself from him, avoiding getting affected by his presence. It's in response, he began to avoid me as well. Lazim. Okay, it didn't take long for me to realize my mistake and I started working on correcting it. However, our interactions never really went back to normal and we usually had chilly exchanges at the workplace. Okay, his presence used to have a significant emotional impact on me because to me he seemed like the perfect guy, except for his tendency to come across a bit flashy and always wanting to appear cool. After a lot of reassurance, I managed to become more comfortable and less affected by his presence. However, in the last few days, something changed. He began talking to me with a more relaxed attitude, even assisting me with my work on one occasion. It felt like he wanted to connect with me, but he always kept up on a facade in the office. And then today, which was the day after his birthday, it was celebrated in the office. Surprisingly, he didn't initiate any conversation with me. Okay, sitting, it was celebrated. Okay. Surprisingly, he didn't initiate any conversation with me despite sitting right behind me. The only brief interaction I can recall was when I went to have a drink of water from the cooler. Even then, I asked him about his birthday celebration. And this time he responded generally without putting on his usual cool light. Mentioned he stayed at home and watched Hotstar due to the rain. Okay. If you turn on video, won't show on YouTube, right? Who asked me this? No. Because my chat is on speaker mode, so only I'll be visible. So yeah, okay, very interesting, and I'm glad to have a new. I know everybody who is homophobic, please leave the chat. Okay, and if all the bachas who are not sure of their orientation, please wait till you find out. I just recently had someone contact me who during his young days didn't know his orientation, so he got sexually into with guys, and today he is not being able to overcome the trauma. Okay, and yeah. मुझे किसी ने वो शक मुंह में पा लिया, भगवान जाने आरजे क्या लिख रहे हो. अच्छा, okay, so now let's address. So you're 22, but I can see your diction and the way you have you're pretty clear with your thoughts, and generally the 22-year-olds that I deal with, they don't write the way you have written. So it's good that you've elaborated very well and you've not left me with 2 sentences. And you seem to be pretty grounded at what you think you are and what your orientation is. Now, the thing is this, obviously इनका fake name है तो मैं ले सकती हूँ. तुम्हें पहले तो ये क्लियर करना है कि वो गे है कि नहीं, या वो बाइसेक्सुअल है. मैं तुम्हें अभी से बोल रही हूँ, you are headed for a rough time. Why? Because in India, I'm guessing you're in India itself. In India, most of the time, people are homophobic वो एक segment of society, या almost everybody around. पर जो इंसान खुद gay होता है, या homosexual होता है, या lesbian होता है, जो इनकी LGBTQ की जो tendency होती है, वो खुद ही they cannot come to terms with it. Why? Because इतना easily accepted नहीं है हमारे कंट्री में. तो आपको समझना है, it could be कि one, he is apprehensive with being who he is. Perhaps he's only bisexual, so he's experimenting. He could be bi-curious. Maybe unlike you, he doesn't know what his orientation is. That's why he keeps switching. His way of conducting his behavior keeps changing around you. Sometimes he's like, chalo, let's give it a shot. So he's nice with you. Then all of a sudden, usko ghar jaane ke baad usko realize, oh, what the fuck am I doing? I need to be careful. It could be that. Or you're reading too much into it. Could be he's just a regular colleague. और अगर से आप
किसी भी अपने फ्रेंड को पूछोगे, किसी भी आप इंस्टा वाले, प्लीज डो नॉट यूज द लिंक फ्रॉम द स्टोरी, कम टू यूट्यूब, द लिंक इज ऑन यूट्यूब, इन द इट्स बीइंग पिन्ड इन द चैट. सो ऐसा हो सकता है कि यू आर रीडिंग टू मच इनटू इट and you're reading too much of into his behavior. Maybe, I don't know, you have not told me whether your hands ever brushed. Regular जो लड़का लड़की में जो होता है, हाथ ब्रश होता है, आप एक दूसरे को गेज करते हो, स्माइल करते हो, एक्स्ट्रा टाइम निकालते हो, make sure that you go to the water cooler together or whatever it is, right? ऐसा साइंस अगर से आपने नहीं देखा है, then you're reading too much into it, or he is still not sure what he's doing. Maybe he's still figuring it out. Is he bisexual? Is he gay? Or is he straight? So be careful of your heart. Don't read too much out of it. Stay the way you are. And yes, एक तरफा प्यार की ताकत तुम क्या जानो, रमेश बाबू, अरुण बाबू. Trust me, it's one of the, लोग बहुत बोलते हैं, right? एक तरफा प्यार is like so amazing. I think it's not really a great thing. As much as I have seen, जिनको एक तरफा प्यार हुआ है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो लोग सैड रहते हैं, क्योंकि हम सारा टाइम, हम इंसान की फितरत में है कि हमको रेसिप्रोकेशन चाहिए, हमको ऐसा चाहिए कि हमें कोई, इट्स नॉट कंफर्टेबल बीइंग अराउंड समवन यू कीप सेइंग आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू, आई एम इन लव विद यू, व्हाटएवर, एंड दैट पर्सन डजंट रेसिप्रोकेट, राइट? इट इज वन ऑफ दोस थिंग्स यू नीड टू बी, अनलेस you need to be super strong that I'm okay that you don't love me or you're not attracted to me, but I love to have you around. That is a different kind of breed. Some people can do it, but most people that I know cannot do it. So आप जरा ध्यान रखिए. Second, find out करो क्या उसका orientation is actually. Maybe also he's in a relationship already and he is perhaps cheating on his partner. If he is showing interest with you, anything is possible. Multiple things are possible. Now why? Because neither do I know him, neither do you know कि उसने सच में हॉटस्टार देख के रात को बर्थडे सेलिब्रेट किया था कि किसी और के साथ था. ऐसा हो सकता है कि नहीं था. इंसान क्या सच हमेशा बोलता है? नहीं. बहुत बार मैंने तो लोगों को देखा है, अच्छे से दिग्गज लोग झूठ बोलते पकड़े जाते हैं. तो तुम्हें कैसा मालूम है कि वो अकेला है कि नहीं? हो सकता है वो नहीं. अब तुम बोलोगे करके, सी आई एम प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट, आई एम प्रिपेयरिंग यू फॉर द वर्स्ट. मेरा काम तुम्हें ये नहीं है करके, अरे कितना स्वीट है, कितना क्यूट चल रहा है तुम्हारा ये एक तरफा, नहीं. मेरा काम वो नहीं है. मेरा काम तुम्हें पुश करना नहीं है. मेरा काम है तुम्हें पर्सपेक्टिव देना, तुम्हें इंट्रोस्पेक्ट कराना कि आर यू श्योर. तुमको लगता है कि ये, और ये सिर्फ गे और लेस्बियंस में नहीं होता, ये स्ट्रेट कपल्स में भी होता है. जहाँ पे आपने इसने लिखा ना, ही सीम्स टू बी लाइक द परफेक्ट गाय. आप में से गौरव, कितने सारे लड़के हैं. याद है मैंने लास्ट टाइम तुमको एक बार बोला था, एक लड़के ने एक लड़की को हाय बोला किधर, शॉपिंग मॉल में. क्यों बोले तो किसी डेटिंग कोच का वीडियो देख के ही स्टार्टेड अप्रोचिंग रैंडम पीपल, रैंडम गर्ल्स. क्यों बोले तो उसको वाइब सब अच्छी लगी. अरे वाइब अच्छे लगना, किसी के साथ काम करना, उनका रियल नेचर आपको नहीं समझ में आएगा जब तक आप वो इंसान के साथ उठना बैठना नहीं करते हो. उनके साथ, ऑफकोर्स, till you don't live with somebody entirely, you will never ever find out what they are like. So don't get carried away. They might seem like they are perfect, but all of us have that part of us which is very hidden. You will not for sure know this person once you talk to that person. See, अभी तो आप लोग कूलर के सामने बात कर रहे हो, आप लोग प्रेजेंटेशन शेयर कर रहे हो, टीम वर्क करके आप लोग साथ में जो भी कर रहे हो. पर ऐसा हो सकता है जब आप लोग एक्चुअली कॉन्वर्सेशन करने लगो, आपकी 5 स्टाइल्स अलग हो सकती है, आपकी कम्युनिकेशन स्टाइल्स, आपके कोर वैल्यूज, आपके लव लैंग्वेजेस, आपके अनबन, आपके सोच विचार, इट कुड बी ईस्ट एंड वेस्ट. इट्स पॉसिबल दैट यू आर, we always fantasize about people we really like. So you need to ground yourself. One. Second, make sure that you really know, is he gay or he's not? Is he involved with anyone else or not? And if he is doing this आगे पीछे, maybe इंसान में ऐसा होता है ना, हम किसी को पसंद करते हैं, कभी हमको साइंस देना अच्छा लगता है, कभी हम लोग रिट्रैक्ट करते हैं कि नहीं यार, इट्स नॉट अ गुड आइडिया इन ऑफिस, व्हाट विल पीपल थिंक, ओ माय गॉड. ऐसा बहुत सारी चीजें हो सकती हैं. So you'll have to figure out which one is it, because I don't know the person. But all I can say, you're still very young. Be careful who you
have sex with, who you have one night stands with. If my research is not wrong, more HIV, let's say, patients are homosexual because जो हमारा Hi, ma'am. एक second, I'm talking one second. Raise your hand if anybody wants to talk. Just give me one second. So please make sure that even if you get carried away, be careful with your health. हमारा heart, हमारा body, सब कुछ precious है. Don't throw it away, and you will have more people who will be into you and you will be into them if this doesn't work out. And if you have more questions regarding this, if something has happened in office, let's say tomorrow, day after, मैं सारा time life तो नहीं आती. आप हमेशा, like most children know, I've become like almost like a dating coach. मैं last time ये बोल रही थी मुझे मैं dating coach बन जाना चाहिए because मुझे इतने सारे queries आते हैं, इसको क्या बोलना है, वो क्या करना है. So please connect with me and don't worry. I'll always protect all of you all. You never have to worry that I'll ever, give away your identity or ever hurt you deliberately or intentionally or unintentionally. I mean well. Okay. Everybody wish Aryan today. It's his birthday. Happy birthday, Aryan. Thank you, ma'am. How are you? I'm good. I'm glad you showed up. I was wondering कि तुम्हें text किया कि तुम आओगे कि नहीं, तो इसलिए मैंने बोला चलो text करते हैं. At least तब वैसे तो आपको wish कर सकते. मेरे फोन की बैटरी डेड हुई है almost. I took my sister's phone. मुझे IG पे notification आया. I'm out right now. I'm in a bath. Oh, okay. ठीक है. You enjoy yourself. I'm glad I got a chance to wish you. And ones who know Aryan, he's almost on every Zoom live of mine. So I hope I answered your question, Arun, and you're happy with the answer. Okay. And if you have any more questions, you can always DM me. जो YouTube channel का नाम है, उसी का नाम Insta पे. Okay. मैम, ये क्या लिखा है आरजे? मैम, किसी ने वो शख्स मुफ्त में पा लिया जो मुझे हर कीमत पे चाहिए था. एक तो इंसान है, कोई मुफ्त में कैसे मिल सकता है? क्योंकि इंसान की वैल्यू नहीं होती, हम प्राइसलेस होते हैं, सॉरी. तो किसी की वैल्यू एक तो तुमने डिसाइड नहीं करनी है. 1, 2, अगर से दैट पर्सन वाज नॉट मेंट टू बी, दैट पर्सन हैज अ चॉइस, ओके, टू चूज हुएवर दे वांट टू बी. इट डजंट मीन कि आप अच्छे नहीं हो या वो अच्छे नहीं है. अब some things are just meant to be, so let it go. Okay, who is Rohan? I'm good, Rohan. I don't know कैसे नाम रखते हो आप लोग. मायाट, how are you? Yes, बोलिए. आर्यन, आप बात कर रहे थे कि अर्नव आप बात कर रहे थे कि कौन बात कर रहा था? हैंड रेज करो. हाय उत्कर्ष, कैसे हो? आय अमन, जागृत. अरे जागृत, तुम जागृत नहीं हो काफी दिन से और मुझे क्वेश्चन नहीं पूछा. मुझे फोमो हो रहा है. हाय प्रदीप, हाउ आर यू? मायाट, हाय. पोएटिक टर्बुलेंस यहाँ भी. एनी टिप्स टू डू मेकओवर फॉर 50? My phone is down. Sorry? I was asking how are you? I'm good. I'm much better. I was not well for a week plus. Yeah, so I literally just opened my phone for a second to like wish thank you वगैरह बोलने के लिए. मेरे फोन की बैटरी बहुत लो थी and I was like okay, I saw your live notification. I'm like I gotta go. Okay, कोई बात नहीं. You can join later whenever आप. मैं literally यहाँ पे बैठा हूँ. I have no headphones. Okay. अच्छा. Okay, no problem. If anybody Insta पे जो भी आना चाहते हैं Zoom पे बात करने के लिए, text करने के लिए, please use the link from YouTube community, not the link. I'm sorry, I posted in Discord. Everything I've gone and started a new meeting and I have not realized it. Now I don't want to cut this meeting off because then YouTube आधा अधूरा रह जाएगा और वो जो भी होगा. ठीक है? Any tips to make over for a 55-year-old mom? Who knows my age? I'll go. Yes, please go ahead. Have a good evening. Yeah, Okay? bye, ma'am. Bye. Okay. For the ones किसी ने अपने 55-year-old mom के लिए, देखो, एक तो age बोलते हैं करके is in your mind. 1, 2, fitness is very important. Make sure your mom is exercising, is doing her meditation.
बिकॉज ऑफ नी प्रॉब्लम्स जॉगिंग नहीं करना चाहिए। आप पिलाटेस कर सकते हो, योगा कर सकते हो, वेट ट्रेनिंग कर सकते हो। तो सबसे पहले फिटनेस पे ध्यान दो। अगर से उनको मेंटली स्ट्रॉन्गर होना है तो शी कैन कनेक्ट विद मी, आई कैन हेल्प हर विद इमोशनल वेलनेस। बात ग्रूमिंग की आए तो यू कैन ऑलवेज हैव, इफ इन केस यू हैव द मनी then you can hire a style consultant. If not, it's not that difficult to style yourself. Get a good makeover by going to a salon, coloring your hair, getting the right cut. That is like one of the most important things, how your hair looks. Make sure कि बाल और फिर अपना स्किन के लिए आज तो dermatologist, and I'll give one tip that as much as possible try to use natural ingredients. As I always मेरे को मेरे स्किन केयर के बारे में पूछते हैं, less is more, don't use too many things, it's not good for your skin. जितना कम करोगे उतना तुम्हारा, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, मैंने आईब्रोज कभी नहीं कराया है, मैंने फेशियल नहीं कराया है। Why? Because when they tug and pull and when your glands are all the time, they वो मसाज करते करते ज्यादा पोर्स ओपन हो जाते हैं। फिर ऑफ कोर्स 55 में एक्ने तो होगा नहीं, बट फिर भी तुम्हारे रिंकल्स के लिए रेटिने यूज कर सकते हो, पर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओ। देन दीज कोरियन ब्रांड्स राइट नाउ दे आर सो फेमस। पता नहीं मेरी डॉटर पता नहीं मुझे क्या क्या टिप्स देती रहती है। सिंपल थिंग्स आपको यूज करना है। गो टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट, गो टू द salon, try to lose weight if you are gaining weight, because as you age weight और भी डिफिकल्ट होता है टू लूज। तो मेक श्योर कि दिन में एट दिस एज, योर मदर्स एज, मेक श्योर कि you don't need to eat 3 full meals unless you are super active, then yes, but otherwise try to eat more protein, more fiber, fruits, vegetables. Enjoy karo life, very important. You don't have to starve yourself to death. That's the wrong way of losing weight. Intermittent fasting is very helpful. I do that most of the time. That's why I've stayed, like I'm still okay. I will not say I'm still where I want to be weight wise, but I'm still not bad. And रात को ठीक से टाइम पे सोना, पानी पीना। I stand every hour, I walk every hour at least for a minute or 2 minutes. Now recently, because of my neck problem, whenever I stand, I do the stretching neck exercises. Make sure your mom does it, because as we age, आपका मसल्स बहुत स्टिफ होते हैं। तो जब उठते हो सुबह में, मेक श्योर कि आप अपना बॉडी को थोड़ा मूवमेंट देने के लिए, सिर्फ ये एज के नहीं, आप सबके लिए ये वाला टिप है, ठीक है। And if any other questions you have, please ask me in DM. MC stand is straight up authentic. FR क्या होता है? पता नहीं। Okay, go to link. Okay, Rahul Sharma. 1 minute यार. Oh my God, ma'am, feeling very existential. काहे? Why are you feeling like that? हम जैसे लोग जो, मैं एक बार अभी रिसेंटली श्वेताब का स्ट्रीम देख रही थी और उसमें वो बोल रहा है करके, हाय मेरी जिंदगी, हाय मुझे एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो रहा है। मैं इधर सोच रही हूँ हार्डली वो 30 समथिंग का है, या हम 50 समथिंग के हम लोग, तो हम लोगों ने क्या फील करना चाहिए यार? सबके साथ होता है। रिलैक्स, जैसे अपनी जिंदगी को लव करो। मोहित पटेल, या सीम्स लाइक। लिंक कहाँ है जूम की? अरे यूट्यूब कम्युनिटी में मैं बोल बोल के मैं खुद परेशान हो गई हूँ, ठीक है। प्लीज यूट्यूब कम्युनिटी खोल के देखो। ओके, एक सेकेंड, मुझे क्या लिखा है? कम्युनिटी लिंक इज नॉट वर्किंग। नहीं, सॉरी, नॉट यूट्यूब कम्युनिटी। गो टू माई लाइव सेशन, go and click on the pinned message in live chat. It's okay, I'll repost it. I think I have not, let me see if I can repost it. Paste करने से वही आएगा। हाँ, आ गया। Okay, go check my chat right now. मैंने अभी ये किया है। एक तो ये ना एंटर, हेलो अभी कर दिया। अभी मेरे को क्वेश्चन पढ़ने दो, क्या लिखा है? हाउ टू क्योर एंजाइटी वाली क्वेश्चन हमने आंसर कर दी। और ये तुम्हारा पीपो जो तुम्हारा था ना, मुझे तो क्वेश्चन समझ ही नहीं आया। आई मीन इतना बोलने के बाद भी तुम ऐसा लिखोगे तो इट्स सो सैड ना। ओके, आई फील हाइट सर्जरी इज द हाईएस्ट इनसिक्योरिटी दे कैन से। यार हाईएस्ट और लोएस्ट क्या होता है, इंसान को समझना चाहिए कि सारे लोग हमारे बलबूते पे पैसे बना रहे हैं, राइट? कुछ भी चीजें बेच बेच के, ये स्किन, वैसा बाल, वैसा हाइट, इतना सब चीजों में नहीं किया करो। आशीष अमन, नेवर रेड योर नेम बिफोर, सो
What did I do for 2 weeks? Please rant. Okay, I'll rant. So we have to rant about Honey Singh and we have to rant about the movie Jawan. Okay, so remind me. Let me read any other questions I think. Okay, hi ma'am, मैं बहुत टाइम से हाँ मैंने आशीष तुम्हारा रिप्लाई कर दिया था क्वेश्चन कि तुम्हारा सेल्फ हेल्प वाला मेक सेंस. सॉरी ma'am, texted you a while back while I was in 12th and was having lot of backlog at that time and was regretting a lot of time. You said note today's date and start studying from now. I guarantee you will be somewhere. And today I'm studying in an Indian Institute of Science and Research Institute, Bhopal. Thank you so much for helping me from the bottom of my heart. And you and Shweta are literally angel of my life. I'm so glad, Sumit. I'm very, very happy to hear. But नाउ इसमें से भी मैं तुमको कुछ बताऊंगी जो मुझे फील हुआ. अब तुम लोग ने सबने ये पढ़ा होगा कि आई एम वेरी ग्लैड सुमित इज डूइंग वेरी वेल एंड आई एम ग्लैड आई हेल्प्ड हिम एंड ही इज डूइंग वेल एंड ही इज इन किधर क्या लिखा उसने इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट इन भोपाल. ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि आप लोग सब पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, पर आप आईआईटी नहीं गए, आप लोग आईआईएम नहीं गए, आप निफ्ट नहीं गए या जो भी बिट्स पिलानी नहीं गए या जो भी so called Harvard नहीं गए या it doesn't mean कि you will not make it. All of you all get this into your head. Do not hold yourself to only this piece of paper. You're bigger and better than that. Your value is more than that. Okay, so please remember, although I'm very happy for him, I'm happy for all of them. अरे यार नमन एग्जिस्टेंशियल काहे फील कर रहे हो और उसका मतलब क्या, तुम्हें क्या फीलिंग्स आ रही, एक सेंटेंसेस में मेरे को बोलना बंद करो, प्लीज एक्सप्लेन योरसेल्फ. हाँ, सो ऑल ऑफ यू ऑल प्लीज अंडरस्टैंड, यू गॉट टू स्टडी, you got to make sure that you are taking care of your career. But just in case आपका जो ड्रीम्स है, जो आपने सोचा था लेट्स से 10th ग्रेड में या जब भी आपने सोचा था मैं स्ट्रीम लेके लेट्स से डॉक्टर इंजीनियर जो भी आपको बनना है, मैं आईआईटी जाऊँ, जो भी आपका नहीं भी फुलफिल हुआ, इट डजंट मीन दैट योर लाइफ इज गोइंग टू बी नथिंग. इट डजंट मीन यू आर अ फेलियर. प्लीज अंडरस्टैंड दैट आपकी लाइफ आगे जाके भी बदल सकती है, आप बदल सकते हो, और नॉट नेसेसरी गोइंग टू अ पर्टिकुलर कॉलेज इक्वल्स टू बीइंग सक्सेसफुल in life. There is more to success, like I say. So make sure कि success ऐसे इंसान को नहीं जाएगा जो सारा टाइम तरस खाएगा और पीछे पास में जीकर ऐसे बोलेगा कि हाय मेरी जिंदगी खत्म हो गई just because I didn't go to a particular school or a particular college or I didn't do something specific that I had planned. Please change your plan and start all over again. Okay? Okay, ये क्या लिखा है? Tesla was for Arshad, was static, electricity was someone else. अच्छा, okay. Sorry. मुझे नहीं. Okay. क्या आशीष क्या है मैम, आपने इंस्टा अकाउंट डिसेबल कर दिया? नहीं, तुम्हारा क्या है, इंस्टा पे लाइव चल रहे हो, डिसेबल कैसा होगा? डू अपसेट स्टमक कॉज एंजाइटी. The other way around. Upset stomach, of course, if you're very unwell, suppose you're a person who gets overwhelmed with every illness or even the small case, पर anxiety से IBS होता है ना, irritable bowel syndrome, stress से पेट दुखता है, indigestion होती है, तो stress से बहुत सारी बीमारियां होती है. पर अगर से आपको stress, upset stomach से anxiety हो रही निखिल, then it's possible कि there is more to it, as in ki something is bothering you. Why don't you get it checked up? If you're having a constant upset stomach, that is not good. First and foremost, find out why you're getting it. Is it the coffee which is triggering it? Is it your food? Are you eating too spicy khana? क्या तुम लेट तक खाना नहीं खाते, ऑफिस में काम करते करते मील स्किप करते हो, आप लेट ब्रेकफास्ट करते हो तब तक एसिड बन जाता है, या आप बहुत लेट खाना खाते हो रात को और एसिड रिफ्लेक्स हो रहा है. बहुत कुछ चीजें होते हैं हमारे डाइजेशन सिस्टम को लेके. यस, हो सकता है कि आपको, कुछ लोग हम में से ऐसे होते हैं जो हर छोटी बीमारी को दिल से लगा के बोलते हो भगवान कितना बड़ा, ऐसा हो सकता है कि आपकी एंजाइटी उसकी वजह से होगी. तो look into it and connect with me, DM me. ठीक है, ठीक है. मैसेज क्या रिट्रैक्ट किया? कैन यू प्लीज नॉट रिट्रैक्ट, मुझे इरिटेशन होती है. अभी जा रहा हूँ 1 घंटे में पढ़ने को. ओके, विल रिकमेंड. ओके, ओके, कूल.
2-3 example, 2-3 just start studying, beginning will be small in 1 hour productivity. हाँ, so he's talking about, by the way, ये कौन है? Ashish, contact me, I'll give you the study resources, all these techniques from Pomodoro to, or even more so, lots of techniques and lot of hypnosis which helps you, lot of supplements which can help you all study better. ठीक है? तो contact me for that. Hello, Ayushman Patidar, कैसे हो? Itachi, good to see you here. रजनीश मैम, किसी ने वो रजनीश साहब आपने यहाँ लिखा था, हमने पढ़ा, आप फिर YouTube पे लिख रहे हो, बट थैंक यू मैम. हैव यू वॉच्ड एनी मूवी रिसेंटली? हाँ, चलो अभी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आंसर में 2 घंटे, कितने घंटे हो गए मेरे को ऐसा लग रहा है, मैं पता नहीं मैं कब से बैठी हूँ, ऑल्दो से 1 hour 15 minutes हो गए. ओके, सो आई वॉच जवान. Okay, it was an interesting script, especially because it's related to India and because it's, I have heard that these are certain incidences which happened in India, and it was obviously in the movie, and then some people said, oh, it's anti-BJP, anti-this, but I was watching some review and they said, नहीं, ये problems पहले भी होती थी, तो हमारे India में कम problems है क्या, to be very honest with you. So I don't think it was, okay, but I preferred Pathan for some reason. I think I like that as a movie. ये थोड़ा stretch हो गया, over the top, और शाहरुख खान is a decent actor. I won't say he's wow. मुझे कभी उसमें ऐसा नहीं लगा कि he's like a let's say किसका नाम, इमरान खान जो गुजर गए थे वो, या नसरुद्दीन शाह, या अनुपम खेर, या अनिल कपूर, या see there are Amitabh Bachchan for that matter. There are some like really great actors. I never felt, I thought Shah Rukh is more like a star. He has that persona, right? He's very whatever. But I never thought that he's a great actor. So I hope it's not a spoiler, but spoiler alert. So there are two of them in that movie. एक झेलने में प्रॉब्लम हो रही थी, दूसरा भी आ जाता है, तो ठीक है. So I'm not very sure, but I would rate it 7 or 7.5 on 10. But I really liked Jailer. I told you last time, really enjoyed it. Although it was a masala, full-on masala movie. Rocky and Rani was iffish, but I think this guy Ranveer Singh is a brilliant actor. No, I don't listen to Andrew Tate. दूर तक ऐसा अपने पर टाइम नहीं है यार लाइफ में ये सब करना. और भी कोई मूवी देखी थी, याद क्यों नहीं आ रहा यार, क्या मूवी देखी है. उसके बाद भी मैंने पूरे टिकट्स खत्म कर दिए, मैंने सारी मूवी बैक टू बैक देख ली है. हाँ, मैं ओ माय गॉड देखा था लास्ट टाइम, मैंने बताया था. हाँ, हमने उस पे बात नहीं की, ओ माय गॉड 2 पे. ओके, ऑल यू चिल्ड्रन, बिकॉज आई एम सच अ प्रोग्रेसिव काउंसलर and I speak about porn, sex, masturbation. We have tried to address it in the last 2 years, Shweta, me, and other places, right? So, is it easy watch? No. Why? Because obviously we are not used to it as an Indian audience to openly speak on a topic of masturbation. It was rough to actually, even as a counselor, for me, there were times I was like in my, but then, I said, "Nee, this is so good. It's so good to see that people are actually talking about this topic." And like, it would help if our school, हमारे टाइम पे भी, although ये school, hi Asim, how are you? Good to see you. So, हमारे टाइम पे भी sex education होता था. ओके, आप लोगों के भी टाइम पे है, ऑल्दो वो पार्ट मुझे समझ भी नहीं आया, वो स्कूल वाला पार्ट जहाँ बोलते सेक्स एजुकेशन नहीं हो रहा है. मुझे लगा हर स्कूल में इट्स कंपल्सरी एट grade 5 if I'm not mistaken, when they discuss birds and the bees. But what my point was, in the last, if you saw when I had called these people who are जो porn addiction में help करते हैं, they're not necessarily counselors. When I did that guy Frank Rich, क्या नाम, कुछ रिच था उसका नाम, उसको भी मैंने सेम चीज बोली थी. मैं अभी भी वही बोलती हूँ कि हाय दिव्येश परमार. सो अभी भी मैं यही बोलती हूँ, आप लोग जो भी बड़े होके टीचर्स बनेंगे, I need you to make sure that in your school, college, there is sex education, we know is there, but this nuance is missing on how much to masturbate. They don't talk about what porn addiction can do to you. Okay,
I was just telling you about this particular case, or I went tangent to address that question. All of you all, so many of the boys, I know, किसी का नाम ना लेते हुए, I'm sure आज मुझे जो भी देख रहा है, उनमें से कुछ लड़के तो 100% है जो पॉर्न देखते देखते एक्सपेरिमेंट करते हैं सेक्स के साथ विद अदर गाइज एंड ऑल दोज थिंग्स व्हिच यू वॉच इन. अगर से हमें स्कूल कॉलेज से ये बताया जाता कि हाउ इट कैन रूइन योर लाइफ, हाउ मच better you all would have done, rather than I have someone who's been into addicted to porn. He recently told me for a couple of years he's not being able to get out of it, and there are many of you who are stuck there. Some use the resource, can get out of it. Some don't use the resource, don't get out of it. Some use the resource and still can't get out of it. So this, all of you all, if you ever become teachers, are in anywhere in the education system, try to get this into the system where they talk about, talk about these difficult topics: pregnancy, what it is to send your nudes to anyone, what it is to blackmail someone. There are so many people who in their love affairs, initially वो लोग exchange करते हैं photos and videos, and then जब relationship work नहीं करता तो वो ब्लैकमेल करते हैं लड़की लड़के को, whichever way हो जाता है. तो these are the topics, if we are taught when we are kids not to do this, that what should be done, what should not be done, what is the right approach, what is the wrong approach, right? So I hope one day, so yes, all of you all must go and see Oh My God 2. I think it's a very progressive movie for India, and I hope it will change the way we talk to our children. Like I took my daughter with me, who's 21, and I was telling her ki I don't know, like I talk with you all so freely, right? My son is still 12. Even though I'm a counselor, even though I am in this line, I'm not very sure as a mother whether that I can so effortlessly maybe make a conversation on watching porn or masturbation or experimenting and stuff like that. I can do it with my daughter. I had it easy. I was at ease when I discussed it with her. But somehow the mother-son, perhaps I don't know what you call it, the vibe is very different. I feel a little, so I told my husband about it. I said, तुम बात कर लेना उससे, ठीक है, थोड़े 1-2 साल में. आई डोंट नो, इवन अभी भी करना चाहिए, क्योंकि जितना मैं देख रही हूँ, आई थिंक तुम लोग तो बहुत जल्दी ये सब चीजों में, हम ऑफ कोर्स हमारे घर में चाइल्ड लॉक होता है, हमारा डोर्स ओपन रहता है, हमारे बच्चों को कंप्यूटर एंड वो सब अपने रूम में लेके जाना अलाउड नहीं है. दे आर सपोज टू प्ले एंड वॉच इट इन द कॉमन एरिया. सो वी आर this thing, but and of course he's going to an international school where they are far more progressive in talking about all this. But I hope that as time passes by, we'll do a much better job as parents and as educators. So yeah, we need to watch Oh My God 2 to have awareness about the thing. We need common sense for that. No, I have not watched this movie, The Unlikely Pilgrimage of Harriet Fry. अच्छा, मेरे को मेमोराइज करना पड़ेगा. क्या लिखा? The Unlikely Pilgrimage of Harriet Fry. Never heard of it also. Okay, I'll watch it. If you were saying it's so good, not that. Hi Divansh, kaise ho? When I come to Zoom, you read YouTube chat. I'm so sorry. I'm reading all three. I'm reading Insta, I'm reading YouTube, I'm reading Zoom. Okay, Zoom पे क्या लिखा है तुमने? It's not a good cinema. It's more like occasion when a SRK new movie comes. Yeah, I would not consider it as. Oh, there's a new message by Clark. Sorry, I didn't read Zoom at all. Okay, Arun ने कुछ लिखा है, क्या लिखा है? Okay, okay, thanks a lot. अच्छा, जो हम थोड़े देर पहले जो गे वाला query हम sort कर रहे थे. Thanks a lot, ma'am, for giving such a detailed answer. He seems straight, though, as I've seen him talking about girls with fellow colleagues, but based on my experience, it's really difficult to guess anyone's sexuality. So I don't want to judge him, okay? Still, your perspective of him being already committed to someone else or lying to me could be right, as I've seen him
just going with the flow with conversations if they seem cool. He's a typical Gen Z guy. He's of my age and just a bit attractive in looks. I don't want to attach my peace of mind with him or attach my emotions with him, because it's gonna hurt me at the end. So I might start that cycle of avoidance soon, because I used to feel the same initially and it's not really good for my mental health. Correct, exactly. Also, ma'am, you shared a few tests to take people to take if they feel anxious or upset for a longer time. Can you give? No, I feel that I'm holding a lot inside only because of this colleague, but my happening life, and I don't remember the last time I laughed heartedly. Okay, so you need therapy. Now, what does therapy mean? It doesn't mean anything. It's nothing scary. It means talking about what's happening to you. Me, like when I have a counseling call, sometimes it's 1 hour, sometimes it's 1.5 hours, depends on the client's complicated life issues, and some have multiple sessions with me. Some I've spoken for last 2 years for smallest to biggest problems. So what I need you to do, and if you're not been happy better lately, then I need you to contact me. Let's fix an appointment. Let's talk about what's bothering you. One, unless you don't want to talk to me on an audio call, it's never a video call. The ones who ask me for a video call for whatever reason, I don't do video calls. So you don't have to worry. 2, I don't like it. So I'm more at ease and I can put on my Bluetooth and just sit and talk. So if you don't want to do that, then I will reply to your query via DM mein voice note ke through. So you decide which one you prefer, but you definitely need help. And yes, I will not just give you this, if you've been upset and whatever, I need to know what's the trigger, since when it's happening, what is bothering you. There are हर इंसान जो आता है, एंजाइटी एक ब्रॉड टर्म, उसके अम्ब्रेला के नीचे जो चीजें होती है बहुत अलग होती है. किसी का किसी चीज से स्टेम होता है. जैसे आज एक क्वेरी आई थी, he is picking up on his parental trait of his father, where he is very passive aggressive, right? So there are certain things that you must have learned from your parents, how you deal with anxiety, how you are as a person. Of course, it doesn't mean we cannot break free from who we are as people and obviously evolve as better humans. Of course, it's possible, it can be done. So aap bhi wo kar sakte ho. So connect with me. I hope you would want to. And if you feel more comfortable, but please wait. All of you, whoever are sending me DMs, I know there are DMs. It's not that I will not reply. It's just that कुछ दिन 20-25 होते हैं, कुछ दिन 50 होते हैं. बहुत मुश्किल होता है एक इंसान को किसी के 20-20 मिनट के वॉइस नोट या 30 मिनट के वॉइस नोट सुन के फिर 30 मिनट हम रिप्लाई करते हैं. तो मेरे घंटे चले जाते हैं इसमें. एंड आई, जैसे अभी किसी को मैंने 2 दिन के बाद रिप्लाई किया, मैंने उनको समझाया व्हाई आई डू दैट. बिकॉज इफ आई एम टायर्ड, इफ आई एम बर्नड आउट, इफ आई फील कि आई एम नॉट गिविंग यू क्वालिटी and I'm not listening to you, I'm like in a quick way just addressing your problems like I sit here and do, although I try to give it my best shot, but I like to take my time to reply to you. So if you can wait, would be great. If it's super duper urgent, then just flag it as urgent. I will try to reply to you. Okay, so now next, okay. Hi ma'am, first of all, I'm really grateful. This is some different query. First of all, I'm really grateful for your efforts to help us all and the bachas who are always with you, helping you operate things and do your job the best. Thank you so much. I badly struggle with girls. I'm in 2nd year of engineering right now, and from 6th class, I never talked to girls, not even once, for notes or anything like that. So much so viewed them like aliens. So much so looks like so much so is his favorite way of communicating. Don't mind, ये मेरा बीच में to lighten the mood हो जाता है. Okay, I viewed them like aliens, so much so that I couldn't even make eye contact by passing something, say a book across, and my entire arm would shiver. Now, to give some idea, I was never allowed to watch movies in my childhood, so I never liked the idea of love that showcased in the movies. Okay, I was self-radicalized that love was a crime because I had heard adults around me talking shit about lovers. Okay, I strongly believe people who do love marriages were one of the society's highest degree criminal. Wow.
Okay, you won't believe when I say that all these thoughts took place while I was in the 2nd and 3rd grade. Wow. Okay, how old is one person? They're like 7 years old. But then I had innocence too. Therefore, some female friends as well. Okay. So this is my pre-puberty thought process. Now coming to 6th grade, I had a little female interaction because I don't know why. And as the year ended, I came across this thing when some people in my class started to become couples. It disgusted me. But deep down, I wanted someone to love me so that I could be known for having a girlfriend. 7th class happened and I joined a group of cheap friends who made the dirtiest joke about sex, genders, boobs, penises, and etc. This was puberty effect, I believe boys experience. Okay, this group had little to no female interaction as well, which is why I was comforted and happy. 8th class came up and I felt that this one girl in my class was super cute, but deep inside I was disgusted about love, and this feeling of attraction was still there. I always used to stare at her at every opportunity, which was like 3 to 4 times a day. Absurd. No, it's not absurd. It's very common at your age. But then my shitty mind wasn't aware that I creeped her out every day. I always had crushes, but never talked to them. Pressure got to me into porn and masturbation addiction. Okay. This evolved into shyness, and now I cannot look at a girl while speaking. My eyes become dead like a goat size. Who told you this? I think you're exaggerating the effect, because this is what we do. We are so self-critical. We just criticize ourselves too much. By the way, मैंने तो गोट के eyes इतने clearly नहीं देखे, but I'm 100% sure तुम्हारे eyes भी मैंने. So I always suppress this feeling. I have suffocated this need for sex and love and killed it every time. Please help me get out of this crap, because now I'm obsessed with a girl who I refused to talk to when she herself introduced to me. We had a lot of commonalities, but still I did this self-sabotaging move to make this problem sound more weird. I'm tall and easily 9 on 10. Just short on a model, okay, based on compliments, regularly come across. I apparently have social anxiety. Yes, you do have social anxiety, but the problem is this. How old are you? What did you say? Your 2nd year of engineering, that would make you what? 19, 20? If I'm guessing it right. Okay. So I love the way you expressed yourself, albeit a little harsh on yourself. So I would suggest this is not something we should deal with in a live session. We need to talk about it, okay? We need to make sure I'm not on Insta. How can I reach you? यार ये जब भी मेरे को, एक मिनट, तुम्हारा नाम क्या था? एक कौन था ये जिसने पूछा? हाँ, क्लार्क, एक सेकंड, इसका पहले मुझे एड्रेस करने दो. एक तो जो भी मेरे को ऐसा लिखता है ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है. मेरे पास इंस्टा नहीं है. अच्छा, तो तुम लोग के पास स्नैपचैट है, यूट्यूब है, जूम है, फलाना धमका है. डाउनलोड इंस्टा, इवन इफ इट इज टू कनेक्ट विथ मी. नाउ व्हाई डू आई डू इट इंस्टा? बिकॉज फेसबुक, आप लोग आजकल की जनरेशन फेसबुक पे है नहीं, और वो मेरा पर्सनल अकाउंट है. डिस्कॉर्ड मुझे अच्छा लगता नहीं है, क्योंकि मेरे जो सर्वर पे कपल ऑफ टाइम्स रेड हो गया. अभी मैं क्या करूं? मैं तुम्हें अपना व्हाट्सएप नंबर तो नहीं बांट सकती हूँ ना. कितने अभी ईमेल से मैं वॉइस नोट कैसे भेजूं? तो जिनको मुझसे कांटेक्ट करना है, ये एक्सक्यूज मत दो, हमारे पास इंस्टा नहीं है. आप लोग आज की करंट जनरेशन में, अगर से मेरे उम्र में मैं इंस्टा रख सकती हूँ, आप लोग तो रख ही सकते हो. आप लोगों के इतना भी तुम लोग हेल्पलेस नहीं हो, ठीक है? अब हम क्लार्क की पता है जगह सिंगापुर में क्लार्क की कर. एनीवे, क्लार्क तुम्हारा जो रियल नेम ऑब्वियसली नहीं, मुझे भी पता है. तो तुम्हारी जो क्वेरी है, तुम्हारा जो सोशल एंजाइटी है, इसको ठीक करने के लिए, बिकॉज do you see where it's coming from? It's stemming from your childhood. This is called psychodynamic, means we are a total sum of our past. Okay, then you have to bring cognitive behavior therapy into this. So I need to first and foremost send you voice notes on this. I need to send you not one but multiple resources. It's not going to be from fixing your self-worth to fixing your social anxiety to your overthinking to working on complaining less about yourself, to learn to deal. You're also very sensitive
person. If you can't see, I can see that between your text, between the lines that you have told me. So your experiences have been very rather extreme from people. और अनफॉर्चुनेटली एक अच्छी बात थी जो तुमको बोला है ना कि मूवीज देखकर, सच बात यह है कि हमारी जो रियल लाइफ है मूवीज से दूर दूर तक कोई semblance नहीं खाती. मे बी इनिशियली होती होगी पर अदरवाइज नहीं होती. तो जब तुमको बोला गया था कि मूवीज मत देखो, तो वो एक करेक्ट रीजन से बोलते हैं, क्योंकि वो क्या कचरा दिखाते थे, रेप सीन्स दिखाते थे, एग्रेशन दिखाते थे, लड़का सीटी मार रहा है. बट दूसरा एंड तुमको ये जो बोला गया है कि लव मैरिज कचरा है, एंड सारे लोग जो प्यार में पड़ते हैं, यू डिटेस्ट देम एंड दे आर सो, इट्स सो yuck and cringe and whatever that, and it was a crime, not even cringe, you've gone to that extreme. So yes, you have to fix your mindset. There's a lot of work to be done. It's not overnight. The reason I'm telling you, I don't want to address this right now because I want you to, like, a lot of clients do this. Yes, it is free of charge. I don't charge anybody. So you can do a progress journal, which I will teach you how to keep one. You will have to learn how to do journaling first to come to the progress journal part. So we will have to address everything. ये जो तुमने मुझे लिखा है पहले कॉपी पेस्ट करके फिर से भेज देना, because I want to address everything in the middle. There even तुमने ये लिखा ना, तुमको अभी तक ये याद है कि your hands used to shiver. So you are carrying a lot of emotional baggage from your past as a child. So we need to even do perhaps self EMDR. Okay, so this is a lot that I have to get you to do if you really want to fix yourself. Then after we are done with all this work, before you even approach a girl, I need you to first fix yourself. But I need you to also speak to take the course of Aman Shukla, who's a public speaking course. I know every single time I tell you all about this, and I do that. Why? Because अगर से तुम एक इंसान को एलियन की तरह सोचोगे, और सोशल एंजाइटी कुछ लोगों को लड़कियों के साथ होती है, कुछ लोगों को सबके साथ होती है. इसको बिना प्रैक्टिस ठीक नहीं किया जा सकता जब तक यू डोंट पुट योरसेल्फ आउट देयर. अगर से आप बोलोगे मुझे साइकिल चलाना है और साइकिल पे बैठोगे ही नहीं, आप कभी साइकिल चलाना सीखोगे नहीं. आप गिरोगे, आपको लग जाएगी, आपको अच्छा नहीं लगेगा, बट फाइनली आप मैनेज करते हो. वैसे ही जैसे हम कार चलाते हैं, जब हम पढ़ाई करते हैं, कुछ भी हम लाइफ में पहले बार करते हैं, हमेशा तकलीफ होती है. धीरे धीरे उसको एक्सपोजर थेरेपी बोलते हैं, जहाँ पे आप अपने आप को, जिस चीज से आपको डर लगता है उसको आप धीरे धीरे आप अपने आप को उससे एक्सपोज करते हो, एंड आपका डर धीरे धीरे कम होगा. पर उसके लिए आपको पहले तो अपनी एंजाइटी पे वर्क करना है. उसके लिए आपको मुझे टेक्निक सिखाने पड़ेंगे, आपको जर्नलिंग करना होगा, आपको हिप्नोसिस करना पड़ेगा. अगर से आपका बहुत ज्यादा लेट्स से आपको सोशल एंजाइटी हो रही है, देन आपको किसी लेट्स से इफ यू हैव अ फ्रेंड, नॉट दिस गर्ल, बट लेट्स से आपकी कोई सिस्टर है, कोई आपके फैमिली में है जो आपका साथ दे सकते हैं, उनके साथ आप मॉक कॉन्वर्सेशंस कर सकते हो कि व्हाट वुड यू से इफ शी रिप्लाइज. सम ऑफ अस नीड दैट, लाइक जैसे जिनके मॉक इंटरव्यूज होते हैं, क्योंकि सीधा इंटरव्यू में जाना हम लोगों को डर लगता है, तो हम मॉक इंटरव्यूज जैसे करते हैं, इसमें भी आप ये कर सकते हो. सेकेंड चीज जो मैंने जर्नलिंग के टाइम आप लोगों को बताई, वन ऑफ द वेरी difficult things to do but very very helpful thing is to rewrite stories. जैसे आपने कहा, जब मैं उनको देख भी नहीं सकता, उनको देखते ही मुझे कुछ होता है, मेरे गोट लाइक आईज होते हैं, ये आपकी ट्रू स्टोरी हुई, राइट? बट यू रीराइट द स्टोरी विद अ बेटर एंडिंग मेनी टाइम्स. लेट्स से आपने दिन में 5 बार विद द सेम एंडिंग लिखा, विद अ गुड एंडिंग, कि आई स्पोक टू हर, आई सेड हेलो. Start with, let's say I said hello for 1 minute, I smiled at her and I walked past. आप ये 5 बार लिखोगे, ठीक है? Why? Your brain is absorbing what you're writing. Then you rewrite the story again with a different ending. I smiled this time. I even said hello and I said, how was your day? Okay? You write it 5 to 10 times till your brain absorbs the suggestion. Rewriting stories with a better ending. What it does when you actually meet the person, you will start behaving. Your brain will be confused. मुझे डरना है कि मुझे स्माइल करना है.
इनिशियली ऐसा होगा, पर जितना आप ये प्रैक्टिस करोगे बाय रीराइटिंग एंड टेलिंग योरसेल्फ, बिकॉज सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी क्या होती है, वी बिकम व्हाट यू से. इफ यू कीप सेइंग आई कांट डू इट, यू विल नेवर बी एबल टू डू इट. इफ यू कीप सेइंग मेरे आंखें डेड लगती हैं, आप डेड ही लगोगे. आपको एंजाइटी, जिन जिन को नहीं भी हो रही, मैं तुम्हें एंजाइटी दे सकती हूँ. जिन जिन के आईज डेड भी नहीं है, मैं अभी तुमको 2 सेकंड में अगर से कुछ मैंने बोला, तुम्हारी आंखें देखो कितनी गंदी लग रही है यार, इसमें जान ही नहीं है, ऐसे ड्रोपी से थके हारे लग रहे हो यार, कितना गंदा लग रहा है. सब लोग यहाँ जो सोच रहे हैं, सब लोग अपने आईज के बारे में सोचने लग गए. जस्ट इमेजिन मेरा सिर्फ इतना बोलना, एंड यू स्टार्ट थिंकिंग is ma'am, what ma'am is saying, is it correct or not? Am I really, मेरी आंखें ऐसी लग रही. सोचो अगर से कॉन्स्टेंटली तुम अपने आप को ऐसा गलत सजेशन दोगे तो वैसे ही बिहेव करोगे ना. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट यू से टू योरसेल्फ, हाउ यू कंडक्ट योरसेल्फ. एंड यस, आई विल टीच यू द स्माइल ब्रीथिंग technique that will give you a better you even much happier. There is lots to teach you, so I can't do it right now. Connect with me if you feel like, you think I made sense in any point, please connect and we'll yeah. Oh great, okay. No, but how long have you stopped? That's what I want to know. He's made great progress on his porn addiction and masturbation, but after 8 years. So question is कितना टाइम है वो आंसर कर, तब तक मैं दूसरे चैट पर. आई एम डूइंग फाइन वर्क, आई होप यू फाइन. लुकिंग सेक्सी, सिस्टर भी बोलता है, सेक्सी भी सेम लाइन पे बोलते हैं. ओके, हाय मैम, व्हाई आर यू सो क्यूट? आई डोंट नो, आई एम. क्या किया जाए. हाय अर्चित, तुम कहाँ हो आज? नजर नहीं आए लाइव पे. चलो एटलीस्ट इंस्टा पे तो आए. मुझे भूख लगी है एज यूजुअल. तुम लोग से बात करते करते मुझे पता नहीं भूख क्यों लगने लग गई. कंसिडरिंग आई जस्ट 30 days an event, I vowed I would only have 6. Okay, I'm not too sure on this one. Although I'm not a sex therapist, so I should not give gyan on this topic. But I don't necessarily think that masturbation is completely wrong, right? And it's a natural way of whatever. But because ये किसी अभी रिसेंटली किसी क्लाइंट ने मुझे बोला सस्टेन नहीं कर पाते क्योंकि आप भी बोलोगे आई विल डायरेक्टली हैव सेक्स. या विद porn addiction and masturbation relationship में आओगे, आपको erectile dysfunction होगा. You will keep wanting more and more stimulation, which you will not, because real life is different from real life. Porn is different from real life. Ruin your real life sex mind में वो डालते हैं ये videos के through. Please बच्चा लोग, be careful. Stuff. Look at this, 8 years of his precious life. So I'm very proud of you that you managed 30 days, but I would want you to do some bit of research, whether it's healthy to see porn. So I can understand, it's removed from your life because there is no stop. Most of you don't know where the stop button is, right? Then you'll get into all that major crap shit and ruin your relationships. And but I'm not too sure on the masturbation thing. So he's saying 1 minute. Glucose biscuit, anyone? Shakti आएगी ना, glucose चाहिए मेरे को. Okay, and thanks a lot for reading everything I wrote. I was somewhat laughing at myself when you read it. Yeah, I'll tell you why. I'll explain to you. Let me eat it. Sorry, I know it is not good manners to eat and talk. but क्या करूँ, मैं break भी नहीं ले सकती. एक second. So okay, I'll explain what happened. So when you wrote this, there were 2 parts of your brain which were working. The emotional part was heavier because it's expressing. It's please send biscuit to my address. ऐसा नहीं करके मैम आप इतना काम करते हो, हम आपके लिए कुछ भेजते नहीं. आपको भी फ्री सेशंस भी चाहिए, घंटों एक इंसान बैठा भी रहे, पैसा भी चार्ज नहीं करे और आप लोग को ग्लूकोज बिस्किट भी भेजे. ये कहाँ का न्याय है? सॉरी, मेरी आदत है ऐसे क्रिस क्रॉस कॉन्वर्सेशन करने की. जो भी whoever can keep up with my conversation, I am really impressed with you.
क्योंकि it's not easy. Okay, so what has happened is that your mind is delving into the emotional part of it while you're rationalizing. क्या बोलते हैं, क्वालिटी थोड़ी कम हो जाती है हमारी, जो लेट्स से हमारा जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स थोड़ा सोने चला जाता है, while हम इमोशनली एकदम दुख वाले सिनारियोज में, हाय हमारे साथ क्या क्या नहीं हुआ, ठीक है। तो जब हम लिखते हैं ना हमारा, तो वो हम ज्यादा एक्सप्रेस करते हैं कि हमारे, बिकॉज वी ओवर ड्रामेटाइज व्हेन वी आर इमोशनल, वी ओवर ड्रामेटाइज, आवर ब्रेन टेल्स अस है इट वाज नॉट गुड, जो भी हमारे साथ हुआ कितना गलत हुआ, चाहे हमने ही गलत किया होता है, बट हमको ऐसा लगता है। पर जब कोई पढ़ता है और हम वो सेम चीज सुनते हैं, ओके, तो हम उसको, वी स्टेप बैक फ्रॉम द इमोशनल पार्ट, हमारा शांत हो जाता है, हमारा लॉजिकल माइंड सुनने लग जाता है कि मैं क्या बोल रही थी, और फिर तुम्हें वो याद आता है कि ओ अच्छा, इतना बुरा भी नहीं था जितना मैंने लिखा था, या इतना थोड़े बार पार्ट्स मेरे फनी थे, जैसे तुम्हारा गोट हुआ मुझे तो हंसी आई, मुझे खुद हंसी आ रही थी, और जब तुमने लिखा तो भी तुम्हें हंसी नहीं आई होगी क्योंकि तुम एक्चुअली ऐसा सोच रहे थे, बट जब मैंने पढ़ा तो शायद तुम्हें ऐसा लगा होगा कि थोड़ा मैंने एग्जैजरेट तो कर लिया, मैं शायद कोई और फियर्स एनिमल का नाम ले सकता था, पर मैंने गोट ले लिया, चलो कोई बात नहीं। You're taking your time to help some clerk. It's simply God sent gift, not flattering you, but simply pouring my heart out. Thank you so much. I try my level best. I'm not gloating कि I'm the best or I'm the best counselor that the world has seen. Never said that. Never will say that. I'm sure there are many people, but I truly believe that I mean well, and I don't think many people can do what I'm doing. It's not easy, but I love every minute of being with you all and being there for you. above all. अच्छा, अभी YouTube का टाइम आ गया, आई एम सॉरी कि मैंने तुम लोगों को इग्नोर। अच्छा, हसन अली, आप कौन हो? आपने, ओ सॉरी, इसने चैट पे पैसे डाले ताकि मैं उनका क्वेश्चन पढ़ूं। थैंक यू सो मच फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फॉर कंट्रीब्यूटिंग टू द चैनल। जनरली हम लोग फ्री में ही काम करते हैं, हम बिसाइड बालाजी nobody contributes to my channel, so thank you firstly for that, and yes, because you have let me address. It doesn't mean कि जिन्होंने पैसे नहीं डाले कि मैं एड्रेस नहीं करूंगी। I try to reply to each and every one of you, no matter how much time it takes me. Okay, how to exercise brain? Does brain games help? Yes, a lot. Memory games. There are these games. आजकल तुम अगर से सर्च करोगे games for your mental health, वो भी आते हैं। गेम्स फॉर रिलीविंग स्ट्रेस, वो भी आता है। आप पेंटिंग भी कर सकते हो, वो भी आपको हेल्प करता है। सी, एक चीज नहीं करना होता है आपको, अगर से एक्सरसाइज करना है, आप मेंटल हेल्थ के लिए फिजिकल एक्सरसाइज करोगे वो भी अच्छा है, आप गेम्स खेलोगे वो भी अच्छा है। जैसे आप जब आजकल तो नाम ही गेम्स के ऐसे हो गए, मेंटल स्ट्रेस हेल्थ, व्हाटएवर, मेंटल हेल्थ के लिए गेम, स्ट्रेस बस्टर गेम्स, भगवान ही जाने। तो ऐसे गेम्स मेरे भी इस पे है, फोन पे या आईपैड पे। व्हाई? बिकॉज मैं जो काम करती हूँ, आई बर्न आउट अ लॉट, आई नीड अ गेम वेयर आई एम नॉट थिंकिंग, वेयर आई एम जस्ट लाइक, आई लव सॉलिटेयर, आई लव, ये क्या किंग समथिंग है, उसमें एड्स ही नहीं, ऑल्दो सिर्फ 5 फिर वेट करना पड़ता है लाइव्स के लिए, क्या किंग समथिंग है। आई लव दैट गेम। एक्चुअली आईपैड इधर ही है, खाते खाते देखती हूँ। मेरे आईपैड के भी तुम्हें दर्शन दे सकती हूँ। चलो, तो आईपैड फोन गंदा है, स्क्रीन थोड़ा पोछ लेते हो दिखाने के पहले। रियलाइज नहीं होता है ना, लाइट इधर है तो देखा मैंने कि कितना गंदा है। हाँ, रॉयल मैच, मुझे ये गेम अच्छा लगता है। फिर ये ब्लू कलर का जो सॉलिटेयर वाला में, ये गेम मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत मजा आता है जब इसमें मेरे बहुत सारे पॉइंट्स कलेक्ट होते हैं, ये वाला गेम। ओके, अभी कितने पॉइंट्स है? 36,000 समथिंग है, ठीक है। आई लव दिस गेम, लाइक वन ऑफ माई फेवरेट। इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगता, खेल के भी दिखा सकते हैं, बट ठीक है, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा ना लाइव सेशन के लिए, ठीक है। और क्या अच्छा, हाँ, मुझे ये वाला गेम, जैसे ये इसको बोलते हैं ब्लॉक पजल गेम, ये दिस इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट गेम्स। कैसे स्क्रीन को दिखाते, ये ब्लॉक पजल, ये दिख रहा है, ये वाला, ये तो इसका अच्छा है, इसका एड जल्दी खत्म हो जाता है। सो जैसे कि अभी इसमें दिमाग नहीं लड़ाना पड़ा ना, सी, सो दिस इज वेरी गुड फॉर योर ब्रेन। एज वी एज, हमारा ब्रेन भी एज हो रहा होता है,
तो टू कीप इट अलाइव, टू कीप इट वर्किंग वेल, यू नीड टू प्ले दीज काइंड। मैंने सुना है सुडोको बहुत अच्छा होता है, पर मेरा नंबर ब्रेन नहीं है, तो सुडोको दूर दूर तक मैं नहीं कर सकती। आप वर्ड गेम्स भी खेल सकते हो, बहुत सारे लोग वर्डल खेलते हैं, वो भी अच्छा होता है, स्क्रैबल खेलते हैं, वो भी अच्छा होता है। तो जो भी आपको अच्छा लगे। मुझे पता है कौन सा गेम, एक टाइम पे मुझे वो सबवे सफर्स बहुत अच्छा लगता था, ठीक है, बट मैंने अभी रिसेंटली जब सबवे सफर खेला, मेरी एंग्जाइटी बढ़ गई। एक सेकंड, एंग्जाइटी के साथ पिल्लो भी गिर गया, एक सेकंड, ओके, एक मिनट। तो मैंने वो जब सबवे सफर्स खेला, मुझे लगा कि वो जो होता है ना, टू अवॉइड द ट्रेन, ऐसे कट 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 कट, मुझे लगा इट्स लाइक टू मच फॉर माय, like I wanted to have a chilled game. I didn't want something to get me hyper. So yes, you have a very good question. All of you all, please work on your brain वाला games. Try to इस सारा टाइम फालतू इंस्टा पे मत, रील्स पे मत अटके रहो, कुछ अपने लाइफ के साथ अच्छा करो, ठीक है। और बाय द वे मैं अभी जो सीरीज देख रही हूँ, क्या, हाउ आई रोट माई मर्डर, क्या मैं कुछ देख रही हूँ, मैं भूल गई मैं क्या कर रही हूँ, बट आई एम रियली एंजॉइंग दैट। हाँ, क्या, हाउ टू गेट अवे विथ मर्डर। सो आई लाइक एनीथिंग विच इज लॉ रिलेटेड, क्राइम, सस्पेंस, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने ब्लैकलिस्ट देखी है, फिर मुझे क्या, इंडिया में अभी मैंने इंडियन कुछ तो भी देखा था, राजकुमार राव वाली, कौन सी थी वो वाली, वो भी बहुत अच्छी थी, पर मेरे को याद नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी ढूंढना पड़ेगा। व्हाट आई ऑलरेडी, ये क्यों नहीं दिखा था व्हाट आई ऑलरेडी वॉच्ड, आई विश इट वुड शो मी दैट। मैंने स्कूप नहीं देखी बिकॉज आई वांटेड ऑल द एपिसोड्स डाउनलोड करने के बाद। आई कांट रिमेम्बर। राजकुमार राव वाला कौन सा, बड़ा फनी था, आई जस्ट लव्ड इट, इट वाज वेरी फनी। अच्छा एक सेकंड, पानी तो जग कहाँ चला गया। ओके हाँ, तो हम लोग कहाँ थे। सो हसन, आई होप आई हैव रिप्लाइड योर क्वेरी। मोनिका ओ माय डार्लिंग, नहीं, अच्छा मोनिका ओ माय डार्लिंग, नहीं 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 नहीं, क्या, यस दिस टाइप ऑफ योर मूड मैम आई लव द मोस्ट, थैंक यू। ये जो मैं अभी बचकानों में हरकत कर, तो मेरे से हम सब में एक छोटा बच्चा कहीं ना कहीं छुपा होता है, मेरे में कुछ कुछ ज्यादा ही बच्चे हैं, तो पता नहीं। सो या, आई बिलीव इन गिविंग अप, आई बिलीव इन गिविंग, I come from a khandan that believes in giving. What can I give you when I make it in life? You seem to be a very materialistic, satisfied person, but I'm poor. Money is everything for me at this point. Pehle to, I've been doing this for over 3.5 years, so it's not money related. It's not that I can see. It's not that we don't need money. We always need money. So, but since I have a source of income from my husband, so मैंने लास्ट टाइम कहा था, मैंने उन्हें कहा आप पैसा कमाओ, मैं पुण्य कमाती हूँ, तो बेटा अगर से आपके पास पैसे नहीं है, you don't need to give me money. What I would like you to do is take care of yourself, one, and in any way possible, even if it is one person, not materialistically. We can help people in lot of ways. आज मैं आप लोगों की materialistic help नहीं कर रही हूँ, right? आप भी किसी को किसी चीज के लिए मदद कर सकते हो, किसी को कभी खाना खिला दो, किसी एक गरीब को एक दिन पूरे साल में भले, but just make a difference. I will tell you what I did. Okay, so I go to these clubs, most of you all know. So I have this, like my child tells me, मॉम ये क्या है, ये इंस्टा काउंसलिंग का है कि इंस्टा तुम्हारे लाइफ का, you know, like your clubbing and all. I said, you know what, let them see who I am. We don't need to be one thing, we can be multiple things. So day before yesterday I went to this club, and there were these people I don't know, and I've gone with a group of 30 friends, that's different. I'm saying when I went to the toilet, there were some people, some girls, obviously female toilet tha, and वो इतना चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे थे, and टिश्यू यहाँ फेंका, you know, mess create किया for the person who's cleaning the toilet. Now I'm very particular, even in my own toilet in the house, I try never to leave a stained toilet. I never leave the sink not wiped. Okay, I try my level best कि अगर से मैंने अभी भी, अगर से तुम मेरे I wish I could show, अब मैं तैयार होते वक्त हम रूम में मेस तो करते हैं, बट अगर से मैं कुछ कर रही हूँ, I keep it back. Everything when I go back to my room will be sorted, except for जो मेड का काम होता है वो कर लेते. जब मैं ये रेस्टरूम में थी ना,
मैंने वो फेस देखा, वो लड़की का जो वहां साफ सफाई करती है, द जैनिटर ऑफ सॉर्ट्स, एंड आई कुड सी कि उसके पास पैसा नहीं है और उसके पास एजुकेशन नहीं है, पर ये जो लड़कियां हैं इनके पास तो एजुकेशन है ना। ये लोग तो अच्छे खानदान से आई है, पढ़ाई है, आई मीन लिखाई किया है, पैसा वैसा सब कुछ है, राइट। तो तुमको कैसे नहीं मालूम है कि कैसे बिहेव करना है, और कैसे एक बाथरूम को छोड़ना है, और कैसे एक जो लड़की साफ करने वाली है आपके जाने के बाद, उसको भी तो घिन आती होगी ना, तुम्हारा तुम्हारा क्लीन आफ्टर यू, व्हेन यू योरसेल्फ डोंट लाइक टू क्लीन आफ्टर योरसेल्फ जस्ट बिकॉज शी इज बीइंग पेड। सो आई फील कि we all need to be thoughtful a little bit when you go to using public restrooms and toilets. You can do your own bit. You can leave it a little clean for the next person and also for the person who's going to clean it. Just because they're getting paid, it doesn't mean we need to leave it a mess. क्या सोच, I mean इंडियन क्लब था, मोस्टली इंडियंस ही थे वहां पे, तो मुझे लगा करके यार बेचारी इतना काम कर रही है, लोग ऐसे मैस में, तो आई डिड टिप हर, मे बी आई डिडंट टिप हर लाइक लाखों करोड़ों में, बट शी स्माइल्ड एंड आई सेड थैंक यू सो मच, you know, I said thank you for doing this. So you don't need to give me anything. Try to make a difference in your own life around your circle. That's all I'm asking. अब हाँ, अब जैसे हनी सिंह का कॉन्सर्ट तुम लोगों ने बोला था मैंने क्या किया, तो हनी सिंह का कॉन्सर्ट जैसे इंस्टा पे देखा, तो मैंने देखा कि वहां पे सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे, ठीक है, और किसी ने उनको कैमरा दिया फोटो लेने के लिए, तो वो वहां खड़े थे, उन्होंने बहुत स्वीटली पहले एक ग्रुप का लिया, फिर दूसरे ग्रुप का लिया, उन लोगों ने थैंक यू नहीं बोला उसको, तो मैंने उसको टैप करके बोला ऐसा थैंक यू सो मच, ही स्माइल्ड एट मी, सेज वेलकम मैम, ऑल्दो मैंने नहीं लिया, मैंने अपना फोटो नहीं लिया, वो इंडियंस ने जो ग्रुप में आए थे उन्होंने उनसे कहा। तो ये जो छोटी छोटी प्लीज थैंक यू वाली जो बातें होती है ना, ये आप लोगों को अगर से आप लोग ये बात समझ गए ना, मेरे हिसाब से ऐसा इंसान अच्छा इंसान होता है जो दूसरे इंसान के बारे में सोचता है। आपको जरूरी नहीं किसी के लाइफ में इम्पैक्ट पैसे से ही करो, मैंने शायद उसको टिप दिया बट मैं थॉटफुल भी थी, मैंने उसको थैंक यू भी बोला, तो आई थिंक इट मेड हर इवनिंग ऑल्सो कि एटलीस्ट आई एम नॉट जस्ट बीइंग लाइक not treated with respect. So learn to treat your juniors, your colleagues, or तुम्हारा staff, तुम्हारा driver respect से, वो एक अच्छी बात होती है, ठीक है। So this is what you can do for me. Try to be making a difference in the smallest way that you can in anyone's life, even once a month, once in 6 months, but do that, ठीक है। Okay, next question. कोई तो भी सो के मेरा पॉडकास्ट देख रहा है, ओके व्हाटएवर दिस सेशन देख रहा है, मैंने देख लिया था तुम्हारे कैमरे में, और तो अच्छा हो गया तुम यूट्यूब पे नहीं आए हो, वाओ चैट है, मैं क्या करूं। हाँ, हनी सिंह का कॉन्सर्ट, मुझे समझ में आ रहा है कि हनी सिंह का जो टैलेंट था और वो जो अब है, उसमें जमीन आसमान का अंतर मुझे नजर आया। मैं बी प्राक के कॉन्सर्ट में गई, आई थिंक जिन जिन को चांस मिले बी प्राक का कॉन्सर्ट जरूर देखना। और बाय द वे मैं अरिजीत नवंबर में आ रहे हैं, उनके कॉन्सर्ट के लिए जा रही हूँ। बाय द कपिल आ रहे हैं, कपिल शो आई थिंक वीकेंड पे आ रहे हैं, मुझे लेट रियलाइज हुआ है, तो मैंने अभी जो भी टिकट मिली खरीद ली। आई वांटेड टू सिट लिटिल बिट इन फ्रंट, पर वो वाला नहीं मिला, तो चलो कोई बात नहीं। आई वांटेड टू सी कि लाइव में जो वो आई मीन सॉरी जो वो टीवी पे जैसे दिखते हैं, अगर से लाइव, मैंने सुना है कि वो बोरिंग है, ऐसे मेरे फ्रेंड्स ने, फ्रेंड ऑफ फ्रेंड ने बोला है, पर आई डोंट माइंड गोइंग एंड सीइंग इट। आई वांट टू सी फॉर माय सेल्फ। आई नेवर बिलीव इन रिव्यूज, आई नेवर लिसन टू एनीवन्स नेगेटिव थिंग। आई प्रिपेयर माय सेल्फ कि नहीं अच्छा तो कोई बात नहीं, पर मैं खुद देख के डिसाइड करूंगी मुझे कैसा लगा, ठीक है। सो दैट इज माय नेक्स्ट वीकेंड का प्लान। और उसके बाद मैं क्या करने वाली, कुछ तो भी था, भूल गई। हाँ, गणेश चतुर्थी चल रही है, एवरीबडी हैप्पी गणेश चतुर्थी, जो भी बिलीव करते हैं, जिनके घर गणेश जी आए हैं, और आई होप यू हैव अ ब्यूटीफुल फेस्टिव सीजन। आई स्टिल रिमेम्बर बॉम्बे में जो वो म्यूजिक बजता था, ठीक है, वो अलग बात है कि इतना रात को बजता था तो नींद खुल जाती थी, बट क्या तो मजा आता था बस वो देखना, जो वो विसर्जन के टाइम जो डांस करते हैं, द जॉय दैट
वो जो फ्रीडम में वो लोग डांस करते हैं, वो जो मस्त मगन, आपको बॉलीवुड सॉन्ग्स भी बजते हैं, चलो कोई बात नहीं, आई डोंट थिंक भगवान केयर करते हैं कैसा म्यूजिक है, इफ इंसान खुश है डजंट रियली मैटर. So I just love that. I miss that. So I'm going to a friend's house on Thursday to do darshan. That would be really good. Okay, next. Hello Divyesh and then ma'am. अगले साल के इलेक्शन में किसको वोट दोगे? आज तक लाइफ में वोट नहीं किया है तो अगले साल कौन वोट करेगा? मैं NRI हूँ तो I do have an Indian passport. Am I allowed to vote? I don't. Never voted in my life. Don't plan to do so. अगर से किसी को कभी मैं वोट करूंगी तो खुद को वोट करूंगी, तो मैं इलेक्शंस में खड़े रहूंगी. आई थिंक आई वुड मेक अ वेरी गुड लीडर, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे डर लगता है मुझे शूट कर लेंगे कोई भी. तो नेक्स्ट क्या है? ओके, श्वेता गंगवर के साथ पॉडकास्ट कब कर रहे हो? मैं यही सोच रही हूँ आज साला किसी ने ये क्वेश्चन पूछा क्यों नहीं, क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं है कोई भी स्ट्रीम में कि ये क्वेश्चन मुझसे पूछा नहीं गया है. तो दिवेश जी, जिसको मेरा पॉडकास्ट श्वेता के साथ देखना है, आप लोग जाके उसको पूछेंगे, मुझे पूछना बंद करो, मैंने ना नहीं कहा है. अगेन फॉर द आई डोंट नो हाउ मेनी, कोई काउंट रखेगा मैंने कितने बार ये बात कही है? मैं फिर से और एक बार कह रही हूँ, मैं उनको कांटेक्ट नहीं करूंगी पॉडकास्ट के लिए क्योंकि वो बिजी हैं और उन्होंने मेरा लास्ट मैसेज सीन नहीं किया है. और अगर से कोई मैं आप लोगों को सिखाती हूँ तो यस, आई एम नॉट सेइंग दैट यू नो वो डेलिबरेटली कर रहे हैं, शायद वो बहुत बिजी है, उनका कोर्स आया है, उनका बुक आया था, और शायद लाइक ही सेड वंस अपॉन अ टाइम कि ही इज नॉट गुड एट saying no for a podcast to people. If you remember, जब वो कंट्रोवर्सी हुई थी तब उन्होंने एक बार ये बात कही थी, तो उसके बाद मैंने उन्होंने होली के टाइम हाँ बोला था और फिर उसके बाद उन्होंने नहीं लिखा है मुझे. So I will not ask him. You know, I'm very honest and straightforward. I really admire Shweta and I love our podcast together. I'm sure you people want to see us together. And if he ever asks me ever again, I will always say it will be a yes on my behalf. But yes, I will not ask him. I would like to give people their privacy. I like to believe that they are adult enough to contact me when they are ready, and always read into people's silences. Silence also means a no. Okay? So don't force people. And I'm completely okay. तुम लोग को फिलहाल मुझे इधर देखना है, उनको उनके चैनल पे देखना है. हम दोनों साथ कब होंगे वो मुझे नहीं पता. मैंने लास्ट स्ट्रीम में भी कहा था, जिनको उनको लिखना है प्लीज लिखे कि मुझे कांटेक्ट करके बोले. जब भी वो बोलेंगे मैं टाइप कर, I'll try my level best to adjust according to his timing. ठीक है. Mansi, hi ma'am, how are you? I'm good. Good to see you. I have told you many times, ma'am, that you are a wonderful human being, but here I want to tell everyone how precious she is, who takes out her time to guide us and help us live a happy, healthy and sane life. Thank you, Alishma. Thank you, Bacha. Thank you so much. Okay, next RDX in the house. Oh, Iron Man sir. Oh, आप कहाँ हैं भाई साहब? This is by the way Kshitij, जिनके साथ हम और पॉडकास्ट करने वाले थे. I think so. If that is his, because I remember Iron Man style उसी का था ना. तो क्षितिज साहब, पॉडकास्ट के लिए आप जब भी रेडी हो आप भी मुझे बता देना. तुम्हें तो पता है तुम्हारी और मेरी वाइफ बहुत अच्छी है, so hopefully one day. I have no clue what is Shweta's attack mode. I have no clue. I thought he's always on attack mode. I'm always telling you, काम करो, काम करो. If someone wants to actually tell me what it is about, would be great, because honestly speaking, टाइम ही नहीं मिलता कुछ भी देखने का YouTube पे या कुछ. मैंने बीच में उसका और वेदांत का देखा था. I really like Vedant a lot. So और तुमको पता है हम दोनों ने 2 बार पॉडकास्ट किया, एक बार उनके चैनल पे, एक बार मेरे चैनल पे. तो मैंने वहां उन दोनों को बात करते देखा, बस उतना ही देखा, वो भी आई थिंक 5 मिनट कुछ देखा होगा. तो मुझे नहीं पता ये अटैक मोड क्या है. क्या है? नो नो, आई एम सॉरी बट प्लीज लेट मी नो. ठीक है. मैम योर थॉट्स. अच्छा वो बोलते, इज इट वियर्ड दैट थिंकिंग नथिंग इज गोइंग wrong in our life and even knowing that what we are doing will not help and things will get worse and just keep ignoring the bads, is it denial or what spirit? But is it weird that thinking that nothing is going to help?
तो एक जगह बोल रहे हो nothing is going wrong, then what are you thinking? Let me try to reframe this. So you're saying कि लाइफ में अगर से थिंग्स वर्स जा रही है और आप बोल रहे हो करके आप इग्नोर कर रहे हो उसका रॉन्ग या बैड, इज इट डिनायल or is it acceptance? I'm guessing ki, yeah, so it's a bit of both, right? Sometimes ignorance is bliss, so we ignore certain things. Why? Because it gives us sanity. Two, it is like let's say, I'm guessing it means what you've written ki fuck off, doesn't matter, देखा जाएगा जो होगा, तो वो भी एक acceptance level हो गई ना. तो हम एक लेवल पे हमारा ब्रेन सर्वाइवल इंस्टिंक्ट किक्स इन जब हमारे लाइफ में बहुत कुछ बुरा होता है तो हम, हाँ सॉरी कोई बात करना चाहता है, म्यूट योरसेल्फ इफ नॉट, नहीं तो रेज योर हैंड इफ यू वांट. ओके, सो ऐसा हो सकता है कि जब हमारे लाइफ में कुछ चीजें हम चेंज नहीं कर सकते, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, राइट, और हम अगर से सर्टेन थिंग्स नहीं चेंज कर सकते, दैट इज लाइक, आई थिंक it's so wonderful if we can come to terms with things we cannot change and accept it and grow with it and say कि ठीक है नहीं कर सकते, let me be peace with it, let me be peaceful within, let me come to terms with it. What else would you want? That would be so wonderful. And yes, sometimes we do try to protect ourselves to come to terms with certain things because we know it is going to hurt, so we go into denial, right? And many times जैसे आपने देखा है कुछ लोग जब उनको एक तरफा प्यार होता है वो भी तो कहीं ना कहीं डिनाइल में फंसे पड़े रहते हैं ना. वो इंसान ने आपको 5 बार ना बोला है, 20 बार ना बोला है, फिर भी आप वो होप पे जिंदा रहते हो. एक तो होपफुल हो इसलिए, दूसरा यू आर इन डिनाइल, यू डोंट वांट टू कम टू टर्म्स विद कि most likely it's not going to work out and you're perhaps wasting your time, but बिकॉज वी उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम इंसान भी बहुत होपफुल होते हैं, हम बोलते चलो कोई बात नहीं थोड़ा और रुकते हैं. अब तब 4 दिन 4 महीना, और इफ यू नो आर्यन जो मेरे साथ आर्यन हमेशा बात करते 4 साल उन्होंने वेट किया, तो वो डिनाइल में जी रहे थे. फाइनली वो जब इट हिट हिम कि ओ डैम इट्स नॉट गोना वर्क, then he finally moved on. So it takes time. So it's a mix of both. It is, always remember, many states can coexist. It answers not necessarily this or that. YouTube live बंद कर दिया क्या? ए मैं लाइव हो कि नहीं? हेलो, ये मेरे को डरा क्यों रहा है? सारे या अरुण या कार्तिक या अद्वितीय अर्नव, somebody tell me Zoom पे, can you all see me on YouTube? ये बोल रहे योर लाइव, हाँ इट्स लाइव. तुम लोग फालतू में मेरे को टेंशन मत दो ना यार. इंसान जब बात कर रहा है तो मुझे फ्लो में मुझे याद नहीं रहता क्या देखना है मुझे. ओके, चेस, हाँ करेक्ट, चेस खेलो, पेंटिंग करो, ट्रैकिंग करो, बर्ड वॉचिंग करो, सुडोको खेलो, फ्लूट बजाना, एवरीथिंग इज गुड फॉर द ब्रेन. सारा टाइम जब भी तुम ब्रेक लेते हो तुम्हारे को स्ट्रेस से तुम सी, ऐसा भी नहीं करके बिल्कुल जीरो स्ट्रेस. तो हमारी मोस्ट ऑफ द टाइम ओनली फेमस, क्या anonymously famous. Hi. If you have a question, right, I'm just replying. Yes, there are many activities, everything that makes you feel good about yourself. Exercise, walking, talking to someone, watching a comedy, dancing, music. So many things which are good for your brain. There's not like one specific thing that you need to do. You can do multiple things. But मैं तो तुम्हें मेरा iPad ऐसे दिखा रहे थे क्योंकि games की बात हो रही थी. ठीक है, thank you Arnav for adding value. Sorry, मैं भी खेलता था but quit after a while. Okay, Wordle खेलो. Yes, exactly, Wordle. I've seen a lot of people. Law related movie suggestion, The Trial of Chicago 7. हाँ मैंने देखी है, I think I've seen this. Yeah, Guns and Gulab. I really enjoyed it. Please watch it unless it is not age appropriate. Please, बहुत important है age appropriate देखना. तुम्हारा brain developed नहीं है to take in information and content which you are not ready for. Wait जब तक तुम बड़े होते हो, तो ये सब तो तभी देखना ही है. Don't be in a rush. Okay, so watch age appropriate stuff. Where am I based right now? I'm based in Dubai for the last 1 year. I was in Jakarta before that, as people know. किसने अर्नव को किसने बोला one more? The cleanliness and presentation is hard to find in boys. I've been called gay for keeping things at nonsense. My husband is
straight. And I don't know anyone more particular about cleanliness. Okay, when like if you see his room and my room, considering I consider myself so. Of course, when I compare him and me, oh my God, I'm a mess. So please, it's nothing to do with gay or straight. It's just a human quality. It's good to be clean, but it's not completely OCD भी नहीं होना चाहिए कि सारा टाइम तुम साफ सफाई कर रहे हो और you don't know how to have fun and you cannot deal with any kind of crap lying around or mess or whatever, right? So it's very important. Okay. Saurabh Bhagat, ma'am is so beautiful. Thank you so much. Thank you for your compliment. Okay. I am class 12 student. मैं एक लड़की पसंद उससे कैसे बताऊं? कैसे बताऊं कि तुझ सारे गा लेगा, मैं गाना गाने लग जाऊंगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, सब लोग भाग जाएंगे मेरे गाने गाने से। सारे नेक्स्ट टाइम हम लोग खा लेंगे। गाना तुम गाना आज नहीं गाएंगे क्योंकि पहले इतने सारे क्वेश्चन 2 हफ्ते के बाद आए। सारे बहुत अच्छा गाना गाते हैं, तो हमारे सेशन में कभी कभी वो गाना गा लेते हैं। बहुत टाइम से वो नहीं आया है, क्या नाम है, ऋषि, वो बहुत अच्छा शायरी भी बोलते थे। ओके, नेक्स्ट आपको अगर से लड़की पसंद है, पहले तो मेरा वो वाला वीडियो देखो, the signs that girls give if they are into you, very important, so that आपको पसंद है जरूरी नहीं करके वो आपको रिटर्न में पसंद कर रही है। फिर अपने सेल्फ वर्थ पे वर्क करो, अपने ओवर थिंकिंग पे वर्क करो थ्रू माय रिसोर्सेज, फिर जाके अप्रोच करना। क्योंकि ऐसा ना हो जाए आप दिल फेक आशिक की तरह उदास होके देवदास ना बन जाओ और फिर बोलोगे मेरी जिंदगी झंड हो गई, उसने ना कहा। तो हम उधर पहुंचने के पहले हम पहले सारे स्टेप्स लेंगे to work on ourselves so that we don't disintegrate emotionally. We need to become emotionally strong, then get into romantic affairs, because एक तो वो पढ़ाई से भी आपका ध्यान हटाएंगे। Be very careful. Heartaches are not easy, especially if it's your first time. Be very very careful. Most of the time जिनका first time love होता है वो handle नहीं कर पाते हैं जब कोई लड़की उनको ना कहती है। So be careful, okay? And if any other आजकल I think I should start writing in my profile dating coach, even if I don't have certification. I seem to be one right now, right? Doing a good job. Kshitij, I'm not taking Kshitij and Sarad, I'm not taking your your place. I think having a girl's perspective is a nice thing also. Okay, what's next? Attack Mode is a course by Shwetab. I also bought that course. It is the best course ever. It is immensely powerful weapon. We just अच्छा ठीक है तो ले लो, अगर से जिनके पास पैसे हैं खरीदो कोर्स। Okay, it's suitable for every human being who's working. Okay, Arnav and Samir private chat कर लेना। Okay, hey ma'am, I'm a student. I need your help. I'm deep problem. I need your help. I'm mentally not good and unfit. I tried everything but didn't work. My exams will come. I have to be ready, so please help. कौन है? डेविल सलो। एक तो डेविल साहब आप ऐसा नाम रखोगे तो एक तो डेविल जैसे हरकतें करोगे, ठीक है। जिनको नहीं पता अपना नेम प्लीज, अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड इम्पैक्ट ऑन आवर ब्रेन। एक तो कुछ अच्छा सा नाम चूज करो। सेकंड, मुझे डीएम करो, तुमको स्टडी रिसोर्सेज देंगे और मेंटली गुड नहीं हो उसके लिए भी रिसोर्सेज देंगे। बट अगर से आपका एग्जाम्स बहुत जल्द है और तुमको किसी हाल में ऐसा लग रहा है करके अचानक मिरेकल होने वाला है, अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कोई मिरेकल क्योर नहीं है, बट यस वी कैन वर्क ऑन इट, इट्स नेवर टू लेट। एंड दिस इज चरणजीत, हाय, हाउ आर यू? सो प्लीज कॉन्टैक्ट मी। अरे इजू, आमी, रचना मैम, श्वेता भाई के साथ पॉडकास्ट कीजिए। मैंने ना नहीं कहा, अभी पूरा मैंने ज्ञान फैला था। कोई तो भी रिमाइंड करके इसको बता दो मैंने क्या बोला था। मैं करने को रेडी हूँ, उसको बोलो मेरे को कांटेक्ट करे। इन शॉर्ट, ठीक है। किसी ने मुझे इंस्टा पे कैन यू गिव मी सजेशंस कि आई हैव ADHD एंड आई एम अनएबल टू फोकस ऑन माय वर्क एज वेल स्टडीज। आई एम डिस्ट्रैक्टेड वेरी इजीली इफ आई स्टडी इवन 10 minutes. I need 1 hour break after that. Okay, first and foremost, I am not a psychiatrist. Second of all, neither are you. Stop diagnosing yourself. For all you know, you just don't like your studies and you don't have ADHD. Okay, distraction इसलिए हो रही है क्योंकि तुमने ऐसी चीजें पढ़ने की कोशिश की है जो तुम्हारे बैंडविड्थ में नहीं हो रही है। और अभी तुमने तो अपने आप को बोल ही दिया है
कि मैं 10 मिनट पढ़ूंगा और मैं 1 घंटे का ब्रेक लूंगा। एक्सक्यूज मी, 1 घंटे का ब्रेक अगर से आप ले रहे हो, आप उसको रिड्यूस भी कर सकते हो अलार्म क्लॉक मेथड यूज करके। देखो, पढ़ाई तुम्हें करनी है, तुमको 1 घंटा ब्रेक लेना है या 4 घंटा ब्रेक, ठीक है, तो वो तुम्हारी मर्जी। पर अगर से आप एक्सक्यूजेस बनाओगे, फॉर ऑल यू नो यू डोंट हैव ADHD, इफ यू हैव, वो तो हम में से बहुत लोग हैं। अभी तुम देखो, मैं आंसर करते करते डिस्ट्रैक्ट नहीं हो जाता हूँ, तो ह्यूमन टेंडेंसी है। जैसे मैंने कहा था, जब श्वेताब ने बोला उसको ADHD है, आधी पब्लिक को तो ADHD तभी हो गया था, पर उसमें से मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं है। तो ऐसा हो सकता है, आप जो पढ़ रहे हो, आप लास्ट मिनट पढ़ रहे हो, आपका पोर्शन बहुत है, या आपको सब्जेक्ट ही अच्छा नहीं लगता। जैसे मुझे मैथ्स और साइंस से कुछ लगाव नहीं था, तो ऑब्वियसली ध्यान भटकता है, तो हम वी रन अवे फ्रॉम आवर गोल, थिंकिंग करके गोल भी हमारे पीछे पीछे पाएगा और कंप्लीट हो जाएगा, नहीं होगा। So first and foremost, connect with me. Use the study resources that I'm giving you. Start taking multivitamins, supplements, which I'll tell you. Start using the procrastination resource, which I will give you. You will have to bring discipline. Even if you have ADHD, you don't have ADHD, that should be decided by a psychiatrist. So do seek help first. Try all this. Second, start being a little strict with yourself. Stop giving excuses, because finally पढ़ाई तो करनी है, whether आपको, unless you choose a career which doesn't require too much studies, then that's different. You will have to. Okay. So this one also has study problem. This one also has study problem. You both have different study problems, right? I don't know, unless you both are the same people. Although he has not written ADHD, इसके भी exams आ रहे हैं, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आपको different reasons से कर रहे हो. I will give you all, try to understand your learning styles. Try to understand what you're doing wrong. Try to fix your schedule. Try to write and study. उससे ध्यान कम भटकता है. अपने आप को जब तक देखो, 4 दिन मेरी बात सुनोगे, 4 दिन श्वेताब का कोर्स देखोगे, ठीक है, उसके बाद क्या होगा? मोटिवेशन बाहर से नहीं आती, मोटिवेशन हमारे अंदर से आती है, हमें लाइफ में क्या करना है। तुम एक्सक्यूजेस तो कितने बार, 1 बार कोर्स देखा, 2 बार कोर्स देखा, 2 बार मुझे देखा, 10 बार मेरे ऑडियोस, then what? Who's going to rescue you? No one. You have to help yourself. You have to make sure that you put the effort every single day. There is no other way around this. Unless you choose कि ठीक है, मुझे स्टडी रिलेटेड करियर नहीं करना, वो भी ठीक है अगर से आपको करना, but be honest with yourself. Stop making excuses. किसी से भी झूठ बोलो, अपने आप से झूठ मत बोलो, ठीक है? And DM me. I'll give you the resources. I'm good, Manav. How are you? Okay. Also, is masturbation good for health? As much as I have read, I'm not a sex therapist, so as I told you, I need to do a podcast. I'm so bad at this, man. Sometimes I wish I had a secretary to do my work. I don't make money, so I can't like hire anybody to like contact people and set my appointments and write these cold emails to this one. Okay, so yeah, so as much as I have read, it's not completely bad, but it's not completely good if you're addicted to it. So it's a normal human tendency, so it's fine as long as you don't over it. That's my take on it. But maybe I should do more research on it and come back, because looks like you don't ask these questions to other guys. Are there any men counselors who reply to this question? Are there any sex therapists in India who do live YouTube sessions? I wonder. I wish more people would do this. Like try to guide you all. You know, फालतू guidance तो बथेरे हैं इंस्टा पे, नहीं? हाँ, क्या ड्रेस पहनना चाहिए, क्या मेकअप लगाना चाहिए, मेकअप ट्यूटोरियल्स बथेरे होते हैं, हाँ? बाल के ट्यूटोरियल्स बथेरे होते हैं, वेट लॉस के होते हैं। हमारे मेंटल हेल्थ और हमारे बात बहुत कम ना, I wish वो करते। Anyway, okay. आइए बालाजी, आपका स्वागत। Did I rant? Yeah, I did a bit of ranting already without you, because last time I said that you didn't want your name and rank to be associated. It makes you more poetic because you imagine or watch something
Yeah, but isn't it natural? As long as you don't imagine, like I said, porn addiction is really bad. And if you don't imagine all the incest, bestiality, cuckolding, or threesome, sixsome, भगवान जाने कितने सम होते हैं, but जो भी है, देखो उधर जाओगे ना, उधर से वापस आना बहुत difficult है, क्योंकि but it's not really that bad if you are keeping it normal. If you're not, then you need to work on yourself. Okay. One more question. Okay. Puchi. I have a problem of extremism, like really bad. I am doing something and don't want anything else. And like for not even for a second. Anything extreme is not good. Too much of anything is bad. But having said that, one, you have not, Prashant, you have not even told me what are you on extreme on. I don't know what you mean by ki I don't want anything else. Unless you're stalking people and you're behaving like a miscreant or someone not good, then it's bad. Then you're not. But let's say आपका career related है, right? आपको डॉक्टर बनना है, तो obviously इतना पढ़ाई करना पड़ेगा. But make sure कि आप अपना mental health का ध्यान रखें, आपका burnout avoid करने के लिए ज़्यादा extreme ना करो. बट अगर से आप गलत चीजों में एक्सट्रीम कर रहे हो, लेट्स से आपको 6 पैक आप बनाने, ठीक है, आप रोज 4-6 घंटे एक्सरसाइज करते हो, व्हिच आई एम गेसिंग इज नॉट हेल्दी, राइट? एंड आप कंसिस्टेंटली करते जाते हो और फिर आप स्टेरॉइड्स भी लेते हो और फिर उस एक्सट्रीम पे जाना जहां आपके हेल्थ के लिए हानिकारक है. सी आपको डिसाइड करना पड़ेगा आप. और अगर से आपको परफेक्शनिज्म का भूत सवार है, लेट्स से कि आपका एक बाल भी टस से मस नहीं हो रहा, जैसे मेरे तो बिखरे हुए हैं अभी, राइट? अगर से मैं सारा टाइम ये पूरे सेशन में ऐसे 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 करते रहूं, that shows I'm overdoing it. Once in a while, if I touch my hair, is fine. But if I continuously keep doing it, that's going to the other extreme. Or if I come completely disheveled, I don't give a fuck. Log kya YouTube pe bolte, let me not. That will be the other extreme, right? So you have not giving me enough context to go on. So I'm just rambling on, as I do always. Hopefully that it hits home with somebody else. But the more we seek perfection, लेट्स से आपका प्रेजेंटेशन हो रहा है, ठीक है, आप प्रेजेंटेशन के लिए आपने प्रिपरेशन की, आपने स्लाइड्स बनाए, पर आप उसको हर बार डिलीट करके फिर से स्टार्ट करते हो, हर बार डिलीट करके फिर से स्टार्ट करते हो, आपकी एंजाइटी लेवल्स बढ़ जाती है, यू आर नॉट हैप्पी विथ योरसेल्फ, यू नेवर नो व्हेन टू स्टॉप. नाउ दैट इज नॉट गुड. Yes, it's not good for you. So I hope I've answered your question, and if you could give me more, please do so in the DM, because now I will go to the next question. Now, Samir says, ma'am, I have a master's in commerce. I started working in 2019. In 2022, quit to pursue professional degree. Okay. So he has a master's in commerce. He started working in 2019. 2022, he gave up to quit a professional degree. Oh, मेरा 1 मिनट चार्ज करना है फोन. ओके, आई थिंक नहीं चार्ज हो रहा है, रुक जाओ. ओके, सॉरी, मेरा इंस्टा बंद होने वाला था, बैटरी लो गई. Okay, so since 2022, have been able to since 2000 I've been able to complete half of the degree, but half is left and due to family emergency. All my because दो लोगों ने, डेविल और समीर ने अलग अलग चैट लिखे मेरा contact. Due to family emergency, all my savings are gone. No money to appear for exams, neither for sustenance. Barely 2-3 months of savings are left. I'm looking for a job since 2 months, and due to recession, kahin pe bhi job nahi mil rahi. Really feeling down because I have 2.5 years of work ex, decent education, yet cannot find a job. Ooh, that's a tough and rough one. Okay. एक तो पहले मुझे अपना
CV भेजो, ठीक है? Let me see people who I know if they can help you in some way. Second, I would suggest that instead of waiting for the job that you were doing, because you took a break, right? So अगर से आपने ब्रेक ली है, नेचुरली जो भी आप लोगों को जॉब देने वाले वो ये देखने वाले आपका सबैटिकल कितना लॉन्ग था, राइट? एक तो 2019 टू 2022 एंड 2023 में हम लोग, तो तुम्हारा एक साल का लेट्स से 1.5 ईयर का सबैटिकल हो। जिन लोगों का सबैटिकल ऐसा होता है उनको बहुत डिफिकल्टी से जॉब मिलती है, पहले तो क्योंकि तुम्हारा डिग्री भी कंप्लीट नहीं हुआ। सेकंड, आई वुड सजेस्ट डाउनग्रेड योर एक्सपेक्टेशन। कोई भी जॉब मिल रही है, इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर अ जॉब दैट यू वर डूइंग प्रायर टू दिस, स्टार्ट अगेन एट somewhere at the bottom instead of expecting too much. Some money is better than no money. First start there ना बेटा, then आप आगे जाओगे। नहीं तो क्या होगा, तुम्हारी एक्सपेक्टेशन जो है और तुम उसी लेवल का एक्सपेक्टेशन पे तुम जॉब ढूंढ रहे हो, मोस्ट लाइकली इसलिए आपको मिल नहीं रहा। आपको थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज अभी करना पड़ेगा। तो प्लीज लुक फॉर अ जॉब, चाहे वो अगर से तुम्हारा कहीं भी लेट्स से पेड इंटर्नशिप कर सकते हो, या आप ओके सो सॉरी बीच में डीएम आ गया था। तो ऐसा करो, पहले तो मुझे भेजो अपना CV। सेकंड, जो आपका अगर से आप साइड बाय साइड फ्री कोर्सेज से थोड़ा बहुत अपग्रेड कर सकते हो। तीसरा, अपने एक्सपेक्टेशंस रिड्यूस करके अभी जो भी जॉब मिल रहा है फिलहाल कर लो, ठीक है? बिकॉज आपके पास कितने ऑप्शंस हैं। अब जब जॉब नहीं मिल रही है, कहीं ना कहीं आपको एडजस्ट तो करना पड़ेगा, अगर से सेविंग्स खत्म होने आ रही है, राइट? तो what is the choice? How to send my CV? Send me via Insta, okay? DM me on Insta and send me the snapshot that I had asked you for it. But having said that, I can't promise you a job. I know very few people, first and foremost, but I'll see you. Let me see what is your qualification. Let me see who I can send this to. Let's assume that I cannot. Okay, because I always like to not put the hopes high कि ऐसा नहीं करके मैम को भेजे, मैम उतने लोग, मोस्टली तुम्हारे जो मुझे फॉलो करते हैं सारे बच्चे ही हैं, राइट? Hardly anybody in the professional capacity of hiring and stuff like that. Very few are 30 plus something जो मेरे clients होते हैं। तो मैं कोशिश करूंगी, बट मेरे हिसाब से आपको फिलहाल थोड़ा सा अपना एक्सपेक्टेशन रिड्यूस करके कहीं और कर लो। पेड इंटर्नशिप हो या अनपेड इंटर्नशिप हो, कुछ हफ्तों के लिए करोगे तो अच्छी बात होगी। हाय क्षितिज, ये व्हाट इज दिस इमोजी? क्षितिज लॉयर है, शायद वो आपको, जो अगर से आपका लॉ में है तो वो आपको हेल्प कर सकते हैं। तो मैं अपने दोस्तों से और जो लोग मदद कर सकते हैं, एनीवन, कैन यू राइट व्हाट इज योर डिग्री? Can you just tell me what is your qualification? You said B क्या लिखा था? Masters in Commerce. Oh, so Masters in Commerce में तुमको मास्टर्स करके जॉब मिल गई थी, तो अभी क्यों नहीं मिल रही? मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि पहले मिल गए और अभी नहीं मिल रही। Is it because of the sabbatical or what? So all of you all, अगर सिर्फ आप में से जो भी मुझे देख रहे हैं, okay, if anybody can help Sameer, he is going through a tough time, like I help you all. If anybody can help him, he's got masters in commerce and he's took a sabbatical. He's not going through a great phase of his life. If anybody, please DM me ki ma'am, we heard you say something that someone needs help and I can get him a job or I can refer him to some place. I would be grateful to you all. So please try to help. ठीक है? Okay. I'm Saloni Singh, ma'am. I messaged you on Insta ID from my mother. Okay, I'll reply to you. आज किसी को reply नहीं मिलेगा। मैं जब YouTube खत्म करती हूँ मेरा पूरा एनर्जी ऐसे ड्रेन हो जाता है, तो प्लीज वेट कीजिए। आयशा, okay. Varun Nagar says, okay, sorry. Captain Shush, ma'am, what is your Insta ID? I need help. My ID is same as my YouTube ID, celebrate with Rachna. जिनको पता नहीं है, celebrate नहीं है, celebrate means to introspect, to think, and please wait for me as it is all DMs आए हैं। वीकेंड को मैं काम करती नहीं हूँ आजकल, जिनको पता है तो प्लीज वेट किया करो, मैं रिप्लाई करूंगी, ठीक है?
Okay, so Varun writes, I have a very low self-esteem and self-confidence due to which I fear and have anxiety facing interview and not even applying to jobs now. I don't have a good paying job for currently. Okay, we can work on it step by step. It is not going to be overnight. First आपके एंजाइटी पे वर्क करेंगे, आपके सेल्फ वर्क पे वर्क करेंगे. देन मैंने 2 वीडियोस निकाली है ऑन इंटरव्यू स्किल्स. फिर आपका जो भी प्रोफेशन है, इफ पॉसिबल, मेरे पास तो इतना टाइम नहीं रहता है, पर मैं कोशिश करूंगी आपके साथ मॉक इंटरव्यू करने के लिए. इफ मैं नहीं कर सकती, किसी को ढूंढो आपके साथ मॉक इंटरव्यू करने के लिए. हाय सैंग, दैट्स माय फ्रेंड सेइंग हाय. हाय वेव, हाउ आर यू? सो वरुण, multiple things can be done, and yes, it's something we can fix. But all I need, if anybody remembers my recent post which I've even pinned, I cannot rescue you all if you will not participate in your own rescue. I cannot help you. तुमको माउंटेन चढ़ना है, मैं पीछे से सपोर्ट कर सकती हूँ. आप वेल में गिरे हो, मैं आपको लैडर दिखा सकती हूँ, आपको मैं सपोर्ट कर सकती हूँ. मैं आपके लिए चल नहीं सकती, मैं आपके लिए भाग नहीं सकती, मैं आपके लिए काम नहीं कर सकती. आपको मुझे हेल्प करना पड़ेगा. आपको हेल्प चाहिए, कनेक्ट विद मी, टेक माय रिसोर्सेज सीरियसली, दे आर रियली गुड. मेरे पास इतने टेस्टिमोनियल्स है, ऑनेस्टली इतने. अभी आए दिन आते हैं, मैम हम इधर पास हो गए, हमने वो अचीव कर लिया, वी आर डूइंग सो वेल. मैं कितने बार सोचती हूँ हर चीज का, कितने बार लोगों को, आई एम श्योर मेनी ऑफ यू ऑल मस्ट हैव गॉट दिस मैसेज, ओह दैट्स सो काइंड, दैट्स सो थॉटफुल, आई विल कीप दिस स्क्रीनशॉट और कभी ना कभी पोस्ट करूंगी. आज तक मुझे इतने महीनों से मैंने पोस्ट नहीं किए, इतने सारे कलेक्ट हो गए. सो वो लोग और आप में ये डिफरेंस है कि दे हैव वर्कड फॉर इट. I cannot do more than guiding your, taking your feedback or being your accountability partner. कि every week you tell me कि मैम हमने ये किया, मैम हमने वो किया, और क्या कर सकते हैं. I am there for you. But are you there for yourself? Are you going to help me help you? Is the question. If yes, connect with me. We have a lot of work that we need to do. Resources can be daunting, can be boring, can be like ये क्या है, मैम ने 15 ईमेल्स भेज दिए, कौन पढ़ेगा, कौन देखेगा, क्यों करे. अगर से ये आपका एटीट्यूड है, आप मेरे पास प्लीज मत आइए, बिकॉज मैं उन काउंसलर्स में से हुई नहीं जो बिलीव करते हैं कि टॉक थेरेपी हो गया तो काम खत्म. नहीं, we are a work in progress. We need to put efforts every single day for our mental health, for our physical health. जैसे जिम रोज जाते हो, राइट, आप या एक्सरसाइज रोज करते हो, या आपका जो भी काम, आप रोज ऑफिस जाते हो, रोज कॉलेज जाते हो, करना पड़ता है, राइट. इट्स नॉट लाइक एक बार गया और फिर छोड़ दिया. नहीं, हर चीज लाइफ में मेहनत से ही होती है. तो प्लीज कनेक्ट विद मी इफ यू रियली नीड हेल्प एंड इफ यू आर रेडी टू वर्क ऑन योरसेल्फ. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Do not like, oh, not like in a bad way, extremism, like if I'm studying, then studying only. If I start playing games for stress release, I get addicted easily, then I leave everything. That is equally bad ना. आपने एक हेल्दी स्केड्यूल फॉलो ही नहीं किया है. आप अगर से एक दिन ब्रेक ले रहे हो, पढ़ाई से समझ में आता है. अगर से आप बहुत दिन ले रहे हो या बहुत घंटे ले रहे हो, आपके लिए अच्छा नहीं. क्या स्टडी, तो उससे बेहतर बैठो. अच्छा, अभी सिंस थोड़ा आइडिया देती हूँ कि हेल्दी स्केड्यूल क्या होता है. तो पहले तो मेरा कमर टूट रहा है. ओके, एवरी नाइट यू राइट 4 goals. First goal, nutrition goal. What you should be eating, what you should be drinking, how much water will you drink, what fruits will you eat, what vegetables you will eat, what protein you will consume, what is your diet going to be. क्या आप आज ज्यादा जैसे कि आमंड्स इनकलकेट करोगे, या वॉलनट्स इनकलकेट करोगे, फ्लैक्स सीड, चिया सीड, या आप ब्रोकली खाओगे, या जो भी इंडियन वेजिटेबल्स में कुछ भी, कॉलीफ्लावर हो, जो भी इतने सारे बतेरे, टोमेटो है, जो भी, या फ्रूट्स में आप एक्स्ट्रा फ्रूट हेल्पिंग लोगे. So this is your nutrition goal. So every night before you sleep, you write 1 nutritional goal. Second, you write your physical or your fitness goal. आप क्या करोगे? आप योगा करोगे, पिलाटेस करोगे, जिम जाओगे, जॉगिंग करोगे, बैडमिंटन खेलोगे, खो-खो खेलोगे, कबड्डी खेलोगे, जो भी करोगे.
something every single day. Even the day you're not going to the gym, it is very easy to just get a 30-minute walk in your like every single time I eat food, I make sure I at least walk for 15 minutes. अगर से आप ये 3 बार दिन में भी करोगे, अगर से आप proper exercise भी नहीं कर रहे हो, which you should be doing, because as we grow older, it's very important to do strength training to keep your muscle intact. Then ये हो गया, तो एक nutrition goal, एक है fitness physical goal. Third goal is your career or your study related goal. आप क्या पढ़ाई करोगे कल, आपका पोर्शन कितना है कल. अभी इंस्टेड ऑफ राइटिंग में 20 चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स करूंगा या 20 चैप्टर्स ऑफ मैथ्स करूंगी, इट्स स्टूपिड फकिंग गोल. सॉरी, एक्सक्यूज माय लैंग्वेज. व्हाई? मतलब आप कितने घंटे पढ़ोगे अनलेस तुम एक एक लाइन पढ़ने जा रहे हो उस चैप्टर्स, राइट? आपको स्मार्ट गोल सेट करना, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक, टाइम बेस्ड गोल्स. तो जब आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर से आपने डिसाइड किया कि कल मैं, सपोज आपके 6 सब्जेक्ट्स, कल मैं 2 सब्जेक्ट्स पे फोकस करूंगा, 2 सब्जेक्ट्स में इसको ब्रेक डाउन करके मैं कितना पढ़ाई करूंगी या करूंगी, क्या मैं 2 सब्जेक्ट्स में 1 चैप्टर या 2 चैप्टर, आपको अपना पता है. मैं नहीं डिसाइड करूंगी आपके लिए. व्हाई? बिकॉज ऑब्वियसली आई डोंट नो योर limits. I don't know how much you can study or how much is there to study. How long can you study? 24 घंटे में से 8 घंटे आपने अगर से आप सो लिए और फिर आपके पास 16 घंटे बचे, उसमें से आप कॉलेज जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, वर्क जा रहे हो, जो भी कर रहे हो, राइट? इट कुड बी मेनी थिंग्स. सो यू हैव टू डिसाइड दैट करियर गोल. अभी तो स्टडी के बारे में करियर गोल वो होता है जिसमें आप अपना स्किल्स अपग्रेड करते हो डेली. लेट्स से half an hour you give yourself after you come back from work कि what is happening in the today work environment, what can I study more. अगर से मैं let's say IT में हूँ या मैं कुछ और, let's say आप CA हो, जो भी आप काम करो, I'm sure there is room for growth. You couldn't be knowing everything से याद है, मुझे मन कर रहा है एक पर्टिकुलर किसी के बारे में रैंट करना, पर I will avoid it. Okay, अब ये 4th goal जो बहुत इंपॉर्टेंट गोल है, जिसके बारे में मैं इसलिए हमेशा कहती हूँ, इसको बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस को, इमोशनल वेलनेस को. जो हम ये सब चीजों पे, हम लोग जिम चले जाते हैं, हम खाना ठीक से खा लेते हैं, हम हमारा पढ़ाई कर लेते हैं, हम हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम नहीं करते. हम ये नहीं देखते हमारे लिमिटेशंस क्या है, हमारे पर्सनालिटी में क्या क्या फिक्स किया करना चाहिए हमने, हम हमारे रिलेशनशिप्स में हमारे इंटरपर्सनल स्किल्स कैसे हैं, क्या हम हर चीज में परफेक्ट है. परफेक्ट तो होते नहीं किसी भी चीज में, नंबर 1. सेकंड, बट क्या हम अपना बेस्ट दे रहे हैं, क्या हमसे लोगों को बहुत शिकायत है, क्या हमको हमसे बहुत शिकायत, हमको क्या फिक्स करना. तो वो तुम्हारा 4th गोल हो, टू टेल योरसेल्फ. लेट्स से यू, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ योर, my maximum clients is related to what? Stress and anxiety, right? All of you, चाहे वो रिलेशनशिप को रिलेटेड है, चाहे वो पढ़ाई हो, करियर हो, जॉब नहीं है, पेरेंट्स हैं, सबकी स्ट्रेस है, राइट? दिस इज अ कॉमन टॉपिक, बट देन यू ब्रांच आउट इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीजंस दैट यू हैव स्ट्रेस. ओके, यूट्यूब देख लूंगा, यस श्योर. तो then you branch out into that. So stress, let's say मेरी anxiety वाले resource में आपको explain किया है, what is reframing, what is affirmation, what's living in the moment, what is grounding technique, when can I use it. So you write a emotional wellness वाला goal, emotional intelligence, कि कल मुझे I have to practice staying more, let's say जैसे इन्होंने लिखा कि ये बहुत extreme करते हैं. Okay, tomorrow I'm going to try not to do this extreme thing, I will follow my schedule, and you will write in your journal. That will be your goal. Next morning when you get up, you make your bed, you watch your comedy, you do your breathing exercise, you do your stretching. Maximum 10-15 minutes in your day. Do not touch your phone in the first 15 minutes to an hour, depends, सबका अपना अपना होता है, क्योंकि तुम्हारा cortisol level is the highest in the first hour when you wake up. So make sure that you do all the relaxing activities, breathing करना, focused होना, sun में, because most Indians are lacking vitamin D, धूप में बैठना सुबह, ये सारी important चीजें हैं, comedy देखना, bed बनाना, और फिर read your goals again, कि आज मैंने क्या प्लान किया अपना स्टडी. ये प्रशांत तुम्हारे लिए स्पेसिफिक ये बोला जा रहा है कि कैसे आपको करना है. अगर और इस स्केड्यूल में ये 4 गोल्स हो गए, पर आप स्केड्यूल भी बनाना चाहिए कि दिस टाइम टू दिस टाइम आई विल वॉच
let's say, or play a game or do something. Learn to listen to the alarm clock. If you're not, because if you don't, if let's say आपने alarm set नहीं किया, तो आप push करते जाओगे. But first time, second time, 10th time, आप alarm को नहीं ध्यान दोगे. But धीरे धीरे, when you start pushing yourself and saying no, as soon as the alarm rings, I will stop watching. I will make sure that I get up and go back to my studies. This takes discipline. Discipline comes with practice. Discipline comes with consistency. डिसिप्लिन ओवरनाइट नहीं आती. हमको अपने आप को एवरी डे, अगर से आप एक हैबिट बनाना चाहते हो, तो उसको जितने बार करो उतने बार फिर आप में वो समा जाएगा. और एक बार आप में से समा जाता है, जैसे मुझे गंदी आदत है या अच्छी आदत है, जो भी बोलो, मैं वक्त से पहले कहीं भी पहुंच जाती हूँ. ठीक है, मैं कुछ ज्यादा ही ओवर द टॉप पंक्चुअल हूँ. मैं कहीं भी पहुंचती हूँ, मेरे को मुझे लगता है मैं लेट हो गई हूँ, मैं फिर भी सबसे पहले पहुंच जाती हूँ. तो कैसे हुआ ये ओवरनाइट नहीं था. I build myself ki no, I have to learn to respect other people's time, I have to respect my time, and I guess some people are just innately like that. But we can always change ourselves. So whatever you need to fix, you need to set a goal for the next day. Let's say I'm very rude to my mother, or I'm very rude to my girlfriend, or I'm too harsh on myself. These are also emotional intelligence goals. I'm very lazy. Let's say I don't help in the house. I don't eat healthy. There are lots of goals you can set. Now, I don't set the goals for you, but I can hear you out. You can connect with me and say, we want to work on this particular aspect of our life. Can you help me? That's it. And for God's sake, यार सब लोग मेरे को एक बात बताओ. मुझे मालूम है करके मैं ये बहुत बार बोलती हूँ, मुझे और एक बार पूछना है. Although बुरा भी लगता है, but like, what is wrong with some of you? After helping you all for years and you keep asking me for help, why do you unfollow me? Why do you so embarrassed to follow me? Why are you embarrassed to associate with a counselor? फिर उसी इंसान से अपॉइंटमेंट मांगती हो. But I noticed that you followed me. I gave you my. I said, okay, that पैसा नहीं देते हो, रिस्पेक्ट तो करो. 20,000 में चलो 200, 300, 1000 लोगों को फॉलो करते हो. एक और इंसान आपके लाइफ में, आपको इतनी शर्म क्यों आती है मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हुए? इतनी शर्म क्यों आती है आपको ये बोलते हुए कि हाँ, आई हैव अ प्रॉब्लम, सो मैम इज I need help. The more seeking help, the more we normalize mental brain health, de-stigmatize seeking counseling, the better our society will become. आज जैसे मैं आपको Oh My God 2 की बात कर रही हूँ, जैसे it's a breakthrough topic for India. You guys need to change this. It's okay for you guys to follow a counselor, to follow mental health pages. Just like you follow fitness pages, you follow these comedians and actresses and OnlyFans page and porn वाले pages. So आप लोग ये भी तो करते हो ना. मैं तो आपको आपके बुरे वक्त में मदद कर रही हूँ, तो आपको शर्म क्यों आती है? आपको क्यों ऐसा लगता है कि should take my help and my time and not value my efforts? So all of you, I request you, when I give you so much, give me respect in return. नहीं चाहिए materialistic, तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए मुझे. तुम जब ऐसा करते हो ना, especially the ones who have helped for years, और गुस्सा आता है मुझे बहुत इरिटेशन होती है कि वही इंसान, तुम एवरी हफ्ता उस इंसान को लिखते हो, एवरी महीना लिखते हो, और जब भी लिखते हो मैं तुम लोग की मदद करती हूँ. कभी एक बार तुमको सीन पे नहीं छोड़ा, कभी एक बार ऐसा नहीं करके ओके आई डोंट हैव टाइम, बज ऑफ, कभी नहीं किया तुम लोगों के साथ. जब मैं आप लोगों की इतनी रिस्पेक्ट करती हूँ, आप लोग रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते हो यार? Especially if I've been there for you. अगर से कोई न्यू फॉलोअर है ना and doesn't understand my value, ठीक है यार, कोई बात नहीं. But the people who have been helping for over 6 months to a year, and you people do this now, it really hurts. It's really very. और अभी किसी ने मेरे को ये नया क्लाइंट थी जिसने मेरे को लिखा, hey,
पहले तो मुझे किसी ने भी हे लिखा ना, मैं तुम लोग को ना सच में आई एम टेलिंग यू, और मैं डू नॉट, डू यू कॉल योर टीचर्स, योर डॉक्टर्स एंड योर प्रोफेसर्स हे? Really, you people need to be told. This generation needs to be told not to speak to someone like this in a professional capacity. You don't write a hey. तुम अगर से किसी जॉब के लिए हे लिखोगे किसी को, क्या हो गया है यार तुम लोगों को? एक तो ये है, फिर मेरे को बोलना पड़ता है कैन यू प्लीज डू नॉट एड्रेस मी लाइक दैट. सेकंड प्लीज और थैंक यू, फिर किसी ने लिखा हे. आई ऑनेस्टली टेल यू, किसी ने ऐसा लिखा हे, नो मैम, नो हेलो, हे. आई वांट करियर काउंसलिंग. Not that please could you help me with career counseling. Not that hello, how are you? Not that thank you for reading this message. No, not a bloody damn thing. क्या हो गया इस जनरेशन को? इतनी सिंपल एटिकेट वाली बात. मैं तो तुम लोग को सिखा रही हूँ कि एटिकेट इवन एक स्टाफ के साथ होती है. प्लीज थैंक यू, इवन जब हमारा कोई बाथरूम साफ करता है, कोई हमारे घर में काम करता है, उसको भी बोलना चाहिए. आप किसी के प्रोफेशनल को लिख रहे हो, आपको लिखना नहीं आता? तो मुझे ये बताओ सब लोग, क्या मैंने ऐसे लोगों को अपॉइंटमेंट देनी चाहिए? फिर भी दूंगी, बट तुम लोग क्या करते हैं मेरे पोजीशन पे होते तो? डू टेल मी. Okay, what was the question, ma'am? How to start meditation? I do it for 5 minutes and get burnt out so easily. Okay, we did an entire podcast on meditation. You have to watch CB Meditates वाला, तो चंद्रेश जी के साथ मेरा पूरा पॉडकास्ट हुआ था. आप मेडिटेशन के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज मेडिटेशन बथेरे रीजंस के लिए भी कर सकते हैं. आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, किस चीज पे आपको मेडिटेट करना है, आपको एंगर इश्यूज है, आपको स्ट्रेस हो रहा है, जो भी, आई कैन गिव यू मेनी रिसोर्सेज फॉर योर सेल्फ वर्थ. मेडिटेशन उसके लिए भी हो सकती है. आपको पैनिक अटैक्स होते हैं, उसके लिए भी हो सकती है. तो स्टडी के लिए, फोकस के लिए भी हो सकती है. तो आप फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट DM me. I'll send you the right links and the right things to do for meditation. And even if you can do 5 minutes, let's say couple of times of a day, is also good enough. Meditation doesn't mean कि Lord Buddha की तरह हमें nirvana achieve करना है. It doesn't mean that. It just means to focus on your breath going in and out. And there are multiple ways. If you contact me, I'll send you something called square breathing with smile technique. That also helps. It will help you. And धीरे धीरे, अभी आप 5 मिनट कर सकते हो, तो आप फिर 6 मिनट ट्राई करो, फिर max 10 minutes भी करोगे is more than enough. You don't have to get too technical about it. It's not really required. Okay. Okay. Anant, maybe you are new to my thing, so I will ignore your first and foremost. I'm either respect the channel. If you don't know what I'm talking about, please rather keep quiet. Okay, because I do not tolerate disrespect. And whenever you're talking about someone older than you, first and foremost, don't use such disrespectful words. आपको समझ में नहीं आ रहा, आप पूछ सकते हो, what is this about? ये चैनल पे क्या हो रहा है? ठीक है. अभिषेक, प्लीज चेक योर इंटरनेट कनेक्शन. बेटा, I can't do anything. अभी इंस्टा भी लाइव है, जूम भी लाइव है, सारा ड्रेन होता होगा. ठीक है. वरुण नागर, that's very kind of you. Thank you. पहले तो ये नया क्या है यार, ये बहुत इरिटेशन हो रही है, तो नहीं निकल रहा है मेरे को. Just can't get it why this is happening. एक सेकंड, पहले मेरे को हाई लिखना तो then I can maybe change. हाँ, now I can see the thing. Balaji, can you edit this, because I somehow can't. I don't know why. I can. Anand, till you do not address me with respect for now, I'll delete your comment. If you want to stay on my channel, be respectful, or please leave the channel gracefully. I do not like disrespect. I do not allow disrespect to me or to even the children who are watching me. Even somebody had written about another child just now, and I corrected him also. So it's not allowed here. Okay, next question. Meditation wala question answer kar diya hai, because I live in Gurgaon and I have to pay rent, electricity. I'm left with, देखो अगर से गुड़गांव में रहोगे तो रेंट तो आपको भरना पड़ेगा बेटा, या तो पीजी में रहो या डाउनग्रेड करो थोड़ा अपना फिलहाल, and then you can. Okay. Okay, क्या
नितिन ने क्या लिखा है, ये दूसरा नितिन है, पहले दूसरा नितिन सिंह थे, अभी नितिन दाटोंडे। एक्सरसाइज डाइट सब कुछ पॉइंट ऑन है अभी, बट एंजाइटी की वजह से काफी स्ट्रगल है। तो एंजाइटी को फिक्स कैसे करते हैं? पहले अपने थॉट प्रोसेस को फिक्स करना पड़ता है, जर्नलिंग करना पड़ता है, हिप्नोसिस, सप्लीमेंट्स, बहुत कुछ तरीके हैं अपने आप को हैंडल करने के लिए। तो वो नितिन तुमने लिखा है कि एंजाइटी का स्ट्रगल है, किस रीजन से एंजाइटी हो रही है वो प्लीज मुझे कांटेक्ट करके बताओ, ठीक है? And then I'll give you the correct this thing. If you can prepare for CAT, that is the best way to secure high-paying jobs. यार इतना CAT at this point when he is already struggling with finishing his last course, how can he do CAT? मुझे समझ में नहीं आ रहा है. Okay, Invincible Pepe, good going. I love the way you answer every question with enthusiasm and dedication. Thank you for understanding कि all this takes a lot of effort. Rant अभी हो गया बालाजी. कितना rant करूंगी? किसी ने लिखा भी करिए, क्यों कर रही हूँ, करना पड़ता है, तुम लोग मुझे मजबूर करते हो। मेरा सी वन पर्सन यू कैन नॉट एक्सपेक्ट टू बी ऑल स्वीट एंड यू नो काइंड एंड एम्पैथेटिक एंड यू नो एवरीथिंग। each one of us has things which bug us, so let's not pretend to be holier than thou and sanctimonious like you people are, like you never rant or you never get angry or you're never upset with people around you. Here when I work free of charge, इट्स मेरा बनता है जो मैं कहती हूँ, ठीक है? और आप लोगों का भी बनता है, हम सब। Anger is not a bad emotion, getting upset is not a bad emotion, unless it's happening every single day, it's different. But in 3 hours if I tell this in the middle, there must be a reason, because it happens to me every other day. And it's even after repeating myself, being repetitive on this topic, people still do it. Even after posting a bloody link, people still do it. अब मैं क्या करूँ? अभी अगर से लोगों को समझ नहीं आ रहा है तो हम क्या करें? But I'm very interested. I love this. फिलहाल 317 views on my channel. Not bad, yeah. From remember एक time था 20 views होते थे. So I'm very happy that at least the channel has grown. Okay, what's the next, ma'am? मेरे cousins around है, my age have 25 to 35 lakhs per annum, but I just have 5 lakh jobs, so I feel so much peer pressure. देखो वरुण, कांटेक्ट करो, फिर से मैं सेम टॉपिक पे नहीं बोल सकती, बट कजन को देखना बंद करो। तुम्हारा सिचुएशन अलग है, उनका सिचुएशन अलग है। तुम्हारी फैमिली इमरजेंसी थी, उनकी फैमिली इमरजेंसी नहीं थी। आपने डिफरेंट शायद कोर्स किया होगा, आपका जो भी स्ट्रगल्स रहे हैं उनके स्ट्रगल्स अलग है। और आज अगर से आप उतना नहीं कमा रहे हो, जरूरी नहीं करके oh shit, 1 second, sorry, I got such a start of my life because I was reading on YouTube. Sorry, हाँ, तो ऐसा नहीं है करके आप बाद में नहीं कमाओगे शायद। देखो ये रेस नहीं है, वो खरगोश और क्या टर्टल टॉर्टोइस का, सॉरी, तो ये रेस नहीं है, आप रेस के घोड़े नहीं हो। तो स्टॉप बीइंग इन दिस स्टूपिड रेस, अपना लाइफ देखो, अपने इस पे वर्क करो। दूसरों से जितने कंपेयर करोगे उतना तुम दुखी होते जाओगे, कभी खुशी नहीं मिलेगी। एक दिन आएगा तुम 20-25 कमाने लग जाओगे, फिर बोलोगे मेरे पता है वो इंसान का 50 लाख पर एनम, फिर क्या करोगे? फिर दुखी हो जाओगे यार। अनफॉर्चुनेटली इंसान की जो ग्रीड होती है ना, इंसान की जो नीड्स होती है और वांट्स अलग होती है, अलग चीज है। आप पहले अभी अपनी नीड पे फोकस करो, आपको अभी क्या जरूरत है, हो जाएगा। आपका भी वक्त आएगा जब कमाओगे, किसी को फर्क नहीं पड़ता। आप जब 30 लाख कमाओगे, शायद मैक्सिमम लोग आपको देख के बोलेंगे। मैं उनको भी सेम बोलूंगी, इसको देखना बंद कर, अपने आप को देखो, अपने लाइफ पे करंट फोकस करो। आपके पास कैन वी कॉन्टेक्ट थ्रू जीमेल? नो, यू कैन नॉट कॉन्टेक्ट मी थ्रू जीमेल. I cannot send voice notes, I cannot send questionnaire, I cannot, it's not possible. The to and fro on emails is very different on chat. So please don't, unless it's your which some people write your progress report every week जो मेरे पास आते हैं, कभी लोग email से भेज देते हैं, that I can accept. But फिर भी वो भी मेरे लिए problematic हो जाता है, because then I have to see कि ये तुम्हारा केस फाइल कौन सा था, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या था, तुम अचानक ईमेल भेज देते हो। तो प्लीज एक ही फॉर्मेट, एक ही सोशल मीडिया पे रहो, मेरे लिए बहुत हेल्प हो जाता है, ताकि आई कैन कंपेयर नोट्स कि तुमने लास्ट वीक क्या कहा था, इस वीक क्या किया, एंड ऑल दैट। सो प्लीज नो ईमेल्स, ओनली इंस्टा डीएम्स, ओके? सॉरी, इधर कितने, मैम रियली सॉरी फॉर द इंटरप्शन इन द वीडियो, दैट्स ओके। मॉम केम एंड डिड नॉट नो माय वीडियो, दैट्स ओके।
Ma'am, have you done a big 5 personality test? No, I have not done that. I see, I don't go into the depth of all this because I really feel the more we tag ourselves, the more we unnecessarily read. Every other person today has OCD, ADHD, then they, ma'am, please add Rahul to meeting. Who Rahul first and foremost? And by the way, the meeting link is open. I have not even kept it closed. It's maybe is using the wrong link, by the way. Everybody who's watching me, please understand, I use the wrong Zoom link. The correct Zoom link is pinned on YouTube chat, not in YouTube community, in YouTube chat. I'm very sorry I made this mistake today. Next time मैं कोशिश करूंगी कि ऐसा ना करूं. पर क्या करूं, कभी-कभी हो जाता है यार, गड़बड़ हो जाती है. Archit, please help me. Okay, I don't know if you're still there, please. जिसको भी ये भगवान जाने राहुल कौन है, राहुल प्लीज यूट्यूब चैट देख लो, लाइव चैट अभी चल रही है. ओके, on point. I'm following you through all my IDs. Thank you so much. That's very sweet and it shows that you're not embarrassed of me. मैम, इंडिया में अगर आप पेरेंट्स को मेंटल हेल्थ को बोलोगे तो वो समझते नहीं है, बोलते हैं कि फोन में लगा रहता है पूरे दिन, उसका नतीजा है. हाँ, टाइम लगेगा. I hope you people will break the chain and you will become such parents who believe in mental health and would be. But problem भी तो ये हो गई है ना, आप लोग excuses भी तो देते हो ना पेरेंट्स को. कभी कभी क्या होता है, आप लोग पॉर्न एडिक्शन में फंसते हो, आप गेमिंग में फंस जाते हो, फिर बोलते हो ओ मुझे बहुत स्ट्रेस हो रही है ना, तो इसीलिए मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही. तो फिर पेरेंट्स को बोलेंगे ना, मटर गश्ती कर रहा है फोन पे, इंस्टा रील्स देखने को बराबर होता है पर बाकी नहीं हो रहा है. तो पेरेंट्स को भी तुम कंप्लीटली ब्लेम नहीं कर सकते. बी ऑनेस्ट, बी अपफ्रंट. एंड यस, आई होप कि पेरेंट्स भी, मेरे हार्डली कुछ अडल्ट्स मुझे फॉलो करते हैं और काउंसलिंग लेते हैं जो मैरिड वुमेन होते हैं, और सम मैरिड मेन, नॉट ऑल. एंड होपफुली व्हेन दे हैव किड्स दे विल टॉक टू देयर चिल्ड्रन लाइक आई ट्राई टू टॉक टू माय चिल्ड्रन एंड टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ फ्रीली एंड ओपनली. उत्कर्ष पांडे, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? गुड टू सी यू हियर. ओ माय गॉड, देयर इज सो मच चैट. प्लीज मुझे थोड़ा ओके. अनंत, तो सीपी दिल्ली में मिल, फिर बताता हूँ तुझे. नहीं, हम मारते पीटते नहीं है, ठीक है. हम प्यार से भी बात कर सकते हैं, गुस्सा कर सकते हैं, पर हाथ नहीं उठाते. And thank you so much, all the children who are being so protective of me just because somebody wrote a not such a nice comment, but it's okay. We are fine. We need this also. Why? Because it helps us to become stronger. We learn to give it back when we need to give it back, right? Anand, she's training for future warriors. Oh, that's so sweet. I like that Nitish wrote this. Okay, Anand, she's training for future warriors. Yeah, we should learn to have boundaries. We should not let people use us and throw us. We should know our self-worth and value. Samir, Anand, she helps people for free, and that's a noble work. So please learn to be respectful. I'm so touched today. You guys are so sweet. How many of you all are like being so kind today? Thank you, thank you. Okay, Nitin ने लिखा है, मैम suffering from anxiety or got type 2 diabetes at the age of 25. But do you know many times आप इस पे वर्क कर सकते हो अगर से एक प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट आपको मिले. मेरी एक फ्रेंड है, अगर से you have the money, I will give you her contact. She's really good at what she does. And even my brother was almost borderline diabetes, and she is a diabetes specialist. And I've done a podcast with her, by the way. And panic attack and हाय टैबलेट क्यों ले रहे हो यार, कांटेक्ट करो. आई मीन ले सकते हो इफ यू वांट, बट वो रूट कॉज को एड्रेस नहीं कर रहा है ना. सो प्लीज कांटेक्ट मी, लेट्स वर्क ऑन द एंटायर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ. Archit, I would appeal everyone to invite individuals from their network and those who need guidance to join Rachna ma'am in live session. Attending these sessions isn't solely about addressing personal issues. Thank you, Archit. The way she touches broad range of topics around the sessions while addressing each individual's questions and problems provide valuable learning. Thank you. There is so much to learn just by listening to her thoughtful responses to each question that contributes to personal growth and development. Thank you, Archit, for your kind words. And I don't know who this Rahul was. Rahul, if you are watching in any of the modes,
या तो लिंक जूम का प्लीज यूट्यूब लाइव चैट में है, कम्युनिटी वाले लिंक और इंस्टा वाला लिंक गलत है, आई एम सॉरी। ओके, टाइप 2 डायबिटीज एट द एज ऑफ 25, यस यस वी सी, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, उसमें तो नहीं मदद कर सकती, बट और कर सकती। गिव मी 1 सेकेंड मैम, विल यू बी लुकिंग एट द जूम चैट? किया तो था, हाँ मैं दोनों पढ़ रही हूँ, मैं सब पढ़ रही हूँ यार, मैं इंस्टा भी पढ़ रही हूँ, मैं यूट्यूब भी पढ़ रही हूँ, मैं कुछ छोड़ा ही नहीं पढ़ना। इतना इंसान जितना मैं पढ़ती हूँ, आई थिंक एक दिन में बहुत कम लोग पढ़ते होंगे। तो यू कैन आस्क मी एनीवेयर, आई डोंट सी योर चैट हियर, सो प्लीज राइट हियर, ठीक है? You want to come to Zoom? Please ask in Zoom. If not, you can write on YouTube also. Ma'am, still waiting for birthday celebration days. I know यार, I keep saying this, no? बंदे का नाम ही याद नहीं आ रहा, मैं कब से याद करने की कोशिश कर रही हूँ। प्लीज डू मोर फ्रीक्वेंट लाइव सेशंस, दे आर हेल्पफुल। बेटा अभिषेक, every 2 weeks is quite a lot, ना? Just imagine sitting like 2-3 hours, right? अभी 3 घंटे होने आए ना? हाँ 3 घंटे आई एम आंसरिंग एंड क्वेश्चंस अभी भी खत्म नहीं हुए। सो आई डोंट थिंक मैं अगर से एवरी हफ्ता करूंगी 3-3 घंटे, मैं तो आई थिंक आई विल बर्न आउट, या तो तुम लोग भाग जाओगे। तो every 2 weeks it is, okay? Okay, ma'am, have you watched? Yeah, I spoke about Varun. I spoke about Oh My God 2. I liked the movie, but they should have also made a point in the movie to list the disadvantage. हाँ, okay. So when maybe you were not on stream, I said this is not the job of the movie. अभी movie उतना पहले बता रहा था कि there is nothing wrong in masturbation first. कि I think it was not even about masturbation. The topic was when the school rusticated the student for doing something like this. Because what I think the movie didn't address is about women. 1, okay. 2, they didn't address about teasing, about making a video viral. Nobody addressed that. That was my problem with the movie. Although it was ठीक है, कितना चीजें एक मूवी में कितना एक इंसान बात करेगा, right? So there should be like a second part to this movie. And I felt that was missing. How come the person who made this video viral of this child, he was never brought to justice, he was never spoken about? तो मेरे हिसाब से वो पार्ट भी मिसिंग था। यस, डिसएडवांटेजेस तो होते हैं, बट यहाँ पे दिखाया है कि एक तो ये भी बताया है ना कि साइज, जो मेन को साइज का जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, राइट? कितने सारे, वो कितना सही बात बताया ना, कितने सारे लोग बताते हैं कि ये अटैचमेंट यूज करो, ये पिल यूज करो, वो ट्राई करो, इससे बड़ा होगा, वो उससे बड़ा। तो दैट, so I think the director did his best to address so many things which, especially men related topics, and very cries and even suicide for that matter. I wish they had spoken a little bit more on the suicide matter. If you remember कि अभी एक बच्चा जो चीटिंग करता वो पकड़ गया, सच में चीटिंग किया कि नहीं, पर उसका फोन पकड़ा गया या समथिंग, and he committed suicide in India. So all of you all, please, एक तो हर बात पे मरने का सोचना बंद करो. There are ways to overcome this. Like this child also, when his video goes viral, that's what he is going through, so much distress that he thinks that it's okay to go and hurt himself. So this is what one thing in India we need to address, that we always, human beings, try to find, we are taught to feel ashamed of things we perhaps should not be so ashamed of. Many of us lie, cheat, and do wrong things. I'm not saying it's the right thing to do, but एक क्रिमिनल भी जो मर्डर करता है वो प्रिजन जाके आता है और उसको जिंदगी रीस्टार्ट करने का मौका मिलता है। तो जो मैस्टरबेशन करता वो टॉयलेट में पकड़ा गया या कोई चीटिंग करते हुए पकड़ा गया, राइट, वो फिर से उसकी जिंदगी क्यों नहीं स्टार्ट होनी चाहिए, वो क्यों मरना चाहिए? तो मुझे लगता है ये हमारे माइंडसेट में बचपन से डाला है, ये मूवीज के थ्रू, पेरेंट्स के थ्रू, हम आर्टिकल्स देखते हैं, हम ये पढ़ते हैं कि जो नीट करते हैं या जो सर्टेन किस्म के पढ़ाइयाँ करते हैं, उनका सुसाइड रेट ज्यादा हायर होता है इन सर्टेन सिटीज, सर्टेन प्रोफेशंस एंड ऑल दैट। तो ये जो प्रोपेगेट करते हैं, इस पे भी हमको काम करना चाहिए कि नो, यू डोंट हैव टू किल योरसेल्फ, इट्स ओके टू डू समथिंग रॉन्ग, एंड you just work on yourself and
Don't hurt yourself. That's very important. Wow. Sorry, ma'am. Can you please change Zoom setting? Not able to join. Are you please join via the the YouTube link in the YouTube chat? Okay. It's not the Zoom link is not in Insta story. It's not in the community link. It's in YouTube live chat. Whoever wants to join my Zoom, please, Archit, please. से हो सके ये लिंक पोस्ट करके इंस्टा पे भी डाल दो प्लीज मैम। अभी किसी ने लिखा यू आर सो फकिंग हॉट। मन तो कर रहा है इसको गाली दो बट हम इसको इग्नोर करेंगे। हमारे पास और टाइम नहीं है लाइफ में ये सब बकवास झेलने के लिए। माय बिलोवेड मैम, हाय, हाउ आर यू? लुकिंग गॉर्जियस, थैंक यू सो मच। एंड अनुराधा, हाय। मोहित भाटिया, कैसे हो? लॉन्ग टाइम। अभी घर आया ट्रैवल करके, जस्ट टू से हाय। माय प्लेजर। हाय रोहित, व्हाट वीडियो, व्हाट वायरल? डीएम मी, अर्चित ने ही भेजा था मुझे ये वाला। हेलो, हाय रोहित, हाउ आर यू? एंड हाय जतिन, कैसे हो? तो अर्चित ने मुझे बोला था कि एक स्टूडेंट जो he committed suicide because he was caught cheating. I was supposed to address it, but I never managed. तो पता नहीं, कभी कभी मुझे लगता है मेरे पास इतना काम होता है और मैं फिर भूल जाती हूँ address certain things. So Archit, I don't know who you were not here, but I was trying to say कि ये रोहित नहीं, राहुल कौन है जो आना चाहता है, तो प्लीज उसको can I get your contact number? है मोहित राजपूत, कितने सुंदर हो आप। Can I get your contact number? यहाँ मेरे बच्चे मतलब जो मेरे गौरव, बालाजी, मैं आपको भगवान जाने आप कौन, तो मेरा कांटेक्ट नंबर तुम्हें दे दूंगी ना। हम कांटेक्ट नंबर नहीं देते आपको। अगर से नहीं, आप पहले तो अगर से आपको मेरे से काम नहीं है, काउंसलिंग नहीं है। आज मैंने 4 लोगों को, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, 4, मैं बोल सकती थी 10 पर 4 लोगों को मैंने बोला पर आप हो सुंदर। रोहित तू चुप कर, रोहित मेरा फ्रेंड है तो उसको अलाउ है। बट ये जो फकिंग हॉट, ये तो तुम लोग जो लिख रहे हो यार, डिसेंटली कॉम्प्लीमेंट करो, अच्छी बात है। तो आई अप्रिशिएट कि आपने अच्छे से कॉम्प्लीमेंट किया, पर आपका जो सेकंड लाइन था कि आपको मेरा कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए, नहीं, वो नहीं हो सकता। और मैंने आज लिटरली 4 लोगों को, मेरा पता है एक सेट मैंने प्रिडिक्टिव टेक्स्ट में डाला है, उसका शॉर्ट फॉर्म NA है। मतलब मैं ऐसे लिखती हूँ, नो ऑफेंस बट आई एम नॉट गोना चैट विद यू, इफ यू नीड काउंसलिंग ओनली देन DM मी। सो ऐसा नहीं करके मैं किसी से दोस्ती नहीं करती, ऐसा भी नहीं, मैं बहुत लोगों से दोस्ती हूँ, आई एम एक्सट्रीमली फ्रेंडली। बट जो ठरकी लोग होते हैं जो मुझे DM करते हैं, मुझे बहुत गुस्सा आता है। तुम लोगों को रिस्पेक्ट क्यों नहीं है? मुझे कोई इशू नहीं है। अभी अर्चित, सारिम, कितनी सारी चीजें मुझे लिखते हैं, कोई गाने का वीडियो भेज रहा है, कोई कुछ और लिंक भेज रहा है, ये सब ठीक है। बट जब तुम बाउंड्रीज क्रॉस करके क्रैप लिखते हो, वो मुझे नहीं अच्छा लगता है। मैम प्लीज मेरी लाइफ कोच बन जाओ। तू चुप कर रोहित, ठीक है? तेरी लाइफ कोच तुम्हें 2015 में मिले थे ना, तब से ऊपर तू अप्रिशिएट नहीं करता तेरी लाइफ कोचिंग, प्रॉब्लम ये है। So okay, your session with Dr. Trish was really helpful. Yeah, so everybody who doesn't remember who was Dr. Trish, we spoke on porn and porn addiction and how it rewires your brain to a juvenile state, and all of that is covered in that. So जो YouTube चैनल के पॉडकास्ट सेक्शन में उसका, और सम रिच, मेरे को उसका फ्रैंक रिच ही नाम था ना, उनका नाम ही याद नहीं आ रहा क्यों। ये 2 मैंने डेफिनेटली किए हैं, और थोड़ा बहुत, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, हमने शायद सिड वॉरियर के साथ, डॉक्टर सिड वॉरियर के साथ भी किया था। काय कंटेंट, सो प्लीज गो वॉच इट। और रिसेंटली मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, मोस्टली स्टडी रिलेटेड and work related, some bits on insecurity and all of it, so please do go and watch it. Okay, ma'am, can we have your contact? को email मैंने तुम्हें बता दे, नहीं, Insta, everybody Insta करो। और मैम, do you do sessions in Discord too? No, I've stopped doing sessions on Discord. Although मैं जिनको loneliness feel होता है, जिनको emotional support चाहिए, जिनको साथ में पढ़ाई करनी है, डेली डायरी करनी है, कन्फेशंस करने हैं, कोट्स, गेम्स, आर्ट चैनल, सब कुछ है मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पे। मैं भी हूँ,
बट अब मैं डिस्कॉर्ड पे वॉइस सेशंस करना बंद कर दिया है, क्योंकि जब से मैं दुबई आई हूँ, वीपीएन यहाँ पे इलीगल है, तो हम लोग वीपीएन यूज नहीं कर सकते हैं, और डिस्कॉर्ड रेगुलर वाईफाई पे नहीं चल पाता है, और आई थिंक बहुत उसका क्वालिटी इफेक्ट हो गया है। तो प्लीज अंडरस्टैंड, डिस्कॉर्ड पे लिंक जब डाल देती हूँ आ जाए करो जूम सेशन। आई थॉट जूम इज फार बेटर देन डिस्कॉर्ड, वो वॉइस पे जो तुम लोग करते हैं। आई नो यू डोंट गेट टू, you don't want to show yourself, which is fine. Most of them keep their videos off when they're talking to me or they chat, so you can also talk to me. And if you're really very shy, then you can obviously send me a DM and send me a voice note. Okay, so let me tell you something. On a long walk you taught me about how toxic couple get high when keep breaking up and patching up. That this Ayu there stood there in my life and helped me so much. Oh wow, he still remembers what I told him. That's impressive, Rohit. I'm very, very impressed that you remember. Clubhouse is the best. Oh, I did go to, I don't know, I think you must have seen my live from Jindal. I did go in last December. I just impromptu decided to go for, I really needed a mental health break. All of you should take self breaks. Of course, not necessary कि पैसा खर्च के break लेते हैं. Everyday break लोगे भी अच्छी बात है, और छोटे छोटे ट्रिप्स भी करोगे वो भी अच्छी बात है, डिटॉक्स करोगे वो भी अच्छी बात है. हाय अंजलि, कैसे हो बेटा? गुड टू सी यू. हाउ आर यू? Okay, any movie recommendations from my side? Definitely watch Oh My God 2, watch Oppenheimer, Mission Impossible Just for Masti, Rocky and Rani, okay, Jawan, देखनी है तो देखो, नहीं देखनी है देखो. मैंने गदर 2 नहीं देखी है, भगवान ही जाने उसका इतना हाइप क्यों है, क्योंकि जितने लोगों ने देखा है, मैंने तो बहुत बैड रिव्यू सुने, पर मैं देख लूंगी जब नेटफ्लिक्स पे आ गई. इट वाज नॉट लाइक आई रियली वांटेड टू गो सी इट. एंड आई वांट टू वॉच ब्लू बीटल्स, वो रह गई है, मुझे वो देखना है. जेलर, आई एंजॉयड वाचिंग जेलर. एंड मैंने और क्या देखा है, मुझको याद नहीं आ रहा. प्रॉब्लम ये है कि मैं इतना कुछ देखती हूँ, मुझे याद ही नहीं रहता मैं क्या देखती हूँ. तो या Ma'am, have you watched? Okay, yes, that is also a good thing you pointed out. Thank you. These sessions are bliss. A hope for darkness, which we are all surrounded. I'm really grateful that I came across your channel. Thank you so much. और तुम ये जो बार अपना ID चेंज करते रहते हो ना, मुझे थोड़ी सी तकलीफ होती है. ठीक है, तो या ओके, आगे मोहित, वो तुम्हारा पढ़ लिया था. Why don't you do live sessions more often? Mohammed Sarmad, the reason I don't do so often is actually, why don't I do it? Okay, because one, you people will get bored. Two, every time I come, I'm sitting for 3 to my longest being 6 hours. Okay, I try to address every question. I somehow, and plus I'm working every single day except for weekends. I used to work weekends. I've stopped doing that. So anybody who's trying to contact me on the weekend, please, जब तक urgent ना हो, please मेरे को weekend पे text मत किया करो. मैं Monday को देखूंगी. But other than that, I started taking care more of myself, because during COVID and after COVID, I took so many cases. Sometimes 8 to 10 hours a day I was working, I burnt out. So now I take care of my physical and mental health, because क्या होता है जब तुम काम भी करते हो, तुम्हारा नेक पे, बैक पे, तुम्हारे ब्रेन पे सारा असर पड़ता है. तो max to max I take 2 calls per day. Then I reply to all DMs. Each DM, trust me, some DMs go to 30 minutes of voice messages I have to hear. Imagine 30 minutes unka suno, 30 minutes tum baat karo, so it's almost like a counseling session that you're doing. But that's why I get very tired. Plus I have started doing, I've started socializing more. I moved to Dubai, so mera social life bhi aa jata hai, mere bacche bhi hai, mera ghar bhi hai. Yeah, so itna time nahi milta. But I promised last 2 weeks back that I'll come every 2 weeks. I didn't promise nahi karna chahiye. I will try my best to come every 2 weeks. 2 weeks is enough. एक हफ्ते का तो ब्रेक ले लो मुझसे, बहुत थक जाओगे मुझसे. वही उतने ही प्रॉब्लम्स होते हैं. आज तो भी कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स आए थे, लाइक जो रेगुलर नहीं आते. नहीं तो वही हम सेम हमारा घिसा पिटा रिकॉर्ड चलता रहता है. So I was very very impressed today. I got
really unique things to address. So thank you for that. क्या तड़प तड़प के इस दिल का पता नहीं क्या गाना गा रहा है. हाय प्रसून कैसे हो? हाय हाउ आर यू? भगवान जाने कौन सा गाना है रोहित ये वाला. सक्षम हाय हाउ आर यू? बेसिक इंस्टिंक्ट क्या बेसिक इंस्टिंक्ट क्या है? मूवी. कैन यू प्लीज तू अपना क्या कर रहा है? तेरी और मेरी फ्रेंडशिप थोड़ा हम बाजू में रखें, हम हमारा काम करें. प्रोफेशनल चैनल है. रोहित की बातों का ये नहीं करना है. हम लोग बहुत सालों से दोस्त हैं तो हम लोगों का चलता है. अच्छा ओके. जूम पे जो भी मुझे लिख रहा है 2 मिनट में पहले यूट्यूब का एड्रेस कर लूं. मैटर ओके. क्या लिखा है? ओके. So I replied to Mohammed. Next question is, ma'am, have some water. Thank you, Abhishek. कोई तो मेरे बारे में सोच रहा था. मैं बिस्किट भी खा लूं थोड़ा. ग्लूकोज बिस्किट से थोड़ा ग्लूकोज एनर्जी आएगी. तुम लोग थोड़ा मेरे को एंटरटेन करो. चलो अच्छा कोई किसी ने मूवी रिकमेंडेशन मांगी है. सब लोग रेकमेंड करो इसके लिए. मेरे पास और रिकमेंडेशन नहीं है. Although Guns and Gulab is a fun series to watch, but I'm not sure was it section. But he was really whatever it was. मेरे को याद नहीं स्टोरी पर अच्छा था. एक मिनट. मैंने सुना है ग्लूकोज बिस्किट पानी में भी डुबा के खाते हैं. ट्राई किया जाए. No, the video is lagging, not just for you. Even I got your video signal is not good, but I can't do shit about it. Yeah, actually, it's not bad. It tastes like glucose biscuit, only softer. But I would still prefer chai and glucose biscuit. हाँ अभी ऐसा लगता है कि मेरे में थोड़ी एनर्जी है. मैं फिर और थोड़ा बात कर सकती हूँ. Ritesh, yes, I am YouTube live. Link is in the YouTube live chat. Not on story, not in community. That's the wrong link. Okay. अब हम थोड़ा जो पेट पूजा हो गया, पानी पी लिया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे. Is it okay to get married late? It's not only okay to get married late, it is okay to not marry also. Let's normalize things which we don't think is normal. You don't have to marry. You don't have to stay single. It's okay to get divorced. It's okay to break up. Everything is okay. Why? Because it's good for your life. It's important to understand something about your own self. Ki you don't owe anybody a bloody explanation. Why you're single? Why did you divorce? Why you're getting married late? Okay? अभी तुमको पता है मुझे कुछ बच्चे ऐसे थे. मैम आई एम 22, माय पेरेंट्स आर फोर्सिंग मी टू गेट मैरिड. मेरा तो ऑलमोस्ट मेरे को मैं तो अपनी बेटी को बोल रही 26 के पहले शादी भी मत करना, पहले अपना करियर को संभालना. तो मुझे तो लगता है करके देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग आंसर. तुमको जब शादी करनी है नहीं करनी है करो. बट जैसे मुझे जब आप लोगों को पता है आप लोग कौन है जिसने मुझे अभी रिसेंटली लिखा था कि हम पेरेंट्स को कैसे एक्सप्लेन करें कि हमें शादी नहीं करनी. किसी को कोई एक बंदा है जो he is educated but his parents want him to marry someone from the village. Now I am not looking down on the person who's from a village, please note this, nor is he. What he's trying to say is this. He's saying, what if my emotional intelligence and my IQ is not, it can never be the same anyway, we're all different, right? But when you are a couple, you need to have some conversation or you don't. Whatever work you're doing or whatever you're talking or the movies that you like, you have to have some compatibility. If that person is extremely orthodox, now being orthodox is not bad, I guess regressive is bad. But let's say somebody is extremely regressive and you are progressive. तुम लोग तो opposite ends पे हो गए ना, फिर आप लोगों की compatibility कैसी? तो फिर उसने बोला, then what? You have to stand up for what you want in life, including your partner. Why should you get married now? अब मैं please understand, मैं ये नहीं कह रही कि अपने पेरेंट्स की बात मत सुनो. प्लीज जब भी आप लोग कुछ सुनते हो ना, उसको एक्सट्रीम में मत लेके जाओ, बीच में आओ. Try to understand accuracy of thinking. Yes, you can listen to your parents. If you agree, you can listen and follow what they are saying. But if you do not agree, you have every right to put your foot down and say, hey, I love you. I really appreciate the thought that you have for me. I understand you mean well for me, but I have to live with the spouse that I choose.
You are not the person who's going to, you'll outlive your parents by 20, 30, 40 years. You have to marry the person you want to live with. Of course, I'm not saying it can still start blogging channel. Blogging मुझसे नहीं होगी, blogging भी नहीं होगी, मेरे को पहले ये एड्रेस करना. तो my answer in short, तुमको जो करना है वो करो. अपनी खुशी तुम्हारे हाथों में. This gift of life is yours. You use this gift as you want. We can love our parents, but we don't necessarily have to agree with what the society tells us. कि ये पढ़ाई, अभी शादी करो, तब भी करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो. आज तो LGBTQ वाला भी क्वेश्चन आया था. अब उसको बेचारे को, तुमको शादी की पड़ी, उसको कितना स्टिग्मा हैंडल करना पड़ता हो. तो लोग करते हैं ना, अपनी लाइफ के लिए, खुद के लिए खड़े रहते हैं ना. आप भी खड़े रहो. मुझसे ब्लॉगिंग नहीं होगी. मैंने कोशिश कर लिया. वो एडिटिंग करने में जो मेरा जितना आधा खाना होता है पूरा डाइजेस्ट हो जाता है. इतना एनर्जी एक्सपेंड होता है स्टूपिड एडिटिंग और उसको पैच वर्क करने के लिए. आई डोंट माइंड सिटिंग एंड टॉकिंग लाइक दिस. आई डोंट केयर इफ आई fumble, say the wrong words, don't pronounce the words correctly, everything is fine, but I cannot vlog. वो जो, और ऊपर से जो लोग मुझे देखते हैं ना, उनको लगता है मेरा दिमाग खराब हो गया. मैं तुम लोगों के लिए, अच्छा अभी मैं दुबई मॉल आई हूँ, अब मैं वो फाउंटेन को देख रही हूँ, अरे अब मैंने ये बर्गर खाया, ये बर्गर देखो. हमसे तो ना हो पाएगा. तुम अभी यूट्यूब, इंस्टा, एक सेकंड, जूम पे कुछ आया है, किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा है. मैम मैंने अपने जैसे एक एक्ट्रेस ढूंढ ली है, वो बहुत आप जैसी लगती. क्या? और जो आपके जैसे नहीं, तेरे जैसे नहीं. अच्छा, तुमने मेरे जैसी एक एक्ट्रेस ढूंढ ली है, वो बहुत आप जैसी लगती है. आयशा उमर. मुझे नहीं पता कौन है, बट चलो सब अच्छे होते हैं, तो मैं तो अच्छी हुई. तो तुम ऑफकोर्स मेरे से अच्छी तो तुझे लगेगी नहीं सारी. तो मजाक कर रहे हो. मुझे नहीं पता कौन है, बट ओके. I can see that somebody new has joined. In case you have a question, if you're new to this, sit, raise your hand if you want to talk. If you have a question, you can post. If you have no questions, you can just keep watching. Okay, now, okay. It's sad that people don't respect your time. क्या करो बालाजी, मैं वो पेंटिंग हूँ और वो आर्ट वर्क हूँ जो मेरे जाने के बाद ही मेरी कदर होगी, ऐसा लग रहा है मुझे. Okay, the beautiful butterfly effect. A beautiful mind. I have seen that. Very good movie. Good Will Hunting. Yes, watched it. Silence of the Lambs. Yes, watched it. Good ones. Go for Squid Game. Squid Game के साथ मैंने वो भी देखा, Alice in Borderland. Loved it. So please go watch that. Yeah, that's what I watched. Ma'am, please let me know if you will read the same Zoom chat. I've been waiting for some. अरे I replied बाबा, क्या तुम्हारा क्वेश्चन कहाँ है? एक मिनट, let me see, maybe I missed out something, is it? Oh, I'm sorry. क्लार्क, ये तो तुम्हारा मैसेज है, पता नहीं तो उसका ही होगा, एक ही मैसेज है यहाँ पे. I don't think I missed out anything, did I? I think, yeah, okay. नया क्वेश्चन. I want to review a decision of my life. It goes like this. I will invest in myself 1 lakh rupees for 1 year to train my body physically and get nutritious food, to travel, trek solo, to discover myself, to join public speaking classes and to attend some therapy counseling sessions. मेरा फ्री है तो उसमें से 1 लाख में से हम लोग तुमको एक्स्ट्रा पैसे मिल जाएंगे किसी और चीज के लिए. But anyway, if I fail to attend discipline and discover my true self and at least increase awareness of self, then I shall gracefully accept my fate and die happily. Extreme नहीं हो बेटा. Anyway, again, I'm getting a strong feeling that if not now, then never. I'm aware of my shitty state ever since 2020. I never actively worked on myself. Now I command myself of the terms. This will help me to stay away from my dick and hit the gym regularly, go out for a walk, journal daily, do my chores from the past 1 month, leaving me with 11 months to make more of it across life and death. Okay. First, I appreciate the entire idea of wanting better for yourself. So that's step 1. Step 2,
was self-awareness. You have understood that you have not been taking care of yourself in any sort of way. And yes, you need to stay away from masturbation and और क्या कर रहे हो, आपको हेल्थ पे काम करना है एंड ऑल दैट. ठीक है. मुझे तकलीफ यहाँ पे हुई ये वाले सेंटेंस में. If I fail to attain discipline and discover my true self, or at least increase awareness of self, then I should gracefully accept my fate and die happily. मेरी प्रॉब्लम यहाँ पे है. अगर से आपको लगता है कि एक जिंदगी का एक साल ही आप ये करोगे, जैसे एक डाइट वर्ड कर रहे हो तुम, ये डाइटिंग हो रही है तुम्हारी. नहीं, ये लाइफस्टाइल चेंज होगी. लाइफस्टाइल चेंज एक साल की नहीं होती. लाइफस्टाइल चेंज ओवर टाइम होती है और इसको डिसिप्लिन पे लाना पड़ता है. यस, हैविंग सेड दैट, ऐसा हो सकता है कि इनमें से, जैसे आपने कहा मैं ट्रेन बॉडी फिजिकली करूंगा, न्यूट्रिशियस फूड, ट्रैवल सोलो करूंगा, पब्लिक स्पीकिंग क्लासेस दूंगा. आपने लेट्स से कि आपने 6 महीना ही किया. ऐसा हो सकता है कि अचानक आपको रियलाइज होता है कि आपको ये नहीं करना है, आपको पब्लिक स्पीकिंग क्लासेस नहीं, आपको कुछ और सीखना है. लेट्स से आपको चेस खेलना सीखना है, या आपको एक नया म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, पर तुमने तो वो यहाँ नहीं लिखा है ना. तो ऐसा हो सकता है कि तुम लो फील करोगे क्योंकि तुम इतना अपने आप को पुश कर रहे हो कि एक साल मैं अपने आप को दे दूं, नहीं तो भाड़ में जाऊं मैं और जिंदगी मेरी ऐसे ही खत्म हो जाएगी. नहीं, ये एक्सट्रीम थॉट प्रोसेस. आपको एवरी सिंगल डे आप ट्राई कर सकते हो, बट देयर विल बी टाइम्स यू विल हिट अ लो, देयर विल बी टाइम्स यू विल हैव अ फॉल. आप गिरोगे, फिर से आपको खड़े रहना पड़ेगा. और यहाँ पे मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम हुई थी कि अगर से मैं एक साल में नहीं करूंगा, देन आई विल गिव अप. आपको गिव अप नहीं करना है. ऐसा हो सकता है कि इनमें से आप सिर्फ 20 या 30% करोगे. तो ऐसा क्यों नहीं है कि अपना 20 और 30% आप अप्रिशिएट करोगे? व्हाई इज इट ऑल और नथिंग? This is the problem. So you can stay in touch with me and you can connect with me. I can be till I'm counseling. Okay. I don't know when I'm going to give up what I'm doing, but till I am there in your life, I would not want you to quit. You're talking like a quitter in that sentence. I will accept my fate and die happily. No, we are, जब तक हम जिंदा हैं, हमेशा होप है. हमेशा हम बोल सकते हैं हमने ये ठीक से नहीं किया. परफेक्शनिज्म, ये तुम परफेक्शनिज्म के पीछे भागो कि मैं परफेक्टली करूंगा एक साथ. हो सकता है अपने पर फिर तुम ऐसे फिर से लेट जाओ. ऐसा थोड़ी है यार. ऊपर नीचे ग्राफ चलता रहेगा. मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल नहीं करो, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि बहुत ज्यादा करो. मैं बोल रही हूँ एक्यूरेसी ऑफ थिंकिंग लेकर आओ. ये ओवर द टॉप ऑप्टिमिस्टिक हो गया, ये टॉक्सिक पॉजिटिविटी हो जाएगी एक दिन. या तो तुम पूरे नेगेटिव हो या तो वहां चले गए. So let's try to work on being moderate in your thought process. And even if in a year's time you don't do all of what you did, I'll still be proud of you. But will you be proud of yourself? Because in this sentence, it shows that you're not proud of yourself there. That is the problem. You need to be still proud of what you have achieved. Even if you fumbled, you had some issues, you took 2 steps back and then 4 forward, and then 4 back and then 2 forward. Appreciate every time you go forward, because we don't have a consistent graph. There is no such thing. अपने आप पे इतना भी अपने आप को प्रेशर में मत डाल कि मैं नहीं करूंगा तो मैं अपना फेट एक्सेप्ट करूंगा. So I hope I have answered your question, and DM me. You seem to be you're a good person, as what I get from you, from what you've. So you are there already, okay? And I actually don't gauge people or measure. Some people who are watching me, if he's still watching me, he knows I don't gauge things materialistically, or I don't get starstruck. And for me, what you wrote here, what a person is achieving in his mental health or helping others, I would rather look at that. So relax. Don't be so hard on yourself. And yes, we'll continue this topic, but do take a snapshot of this thing, because it is possible that I will, because I address so many things. I can't remember every question that has been asked to me. Okay, so I hope I have replied to you, and I'm sorry that I replied late, because ये chat जो इतना fast जाती है ना, तो मुझे समझ में नहीं आता मैंने क्या miss out किया था.
और अगर से तुम 3 सोशल मीडिया पे बैठे हो, जूम पे, इंस्टा पे और यूट्यूब पे, हो ही जाता है कि तुम्हारा मिस आउट हो जाता है। अच्छा, तुम लोग को पता है हम लोगों ने कितना घंटे काम किया आज? 4 घंटे हो गए हैं। ओके, नॉट बैड। ओके, मैंने क्या मिस किया अभी? नितिश, आई रिप्लाइड टू यू, मैम व्हाई डू गर्ल्स लाइक बैड बॉयज? मुझे भी समझ में आती है कहाँ से कॉन्सेप्ट आया। बिकॉज आई टेल यू समथिंग, जितने मुझे लिखते हैं, ओके, ऐसा नहीं है कि दे लाइक बैड बॉयज। इंस्टेड जो भी गर्ल्स मुझे कांटेक्ट करते हैं, यस इनिशियली ऐसा उनको लगता है क्योंकि वो भी वैलिडेशन और अप्रूवल के लिए घूमते हैं ना, तो पॉपुलर होता है। आप लोगों को भी तो पॉपुलर लड़कियां अच्छी लगती है, गर्ल्स की क्या बात करें, आप लड़कों की बात कीजिए। जो सबसे प्रिटीएस्ट गर्ल है रूम में, जो सबसे पॉपुलर लड़की है, जो सेक्सी है, आप लोगों को उनका अटेंशन चाहिए कि नहीं? आप उनको गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो कि नहीं? तो ये लड़कियों का क्यों नाम खराब करते हो कि व्हाई आर दे आफ्टर बैड बॉयज? आरंट यू ऑल आल्सो वेरी सुपरफिशियल इन द पीपल यू लाइक? डू यू ऑल रियली सी किसका दिल कैसा है, वो इंसान की फितरत कैसी है, कितना हेल्पफुल है, कितना थॉटफुल है? क्या आप देखते हो क्या? नहीं ना। आप भी तो ऊपर से ही देख रहे होते हो। लड़कियों का भी ऐसा ही है, उनको लगता है करके पॉपुलर बॉय उनको लाइक करेगा तो उनकी वर्थ इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उनकी खुद की सेल्फ वर्थ गंदी है। और फिर बाद में जब वो टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस जाते हैं, ट्रॉमा बॉन्डिंग हो जाती है, फिर रोने लग जाते हैं। आप लोग भी तो, कितने लोग एक तरफा प्यार में कैसे अटकते हो फिर, जहाँ पे आपको वो इंसान भी अच्छी नहीं है, राइट? आपको अगर से पता है कि कितने बार मेरे साथ ऐसे आंसर्स, क्वेश्चन आंसर सेशन में लड़की वैल्यूएबल भी नहीं है, लड़की अच्छी भी नहीं है, पर आप लोग फैंटेसाइज करते हो। अगर किसी एक अच्छे इंसान का आपका दिल आया, मुझे समझ में भी आता है, पर अगर से वो इंसान अच्छा भी नहीं है, पर आप लोग भी तो सेम करते हो, तो व्हाई इज दिस दैट वी आर ओनली टारगेटिंग गर्ल्स? Men are equally shallow when they want to be. I'm not saying all men, I'm not saying all girls. So please remember, I don't play the gender game. I don't like it. I don't dislike anyone per se unless they're terrorists, murderers, and all of that. Otherwise, we all have our plus and minus. And yes, for that high, for that kick, many a times we do things in life for the fantasy of it all. Oh, this guy is cool. We all like cool people, right? Don't we? And we ourselves put ourselves in that kind of spot and then we regret. It's okay, lesson and learning in life. And Clark, you're back, and I hope I replied your question. And if you have anything, please Zoom में या DM कर देना. Ma'am, I think money is my magic potion in this case because I'm fully leveraging it. As I was always stingy, I won't bother you anymore today. I see you're totally exhausted. Yeah, please DM me because you need extra work. And I don't want to shortchange your, my replies to you. I want to be on point and I want to hear from you. I don't want to know you only through text because I want to. I'm sure what again you're saying yes, कभी-कभी जब हमारे पास बड़े होते हैं, टाइम पैसे नहीं होते, तो हम मनी और हमारे को सारा टाइम बोलते हैं men should work, men should have money, men को फैमिली देखना है। आप लोग उस दर से भी तो आ रहे हो ना, तो तुमको ब्लेम भी पूरी तरह से नहीं करा जाता, बिकॉज तुम्हारी वर्थ पैसे से की जाती है बहुत हद तक। तो दैट इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट पार्ट, राइट? और उससे आपको ब्रेक फ्री करना होगा खुद ही, नहीं तो पगला जाओगे। कितना कमाओगे, कितना टाइम तक कमाओगे, वेयर डज इट स्टॉप? कितना पैसा चाहिए? ऊपर नहीं लेके जा सकते, सो नहीं सकते, खा नहीं सकते, पीसफुल नहीं हो, तो इतना पैसे का क्या करोगे? सक्सेस इज नॉट मनी. सक्सेस इज बीइंग रेजिलिएंट, इज बीइंग कंटेंट, is not playing victim, is learning to accept things, is learning to accept challenges. Success is when you are learning to grow, even when the price is very high. Success is a lot many things. It's to learn how to be peaceful, learn how to solve your problems with a solution rather than solving your problem with a problem. There's so many definitions, the deeper meaning of success, which you people don't understand. जिस दिन एक दिन पैसा आएगा आपको तब समझेगा सक्सेस वो भी होते हैं जब हम रोज अपने लाइफ का ध्यान रखते हैं, अपना हेल्थ का ध्यान रखते हैं, हमारा मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, हमारा स्लीप। पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता। पैसा इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, हम सबको चाहिए, जिनको होता है उसको भी और चाहिए। एक गुची खरीद लिया, दूसरा प्राडा खरीद लिया,
उनका कभी खत्म ही नहीं होता। नीड्स और वांट्स में डिफरेंस करना सीख लो। वांट्स लोगों को नीचे लेके जाता है, क्योंकि फिर तुम कभी खुश नहीं रहते हो, जितना भी है इनफ नहीं है। और देयर इज नथिंग रॉन्ग इन वर्किंग हार्ड, बट अगर से तुम्हारी वैल्यू सिर्फ तुम्हारे पैसे से आती, जिस दिन कम होगी तो फिर क्या हो, कहाँ से आएगा वो पैसा? वो हैप्पीनेस कहाँ से आएगी आपकी लाइफ की, जब आपको पैसे उतने नहीं होंगे? एक ना एक दिन तो आप रिटायर होंगे। नॉट नेसेसरी कि आपका रिटायरमेंट फंड इतना ग्रेट है कि तुम्हारे पास मैंशन है और बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, फिर क्या करोगे? सोचो, जब तुम्हारे पास उतना ही इनकम है, फॉर द लेट्स से आप 60 इयर्स में रिटायर करते हो, एंड लेट्स से यू लिव टिल 85, आई एम बीइंग पॉजिटिव राइट नाउ बिकॉज आजकल हेल्थ केयर इतना अच्छा है। आपकी लाइफस्टाइल जो अभी है शायद तभी नहीं होगी, आपको डाउनग्रेड करना पड़े, अनलेस आपके आपकी इनहेरिटेंस बहुत ज्यादा है, आपके पेरेंट्स ने आपके लिए बहुत पैसा छोड़ा है। बट लेट्स से कि हम जैसे लोग, जैसे हमारे को हमारे पेरेंट्स ने कुछ नहीं छोड़ा, आई नेवर हैड अ बिजनेस, नथिंग, जो हमारा है हमारा, तो आई हैव टू डाउनग्रेड फ्रॉम द काइंड ऑफ लाइफ आई हैव नाउ। आई एम लिविंग इन अ गुड हाउस, परहैप्स आई हैव टू डाउनग्रेड इट, देन आई शुड बी अनहैप्पी बिकॉज आई डोंट हैव व्हाट आई यूज्ड टू। अगर से किसी चीज से ऐसा हैप्पीनेस सारा टाइम अटैच करोगे, स्पेशली मटेरियलिस्ट थिंग से, गारंटीड दुखी रहोगे, क्योंकि हमेशा हमको सब कुछ नहीं मिलता दुनिया में। अगर से हमको इम्पोर्टेंस नहीं आई कि हमारा हेल्थ इम्पोर्टेंट, लव्ड वंस इम्पोर्टेंट है, सारा टाइम कंपटीशन में पागलों की तरह अपने आप को पागल करना। अभी जैसे कभी अंबानी सबसे रिचेस्ट बंदा है, तो कभी कोई और बंदा है, उनके भी टेंशन होंगे लाइफ में, पर्सनल प्रॉब्लम्स उनके, टू मेंटेन दिस लाइफ, दे विल आल्सो हैव हेल्थ प्रॉब्लम्स। उनका दूसरा बेटा कितना ओवरवेट है, उनको भी कितने प्रॉब्लम्स है। तो जरूरी नहीं जिनके पास पैसे है सबसे खुश है, पर जरूरी ये नहीं कि क्योंकि पैसे है तो खुश नहीं है। जरूरी है कि वी नीड मनी, ऑफ कोर्स वी नीड मनी। इट आई बी स्टूपिड टू से दैट यू नो एक हट ले लो और माउंटेन पे जाके यू नो अपना सारा त्याग करो। मोस्ट ऑफ अस कांट डू इट एंड दैट्स फाइन। वी नीड मनी, वी नीड like I'll tell you, we women like to shop for lipsticks. I have now decided deliberately not to pick up any new lipstick. Why? Because I have enough. So I am learning to understand, do I really need it? I could want it, but do I really need it? No. So this is very important to tell the difference between these two. And it's okay if you think your magic potion is money. Maybe you come from scarcity, okay, you didn't have enough. But वो जो scarcity वाला mindset है, do Google that and read up on it, कि पैसा खत्म हो जाएगा, या it's not enough, never enough, right? I need it, I need it, I need it. नहीं है, नहीं है, नहीं है, वो भी आपको अंदर से, it will keep you always very, very stressed out. And you're still young, so I can understand, because many of you all are just running after money, and I don't blame you. तुम लोगों की वैल्यू ही तुम्हारे वॉलेट से आती है। और अगर से तुम लोग पढ़ते हो, कितनी बार ऐसा लिखा जाता है ना कि ओ men are like ATM। देखो ना, तुम लोग की वैल्यू भी बाहर से भी जब कभी भी कोई कमेंट करता है, ऐसा ही करता है। तो although I don't blame you all for thinking like this and wanting more money for yourself to have a better life, but be careful. हर चीज मॉडरेशन में करोगे, लाइफ को भी एंजॉय करो। ऑफ कोर्स वी नीड मनी टू ट्रैवल। I don't like flying, but I love to travel. So yes, I wish you a lot of happiness. I wish you that you will understand what it's to be. If you watch my last podcast, there was a poetry which I read by Chandresh ji, sorry, and he explained what is contentment. I wish you that. I don't wish you happiness, sorry. I wish you contentment, ananda, which is so वो पैसा और नौ पैसा के बिना जब वो आता है ना, समझ लेना तुम सक्सेसफुल हो गए। ठीक है, ओके नेक्स्ट। आप कैसे हो? यस वी कैन टॉक, ऐसा ना, ये कभी नाम सुना है तुम लोगों ने? यस वी कैन टॉक, ये इसका आइडिया है। यस वी कैन टॉक। मैं कैसे हूँ? मैं ठीक हूँ। और क्या? आई वांटेड टू टाइप अ मैसेज, जस्ट नीड टू नो शी इज ओके, इज शी ऑन अ क्लोजिंग नोट? नितिश यू कैन राइट एनीवेयर, जहां भी स्टार्ट राइटिंग। Okay, I address that maybe because people don't know you and your degree, they just keep showing that what
I don't know, Prashant, what was this related to? Maybe because these people don't know you and your dignity, so they just keep saying, showing what they got from a random woman on the internet. Yeah, don't generalize. They're good women also, they're good men also. आप सब कितने अच्छे हो यार, all, and there are women also following me. So all of you, okay, क्या जॉन रो मैम अटैचमेंट स्टाइल्स के बारे में बताइए and how it is related to childhood and the love. भी करना जरूरी, मैं ब्रीफ में बताती हूँ, ठीक है. व्हाट इज योर प्रोफेशन? आई मीन आर यू वर्किंग इन दुबई? नो, आई वर्क ऑनलाइन. आई एम अ काउंसलर, आई एम इमोशनल वेलनेस काउंसलर, सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर एंड अ ग्रुप काउंसलर. If you have counseling queries, not career counseling, I do a bit of career counseling when people are confused or they're not staying steady in a career and job loss हो गया है. So anything emotional wellness related. Okay, attachment styles. Avoidant, anxious, then obviously very few are secure attachment styles. क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एक इंसान completely secure होता है अपने, especially लव जिनको होता है, जिनको ज्यादा रोमांटिक जो लोग होते हैं. मैं प्रैक्टिकल लोगों की बात नहीं करूंगी, मैं रिलेशनशिप्स की बात करूंगी. मोस्ट ऑफ अस आर एंशियस एंड मेनी ऑफ यू ऑल आर also avoidant, क्योंकि some people के avoidant attachment style वो होती है कि जब हमारे पास कोई होता है हम उनको avoid करते जाते हैं. तो मेरे हिसाब से मोस्ट ऑफ द टाइम हम मिक्स स्टाइल्स दिखाते हैं. हम एक पर्टिकुलर स्टाइल में अटके पड़े नहीं रहते. कभी कभी हम बड़े सिक्योर होते हैं, कभी बड़े इनसिक्योर होते हैं, तो मिक्स होते हैं. हाँ, बचपन से ऐसे रिलेटेड होता है कि, पर अगर से आप रिसेंट रिसर्च पढ़ोगे, देयर इज स्टिल अप फॉर डिबेट. दिस टॉपिक इज वेरी मच अप फॉर डिबेट. व्हाई? बिकॉज क्या होने लग गया है कि लोग use this attachment style theories to make excuse for their behavior. They don't want to fix it. They want to say, okay, so I had a bad childhood, right? I'm fearful, therefore I'm avoidant. I can ghost the person. I'm anxious means I'll even though my child, I'll talk about my own child. Even though I would see that she has one of the most secure parenting a child could have, because we talk about all the problems. I'm not saying I'm a perfect parent, but in our house, we talk about every problem. We address a lot of things. She has a boyfriend, I know about it. She has a breakup, I know about it. Yet, having said that, when she was in a relationship, there was a time she kept calling this person when he was angry. Okay, many of us do that, right? जब हमारा को, तो मेरे को मेरी बेटी को समझाना पड़ा कि you are getting anxious. This is your reaction to the fear that you have that this person might break up, or this person, why is he not answering? At that time, you want that person to. So and yes, she's very young. So when we are young, we do a lot of stupid things. बड़े लोग भी करते हैं, छोटे लोग क्या बात है. तो I had to teach her that. Then the boyfriend, because he never was in a relationship. And he was avoiding the calls and he would avoid discussions and he would say fuck it, like that way. So then it shows कि उसको आदत नहीं है. He wants to just not get, because his fear of loss भी तो होता है. जो avoid करते हैं उनको ये टेंशन है करके हम बहुत नजदीक हो जाएंगे किसी के, तो हमको वो फेस करना पड़ेगा कि वो हमें एक दिन छोड़ के चले जाएंगे, राइट? हम फीलिंग्स को नहीं एड्रेस करना चाहते. तो यस, लॉट ऑफ थिंग्स वो बोलते हैं, जो साइकोडायनामिक थ्योरी जो मैं समझा रही थी, जो हमारा पास्ट होता है, हमारे लर्न्ड बिहेवियर जो होते हैं, हमारे अटैचमेंट जो, अब दो चीजें होती है. अगर से आप एक, I don't like to call it broken family, nor do I like to call it a dysfunctional family. जब पेरेंट्स सेपरेट होते हैं, डिवोर्स होते हैं, yes, you can say कि फैमिली, रेगुलर फैमिली जो हम लोगों को कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है, माँ बाप एंड 2 बच्चे या जितने भी बच्चे एंड एवरीथिंग इज हंकी डोरी. लेट्स से पेरेंट्स डिवोर्स हो गए, या लेट्स से बचपन में, ऑनेस्टली लास्ट 2 दिन जो मेरे को केसेस आए हैं कुछ बच्चों के, और जो I'll address it हिमांगी once. So अभी लास्ट 2 आए, you won't believe, वो बच्ची सब्जी ले रही है पैन में, माँ बाप बोल रहे हैं क्यों खा रहे हैं इतना, वो उसको इग्नोर करते हैं, उसका मेंटल हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं, उसको बार बार बोलते हैं व्हाई आर यू अलाइव, वी शुड हैव नेवर हैड यू.
ये जो किस्म के पेरेंटिंग होती है ना, प्लीज ऑल ऑफ योर हु आर वाचिंग मी, डोंट टॉक टू योर चिल्ड्रन लाइक दिस यार. लाइक उसको बोलते तू मर जा, और उसके कपड़ों पे खर्चा नहीं करते हैं, उसको बोलते हैं वी कैन नॉट गिव यू मनी, बाकी 2 बच्चों को दे रहे हैं. तो फक यार, ऐसा कौन पेरेंटिंग करता है. और एक केस है अभी मेरे को, क्योंकि आज ही आया, मेरे को इतना केस याद नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने उसको बोला था रिप्लाई टू लेटर, मैंने इतना लंबा पैराग्राफ था, पर मेरे को समझ में आ गया कि पेरेंट्स के साथ इशू चल रहा है. तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसे जब बच्चे होते हैं तो 2 चीजें होती है, या तो वो ग्रो अप होते हैं ये देखते हुए कि हमें कोई प्यार नहीं करता, उनको ना प्यार चाहिए होता है और उनको डर लगता है प्यार करने से, उनको लगता है करके सब उनको ऐसे मिसट्रीट करते, या तो वो सारा टाइम प्यार के पीछे भागते रहते हैं, कंसिस्टेंसी, स्टेबिलिटी. तो ये सब अभी कोई एक आंसर नहीं है इसका, जो आपने क्वेश्चन पूछा. हाँ होते हैं, स्टाइल्स होते हैं, पर क्या हम इंसान इतने साइंटिफिकली प्रोपोर्शनेट, इतना परसेंट ये उतना परसेंट वो नहीं हो सकता ना, क्योंकि सारे डायनेमिक्स, सबके पेरेंट्स अलग है, सबके डायलॉग्स अलग है, हम हर इंसान का सेंसिटिविटी अलग है. जैसे मेरे भी पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ था, राइट. तो I can see that it has affected me as a person, but I have learned to address it, and I've learned to come to terms with certain elements, and some things I have changed. Like I have changed my learned behavior of getting over the top stressed with my children, which my father used to do. But I know that because consistency nahi thi when I was growing up, okay, for me in any friendship or anything in life, I can see I need to be on point on that. If I see any friendships which are not like, then I had to learn to compromise. I had to learn ki, okay, like when growing up, when you have this कि कंसिस्टेंटली आपको प्यार नहीं मिल रहा है, कंसिस्टेंटली कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, तो या तो तुमको 0 कम्युनिकेशन चाहिए होता है, या तो आप बीच में भी कर सकते हो, या तो आपको बहुत ज्यादा चाहिए होता है. अभी किसी चीज का आंसर नहीं है किसी के पास. क्यों? क्योंकि हम कितने अलग हैं. हम सेम सिबलिंग्स भी, हम 3 सिबलिंग्स जो थे, हम तीनों ने डिवोर्स को इतनी अलग तरीके से प्रोसेस किया है. कोई एकदम एक्सट्रीम पे, इस एक्सट्रीम में, कोई बीच में है, कोई किसी को एक चीज याद है, किसी को उसके बारे में, लेट्स से एक ही मेमोरी को हम तीनों अलग अलग तरीके से याद करते हैं. सो दैट इटसेल्फ टेल्स यू कि देयर इज नो सेट आंसर. सो मेरे हिसाब से डोंट hi, how are you, Kavi and Kali, long time, how are you, long time no see. So I would suggest, no matter what styles you have, let's say that you are anxious and you're in a relationship, learn to control your anxiety about your partner. Try not to be over possessive, try not to control them too much. Don't become a helicopter girlfriend, boyfriend, husband, wife, whatever. If you're avoidant, let's say you avoid becoming attached with the fear कि maybe this person will leave me, but that anybody is going to leave you, right? So what, all your life you don't want to love anyone, you won't let anyone love you. So learn to deal with the aches and pains and the heartaches and the stress that comes with it, but it takes time. हम कुछ लोग हम बहुत डरते हैं to express, to love, and in fear of losing that one day. सब लोग जाएंगे, हर चीज की एक्सपायरी डेट होती है, तुमने तो सुना होगा, इस बिस्किट की भी होती है, इंसान की भी होती है, रिलेशनशिप्स की होती है. सो बेस्ट ये है, अपने आप से जितना हो सके लव योरसेल्फ, बी कंफर्टेबल विद योर ओन सेल्फ, लर्न टू अंडरस्टैंड व्हेन यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, ट्राई टू फिक्स इट एज मच एज पॉसिबल, डोंट एक्सपेक्ट योरसेल्फ टू बी परफेक्ट, ट्राई टू एम कि ओके, इफ आई यूज्ड टू डू दिस, now I'm doing that, then I will go more. Don't try to jump. It takes time, personality changes. But having said that, don't blame your parents for every damn problem that you have. They are trying to do their best. Not all of us are perfect. Nobody is. Your parents are not. They are not God. They don't know any better. There is no counseling. There is no way. Nobody has been taught. Nobody has been taught how to raise children, what to say to kids, how to say it. Nothing has been said, right? So मुझे तो लगता है शादी के पहले
मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, इन लॉज को एक काउंसलिंग होनी चाहिए, हस्बैंड वाइफ को काउंसलिंग होनी चाहिए, बच्चे होने के पहले पेरेंट्स को काउंसलिंग होनी चाहिए। ये सारे एक बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि वी कैन डू बेटर। अभी आपके खुद के पेरेंट्स इतना बैगेज लेकर आए, उनके पेरेंट्स उनके साथ कैसे बिहेव कर रहे थे, उनका लर्न बिहेवियर्स क्या है, उनका अटैचमेंट स्टाइल्स क्या है, उनके कम्युनिकेशन स्टाइल्स क्या है, वो फाइट करते हैं, फ्लाइट करते हैं, फ्रीज होते हैं, फोन करते हैं। तुम्हारे पेरेंट्स भी तो तुम्हारे जैसे ही हैं, तो कैसे वो ना करें इसे? तो प्लीज समझो, पर उनको ब्लेम करना बंद करो। मैंने भी ऐसा गलती किया था बचपन में, पर मैं जैसे बड़ी हुई मेरे को समझ में आ गया वो हम जैसे ही फ्लॉड इंसान है, उनको नहीं पता, दे ट्राई टू डू देयर बेस्ट एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट, no matter what attachment style, no matter what personality flaws we are. The faster we stop blaming other people and taking responsibility for who we are and what we are. I'm not saying that if your parents are extremely toxic and they're not great people and you're not happy, earn money and yes, you can move on. I am not telling you to live with them, but I'm saying take responsibility for your life. आप अगर से अभी छोटे हो, थोड़े सालों में कर लेना, but stop playing victim. The more we play victim, the more we play victim to our circumstances and self-pity, self-loathing. We keep this wallowing सारा टाइम अपने आप पे, अपने circumstances पे रोते रहना, अरे मेरे साथ ऐसा हुआ, अरे मेरे नहीं, क्या हो उससे? अगर से प्रॉब्लम सॉल्व होती तो मैं तुम लोगों को बोलती, हर टाइम नहीं होती, ठीक है? सो ऐसा नहीं करना। Ma'am, have you answered that question? What question? I don't know which question. Please write the question again. Himangi, hi ma'am. Is it okay? I'm dating a person. He wants to keep many options and want many girls to be obsessed with him. But haven't I answered this question in DM? But amongst everyone, he likes me the most. Get ready for heartache, baby. Till he starts liking somebody else and he wants to keep. See, if he's not committing and he wants to be in an open relationship, fine. But if he's committing to you, if you're okay with him cheating, it's your life. Who am I to tell you what to do? But if he likes you the most, what? See, options की तो कभी कमी नहीं है ना। जो भी हम में से कमिटेड होते हैं, फाइनली हमको बेटर ऑप्शंस तो मिल सकते हैं, यहाँ से वहां से। स्टेबिलिटी कहाँ से आती है? तो आप देखिए, आपको ऐसे लड़के के साथ जाना है तो जाइए, फिर जब आपका हार्ट ब्रेक होगा आप मेरे पास फिर से आ जाना। और देखो, लड़कियां भी ऐसे करती हैं, मल्टीपल बॉयफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड 2, बैकअप प्लान A, बैकअप प्लान 2, लड़के भी करते हैं, पर लड़कियों का भी नाम ज्यादा खराब होता है इस बात में। देखो, जब तक आप लोग कमिटेड नहीं, आप लोगों ने रिलेशनशिप के लिए या आप लोग की शादी हुई है, तब तक मुझे समझ में आता है। बट बी ऑनेस्ट, बी अपफ्रंट। आई लाइक इट दैट ही इज ऑनेस्ट, एटलीस्ट ही इज टेलिंग यू दैट आई एम कीपिंग माय ऑप्शंस ओपन, बिकॉज it's possible that you are not the one he wants to finally live his life with, or those girls. As long as everybody knows, okay, that I am just looking for options. It's like आजकल of course variety कुछ ज़्यादा है, बुफे चल रही है। If you're not okay with it, because many people will not be okay with this. It's not easy to say, oh, my boyfriend. If he's not your boyfriend, then it's okay. But if he's saying he's your boyfriend and you're his girlfriend, many of y'all are not okay with being polyamorous. Many of y'all are not okay with being in open relationships. So there's no right and wrong answer. Choice is yours. It's an open field. So he should be also okay. There should be no double standards. He should be okay with you talking with multiple boys and like him the most. I like it जब equality हो. Of course, सारा time नहीं होती, because some of us cannot do that, which is fine. But if required, if you want to adjust and compromise, it's okay. Many people who are only one partner is polyamorous and the other is not. Many people deal with it because they love the person so much, or they like the person so much, so they deal with it. Many people are in open relationships. That is also fine. There is no right answer. वो करो जिससे आपको खुशी मिलती है, but be prepared to hurt. That can happen in any relationship, with this dynamics or any dynamic. Okay, क्या हम अभी जा सकते हैं? 4 घंटे होने आए हैं।
मैं लास्ट एक क्वेश्चन आंसर करके हम जाएंगे, ठीक है? मैम इज सेइंग ही नीड्स 1 year टू फिक्स हिज इशू. अभी कुछ साल मांगे. आई रिप्लाई टू यू बेटा, व्हाई आर यू आस्किंग मी दिस? I wish I could just go and check my DM. I think I have given you a long answer on this. So hi Abhishek, I'm well, how are you? I can't add you, Aryan. I tried anonymous Aryan. Everybody who's been trying to go live on Insta, I cannot. It doesn't work on Insta. Since I've been in Dubai, please avoid it. Okay. So Prashant says thank you for that. Attachment style. Okay. Enjoy your live stream, ma'am. I will contact you for help as I need it badly. My pleasure. On point. I just don't have Insta ID. That's why I asked your Gmail. Yeah, but I need an Insta. Like I explained, ma'am, क्या free counseling देती है? Genuine cases. अरे genuine, कुछ कभी-कभी fake cases भी आते हैं. मैं सबको मदद करती है. ऐसा कोई नहीं है. But as long as possible, मेरा वक्त ज़ाया मत करो. अभी rant कर सकती हूँ किसी के बारे में जो मेरे को stupid questions पूछ रहा था, और मैं बहुत टाइम तक मैं शांत रही. फिर मैंने उसको बोला प्लीज स्टॉप आस्किंग मी वियर्ड क्वेश्चंस. आई हैव टू मेनी क्वेश्चंस व्हिच आर एक्चुअल प्रॉब्लम्स. सो या, प्लीज डोंट राइट टू मी इफ इट्स इनएन dumb shit. Please understand, my time is limited. I cannot address era gera nethu kera questions. अगर से आप सच्ची में तकलीफ में हो, आपको सच में कोई इशू चल रही है, I'm always there for you, but please respect my time, okay? Thank you so much, ma'am, for your nuance and detailed explanation and with beautiful examples. Thank you so much, my pleasure. क्या आप मैम इनको इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो? Yes. जैसे बालाजी ने कहा, जब किसी प्रोफेशनल को आप कांटेक्ट करते हो, रिस्पेक्ट करो, फॉलो करो, प्लीज लिखो, थैंक यू लिखो. हम लोग को आप रिस्पेक्ट नहीं करते, हम लोगों को बुरा लगता है. हम भी इंसान, स्पेशली मैं तो कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हूँ. क्यों? क्योंकि काउंसलर कैसे बनूंगी अगर सिंपैथी नहीं है, सेंसिटिव नहीं हूँ, इमोशनल नहीं हूँ. एक सख्त दिल या हार्ड हार्टेड इंसान थोड़ी आप लोगों के साथ 4-4 घंटे ऐसे बैठ सकता है, राइट? I can't add you live. Please understand. Yes, ma'am, you have addressed my question. But yesterday he told me all this in detail when I asked him what does he exactly want. Okay. Yes, I am getting old. I am old. I'm not getting old. I am. Hi, ma'am. How are you? I'm fine. I'm not okay with this because I'm feeling like I'm on none of his options. If you're not okay with it, then set your boundaries. Ma'am is saying he needs 1 year to fix his issues. अभी कुछ सालों के लिए he wants बहुत सारे options or girlfriends. So he's right in his seat. There's no right and wrong, as I explained. Please understand, two states can coexist. You are right in your space by saying I'm not okay with it. He's right in his freedom of choice of saying कि I want to check before I settle down with one person. I want to see the call. Although these kind of people करते करते भगवान ही जाने फाइनली किसके साथ सेटल होंगे कि उनको जो अच्छा इंसान है वो सकते हो. आप फोर्स नहीं कर सकते किसी को. You cannot force someone to see your point of view and you can't see his point of view. Maybe you're the wrong person, and the sooner you realize and you get away from this, it's better for you, right? So all the best and God bless you. Okay guys, I need to go please. 4 घंटे से मैं यहाँ बैठी हूँ. मेरा तो कमर मैं Zoom पे कुछ नहीं आया था ना. Okay ma'am, enjoyed the live stream, some more different. Thank you for giving me so much precious time. My pleasure, bacha. God bless you. Okay, before I leave, I want you all to know this. I'm grateful for all the support and all the love that you give me every single time. I'm talking not to everybody, but the ones who actually do it genuinely. Thank you for being here. Thank you. Some of you all have been through this entire live stream. That's really, really sweet. Yes, Imangi, I will check your DM tomorrow or something. अब मैं थक गई हूँ 4 घंटे से यहाँ बैठ के, और प्लस और भी DMs आए हैं, तो प्लीज मुझे थोड़ा वक्त दीजिए. And yeah, it's for you, especially Imangi, it's not easy to walk away. But if you don't, then learn to deal with it. Choice is yours. What do you want to do? हम अपनी word decide करते हैं, हम boundaries set करते हैं. If someone is treating you like shit, you are letting them. But
he's right in his own point. I can't do anything. I don't know anything. So what can I tell him? Unless you want to come for couples counseling, that will be another thing. Okay, Ronak. Okay, thank you. I really need your help. I'll contact you. Yes, please, Ronak. Do come. आज काफी नए नाम पड़े हैं जो लास्ट स्ट्रीम्स में नहीं हुआ करते थे. एक काम कीजिए, नए वीडियोस पे कमेंट जरूर करना. सारे the reason that I made video I want to watch because that's why I made the videos. आप लोग देख के मुझे को लर्न लिंक चाहिए था. What I posted it, I realized the video because मेरे दिमाग से निकल गया था. Please recheck it. अभी आगे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया. Oh, Aryan, you're back. I was about to leave better. Okay, Saryan ने लिखा all pleasure. Pray for you and my family and also my family. I pray for you all also. God bless you all. हाँ, आर्यन मेरे जाने का वक्त हो गया बेटा. मैं 4 घंटे से यहाँ बैठी है, तू अभी आया है. हम नेक्स्ट टाइम मैं वही बोला ना, अभी आके like I just went out to say I'm like अभी तक आप लाइव हो. मैं जाके पूरा मेरा होके वापस गया. Genuinely I am tired. Yeah, I know. और पता है मैंने by the way, लोग मेरे डाइट के बारे में कभी पूछते हैं. So this is what I eat almost every evening. Piece of salmon and an egg. That's my dinner. Okay. Or of course, जो लोग smoke. हाँ क्या? I have much more than that around me right now. I have chips. I have mushrooms. Birthday. But I'm just saying to stay healthy. So because see. वेट लॉस बहुत डिफिकल्ट होता है, तो उससे बेहतर पहले ही मेंटेन करो. एंड इट्स नॉट इजी, बट तेरा बर्थडे इसलिए तुझे अलाउड है. अदरवाइज यू हैव हेल्थ इश्यूज. यू आर ऑलरेडी यूजुअली आई हैव ट्राइंग टू लूज वेट. सो मेरा वेट 103 हो गया है. मैं maybe twice your age, okay, or more, and I am not. I'm like I must be like 30-40 kgs lighter than you. I thought I must have lost a bit of weight because मैं exercise कर रहा हूँ, मैं walking वगैरह कर रहा हूँ रोज, and मैं healthy खाना खा रहा हूँ, proper नींद भी ले रहा हूँ. Like so, I organized a blood donation camp on Engineers Day through my NGO. तो वहाँ पे मैंने भी blood donate किया. मैं blood donate करने के लिए wait करने गया, and I'm like 103. I was so shocked. As if you didn't know. नहीं, I knew it's high, but 100 के ऊपर था. I was like, बाप रे. So I thought कम होगा. नहीं, वो तो हो गया बाप रे. After the weight पता चल गया, अब क्या? The thing is, I have no time to do anything. I go to college at like 8 in the morning. Sorry, you already made an excuse. You don't want to lose that weight, don't. But if you are going to tell me that in 24 hours you don't have 45 minutes for your health to lose weight, to eat healthy. I am नहीं, मैं exercise कर रहा हूँ. Exercise मैं कर रहा हूँ. उससे मेरी weight, I don't know why I'm not. जो chips विप्स जो अनहेल्दी खा रहे हो उसको कम कर. और किसी ने पूछा do I smoke? ये No, I आज खा रहा हूँ. smoked in my life. I don't plan to smoke. And all of you who are smoking, please quit smoking. No, I don't smoke. And sorry, live Insta, I know बंद हो गया था. हाँ क्या? So you start taking care of your health. You already have heart issues. Okay? You're what? नहीं, वो like eating वगैरह तो healthy है. But I spent 13 hours in college. Acha, Sarim is saying, can I tell him some medicine if you allow? Of course, contact Sarim. Aryan, you know he's always on my stream. Contact him and take some medicine. Weight loss के लिए. तुम्हारी appetite control करो. तुम्हारा fat burn increase करना है. Eat right. Exercise very important. Okay. अच्छा, अब exactly 4 घंटे के ऊपर हो गया है. और मैंने इंस्टा बिकॉज बीच में पता नहीं, आई थिंक इंस्टा 4 घंटे के बाद आजकल बंद होता है, तो बंद हो गया था. आई एम सॉरी. तो ये रिकॉर्ड क्यूट है यार, फिल्टर रिकॉर्ड ऐसे ऐसे बजता रहता है.
जो भी मेरे को सबसे पहला नजर आया मैंने वो ऑन कर दिया। सारेम_सॉन्गस्टर इंस्टाग्राम पे, जिनको ब्रेकअप हुआ है, मेडिसिन ट्राई करना है होम्योपैथी, और जिनको वेट लॉस करना है, अब मेरे से वेट लॉस का हिप्नोसिस ले ले, ओके, और हाँ वो हेल्प करता है, प्लस ऑफ कोर्स कांटेक्ट है, ठीक है। यूट्यूब नहीं, पे मेड्स मेरे कोई चालू है। आई क्या एम चल ऑलरेडी अंडरगोइंग एंजाइटी डिसऑर्डर मेडिसिन्स, आयुर्वेदिक। take too much on your plate. I've told you many times till you don't figure that out, till you're No, that that's done. I only attend college. multitasking shit that you do know, this hustle culture. This is what is giving you all more anxiety, and this is the reason you most of you are falling sick. No, I took your advice. अभी मैं कॉलेज के अलावा कुछ नहीं करता। Good, I'm glad. Okay, so I need to take your leave. All of you, I'll see you in 2 weeks, most probably. I'll try my level best to be back in 2 weeks. आज हमने मैंने बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और बहुत कुछ एड्रेस किया है। सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर, थैंक यू फॉर वाचिंग मी, थैंक यू फॉर द लव, द रिस्पेक्ट, एंड द वंस हु हैव एक्चुअली स्टेड फॉर दिस 4-hour stream, hats off to you all. I don't know, I have never done it for any YouTuber, but I know because you genuinely love me, I don't think कोई 4 घंटे की स्ट्रीम वैसे भी करते होंगे, बहुत कम, क्या मे भी गेमिंग स्ट्रीम्स होते होंगे, बट ऐसा कोई बैठ के इतना देर क्वेश्चन आंसर तो नहीं करता होगा, और तुम लोग बैठते भी हो इतने घंटे। अमेजिंग, थैंक यू so much for the love and the respect. Do a live every day. अरे भाई साहब, एक तो मैं तो थक ही जाऊंगी, मुझे नहीं लगता तुम लोग मुझे देखने आओगे। तू जो जिसने क्वेश्चन, ये जो जिसने सजेशन में लिखा है, आई चैलेंज यू कि तुम भी नहीं आओगे एवरीडे, ठीक है। तो मैम ये आप करो, हम आएंगे, वी गारंटी हम आएंगे। एवरीडे, अरे क्या मतलब, मैं एवरी एक वीक ना हफ्ता हो, ट्राई करो, एक हफ्ता ट्राई करो बस। एवरीडे यार, कितना यार मेहनत करना पड़ता है पता है एवरीडे आने के लिए। थैंक गॉड फॉर दिस। तो सी, अगर सिर्फ ऑडियो होता ना फिर भी ठीक है, ताकि मैं ऐसे लेट के तुम लोगों से बात करती। मैं वही सजेस्ट करने वाला था, टाइम ये पॉडकास्ट, ऐसे लाइव कौन बैठेगा पॉडकास्ट। यार 4-6 घंटे ऐसे बैठना कुछ इजी होता है क्या? उठ भी नहीं सकते, टॉयलेट ब्रेक भी नहीं जा सकता है इंसान। पॉडकास्ट शुरू करो ना, लाइव पॉडकास्ट। किसके साथ? तुम लोग के साथ? हाँ ठीक है। हेलो आरडी, चिंटू, हाय चिंटू, हाउ आर यू? I will definitely be there for every live session of yours. Archit says, so sweet, thank you so much. चलो 4 तो गारंटी है, बाकी मुझे नहीं पता, 4 लोग आएंगे। Anyway, it was lovely. मैं लिटरली आज वहां पे, आई एम लिटरली सिटिंग इन अ बार, ओके, हैविंग अल्कोहल विद माय सिस्टर, पूरी वाइब है वहां पे। आपका नोटिफिकेशन, माय सिस्टर इज लाइक, यू डोंट इवन हैव हेडफोन्स and why are you listening to that? I'm like, no, I'm going, I don't. But I'm glad you're here for your birthday. I wish you a lot of good health. सबसे पहले I want you to have good health. अपना health का ध्यान। I am working really hard on that. Like, I cut everything out. काम भी बंद कर दिए, एक्सरसाइज करता हूँ, सिर्फ हेल्दी खाना खाता हूँ। Good, I'm glad. आज मैं लेट हो गया। रितेश कोई बात नहीं, हम अभी भी बैठे हैं 4 घंटे के बाद। मैं कम ऑन मैम, गो टू स्लीप विल यू? तू जाना, इंडिया में लेट हो गया है, यहाँ पे सिर्फ 10:30 बजे, ठीक है। और क्या, हाँ, क्या लिखा है रितेश, आज मैं लेट हो गया, नहीं तो मैं 4 आवर्स रह लेता। थैंक यू सो मच रितेश, आई एम सो यू नो टच दैट यू पीपल आर सो स्वीट। मैं तो नहीं रहती, तो तुम लोग रहते हो मेरे लिए, इससे ज्यादा क्या एक इंसान मांग सकता है। इतने थोड़े टाइम में मैंने इतना तुम लोगों का प्यार कमाया है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल एंड गॉड ब्लेस यू, एंड आई शैल सी यू इन 2 weeks, एंड द वंस आई डिडंट रिप्लाई टू और आई रिप्लाई टू एंड यू वांट मोर हेल्प, डीएम करो, बट प्लीज वेट, थोड़ा वक्त देना। मैम आप थोड़ी सी बियर या वाइन लियो ताकि आप भी रिलैक्स हो जाओ। नहीं, मैं अगर से मैंने पी लिया ना, मैं पहले तो सो जाऊंगी या तो मुझे डांस करना होगा। तो तुम लोग डिसाइड कर लो। मैं काम नहीं कर सकती, ये काम करते वक्त पीना नहीं चाहिए। ऑफिस में जैसे पीते नहीं, ये मेरा क्या बोलते हैं, काम क्या है, काम ही मेरा मंदिर है। वर्क इज वर्शिप, राइट? हाँ। तो जैसे पूजा करते टाइम दारू नहीं चढ़ाते, तो काम करते थे दारू ये सब नहीं करना चाहिए, ठीक है।
डांस करते टाइम ऑल ऑफ इट इज फाइन बट नॉट अदरवाइज सो ना मैम ठीक है, डांस करेंगे हम लोग साथ में। या दिस इज माय हाँ तुम लोग लाइक आई विश हम लोग लाइक एक प्रॉपर रियूनियन करते जहां तुम लोग गारंटी करते मैं टिकट भेजूंगी फिर भी आऊंगी मैं यू नो तुम लोग जो 4-6 लोग मेरे जो कंसिस्टेंट फॉलोअर्स है और जो मेरे को मेरा हर सेशन अटेंड करते हो तुम लोग मेरे क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेटर्स होंगे ठीक है डिस्कॉर्ड नहीं है डिस्कॉर्ड में डांस पार्टी होती है तो हम क्या करेंगे हम टिकट बेचेंगे क्योंकि हमको फिर पता चलेगा कि कितने लोग आने वाले कॉन्सर्ट रखेंगे। कंसिडरिंग हनी सिंह आया था सिर्फ वो क्लब में उतने लोग आए थे दुबई में तो मेरे को देखने कौन आएगा मेरे को थोड़ी सी टेंशन होने लगी है मेरे को नहीं लगता मेरा टिकट सेलिंग आइडिया वर्क करने वाला है मैम प्रॉब्लम ये है कि आपकी फैन फॉलोइंग वर्ल्ड वाइड है। हाँ कैसे वर्ल्ड से कैसे आएंगे सब लोग जूम पे ही आएंगे ना वही है ना, फिजिकली आना पॉसिबल नहीं है। ठीक है फिजिकली नहीं हम लोग जूम का भी सेशन का टिकट बेचेंगे कभी ऐसा हुआ है क्या नहीं ऐसा नहीं हुआ होगा ना कि जूम के हाँ नहीं हुआ है। आई रिमेम्बर ड्यूरिंग कोविड हुआ था ना जूम के सेशंस की भी पेमेंट्स होती थी मेरे खुद के शोज हुए मैम पेड। एक मैं ही हूँ जो पैसा नहीं कमा रही है साला 20 साल का बच्चा भी पैसा कमा रहा है हाँ और मैं आप इंडिया में आओगे कभी मैं तो इंडिया एवरी ईयर आती हूँ सिर्फ बताती नहीं हूँ तुम लोगों को क्योंकि मैं ये मीटअप्स नहीं कर सकती मुझे माफ करो आई नो यू पीपल लव मी आई नो मेनी ऑफ यू हैव रिटन मीटअप पर मैं नहीं कर पाती पता नहीं क्यों आई जस्ट डोंट फील आई हैव रीच्ड दैट स्टेज इन माय लाइफ वेयर आई कैन एक्चुअली डू अ मीटअप आई थिंक शताब करते सेंस बनता प्रखर करते सेंस बनता वेदांत करते सेंस बनता मैम इवन यू आर अ सेलिब्रिटी नाउ। मैं लिटरली जैसे CER डालता हूँ ना वहाँ पे आ जाता है सेलिब्रेट रचना। I searched on my sister's phone. Yeah, sorry बोलो। हाँ सारे बोलो मैम मैं एक सजेशन दूं क्या? हाँ बोलो मैम आपके इंडिया में जितने भी फॉलोअर्स हैं ना हाँ आप उन सबको किसी एक जगह बुला सकती हो एक बार मिलने के लिए एक दिन के लिए। तुझे मालूम है हम लोग का जो स्कूल का कॉलेज का रियूनियन है ना उसको ही कोऑर्डिनेट करते 20 लोगों के बीच में कोई आता है कोई नहीं आता तुम लोग क्या आओगे सॉरी मेरे को थोड़ा गाली जो सीरियसली आपसे मिलना चाहता होगा वो तो आएगा और जो मतलब फेक वो कर रहा है प्रेजेंटेशन वो नहीं आएगा। इससे ये भी पता लग जाएगा कि कौन सीरियस है इस चीज को लेके। नहीं ऐसा मत बोलो, सीरियस की बात नहीं है, सब आ सकते हैं आ नहीं सकते ऐसा भी है ब्रो। हाँ वैसा भी है ट्रू कि इट्स पॉसिबल कि नहीं यू हैव मोर फैन फॉलोइंग देन हनी सिंह द रियल वंस हाँ ट्रू हाँ नहीं हनी सिंह बेचारा आजकल थोड़ा यू नो वो आउट ऑफ ट्यून के साथ भी गा रहा था मतलब मुझे तो बूढ़ा हो गया मुझे लगता है कि उसका बेचारे का हेल्थ लाइक उसका वॉइस क्वालिटी थोड़ा डिफरेंट है पता नहीं क्यों उम्र हो गई है मैम अभी पता नहीं उम्र हो गई है उसकी 50 हो जाए टेक रेस्ट मोहित यस मोहित जाने का मैं जा ही रही थी फिर मैं रुक गई इवन इफ यू डोंट डू अ मीटअप कैन यू मेक अ गूगल फॉर्म ऑफ हु ऑल विल कम हाँ वो भी कर सकते हैं मैम इतना कर दो आप ना बस कोई तो भी टाइप लाइक व्हेन यू कम टू इंडिया ना लोकेशन डाल दो एंड जस्ट से कि आई एम हियर एट दिस प्लेस एंड यू जस्ट कीप अ लिटिल बिट ऑफ फ्री टाइम उस दिन पे। हाँ जिसको और आना मैम वहाँ पे जो आ सकता है आ जाएगा। नहीं तो मैं वो कर सकती हूँ वो जो वर्ल्ड टूर करते हैं वैसे इंडिया टूर होगा वो एक गाड़ी हायर करके वो जो नहीं पॉलिटिशियंस करते हैं वोट के बस मोटर हो। वो अलग बात है कि ऑलमोस्ट 95% ऑफ द जो लोग होंगे बोले ये लड़की कौन है लड़की या औरत कौन है जा रही है ट्रक के अंदर वो ऐसा हो सकता है प्लीज सेव द लाइफ फॉर अस टू मैम हायर भी नहीं हम ही लेके आएंगे वो मैं लेके हाँ, आऊंगा बना के वो हम हायर भी नहीं नहीं करेंगे वो मैं मयंक बना को के बोलूंगी लाऊंगा। मयंक जी पॉलिटिशियन है वो मेरे लिए ट्रक भेज देंगे अच्छा मैं हूं ना। एक मिनट अभिषेक यूट्यूब में लाइव सेव है इंस्टा पे लाइव सेव नहीं होता क्योंकि वैसे भी वहां देखो दो जगह ये मेरा इंस्टा ना बहुत क्लटर्ड है इट्स माय पर्सनल एंड प्राइवेट लाइफ सॉरी पर्सनल एंड पब्लिक लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ मिक्स सो देयर इट इज प्योरली प्रोफेशनल प्लीज गो एंड वॉच इट ऑन यूट्यूब हाँ क्या बोल रहे थे नहीं आई वाज लाइक मैं हूं ना मैं बना के लाऊंगा ना बस। हाँ ठीक हाँ तूने बोला तो कर सकता है ठीक है वो लाल बत्ती के साथ मुझे ऐसा वैसा नहीं चाहिए आई एम टेलिंग यू ऑल मुझे अगर से वेलकम प्रॉपर वेलकम चाहिए ढोल बारात वाली एवरीथिंग रेड कारपेट क्राउन एंड एवरीथिंग आई वांट अ सैश तो ऑल ऑफ यू विल गेट रेडी वो रचना मैम फॉर प्रेसिडेंट का बैनर भी लगाएंगे हम।
मैम दिल्ली में करना मीटअप, अच्छा ठीक है। ओ भाटी जी कैसे हैं आप, गुड टू सी यू यार, मुझे नहीं पता था तुम आज इधर हो। तो ऑल्दो तुमने उस दिन डीएम किया था ना, ऐसा मुझे लग रहा है, पता नहीं, आई थिंक मुझे इतने डीएम्स के बीच में मैं खुद ही कंफ्यूजिंग हूँ कौन डीएम करता है कौन नहीं करता है। सो एनीवे, अच्छा मैं जा रही थी ना, मुझे क्या हो गया, ओके आई एम सो सॉरी, जो जो मेरे लिए वेट कर रहा है सोने के, और अभी तक इंडिया में 1 बज रहे हैं ना, नहीं हाँ 1 12 बज बज रहे, रहा है, कितने बज रहे? हाँ 12:13। आई एम सो सॉरी बच्चा लोग, बड़े लोग आई एम ऑल्सो सॉरी, और महान आत्मा नॉट सो महान आत्मा लोग, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, आई शैल सी। 12:15 हो रहे हैं, 10:30 10:30 11:30, हाँ करेक्ट, 10:30 12:30 नहीं रे, मेरे नेट को हो रहा है। हाँ 12 हो रहे, कहाँ बज रहे? कौन से कंट्री में तू आ रहे? टाइम पे सोना, टाइम पे उठना 12:13 बहुत हो रहे जरूरी हैं। है मेंटल हेल्थ की, ठीक है। हाँ तो 12:15 वही तो उसने बोला, 12:15 वही तो, 12:15। अरे मैं कॉल्स अटेंड कर रहा था ना फ्रेंड्स के। हाँ हाँ बर्थडे है, सब लोग इसको विश करना, बाद में प्राइवेट डीएम, अभी मेरा चैट को क्लटर नहीं करना। मैम लव यू बिफोर यू गो, ऑल, तो मैं जा रही हूँ, ठीक है। 4 बार या 5 बार मैं बाय बोल चुकी हूँ, अब मैं पक्का जा रही हूँ, ठीक है, और मुझे ज्यादा मिस जस्ट नहीं वन लास्ट करना, थिंग, मैं वापस आऊंगी। आज अच्छे क्वेश्चंस हुए ना, बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे आज तो, आई so वाज लाइक, I'll do one I was thing. impressed with myself also, besides the questions. I think I did a good job answering, considering the time we addressed a lot of questions. And finally हमने थोड़ा सा टाइम निकाला है चिल करने के लिए, जो लेमन टाउन का एक्चुअल मतलब चिल था, हम चिल विल तो छोड़ के हम ऐसे मोड पे आ जाते, फिर चलो ठीक है। ओके, अभी मेरा आर्यन, अर्चित, आर्यन, ये अलग, सारिन के अलावा बाकी सब ए। Thank you so much for being here. I really got to go. Okay, love you all, and thank you YouTube community, Insta, all of you all जिनको लाइव अटेंड नहीं कर पाए YouTube पे सेव्ड है, देख लेना, ठीक है। ओके, गुड नाइट, बाय, आई एम एंडिंग द स्ट्रीम। Bye. गुड नाइट, Yeah. बाय।